करो। रॉयल हंटर्स दाऊद एक्सटेन, फैजल पूमा, शरीफ वलाल स्ट्राइकर्स, सिल्वर स्ट्राइकर्स, समीर लकी स्टार, FN ब्रदर्स, रऊफ जैक, नौफल FN, शबीर भाई प्लीज इम्तियाज, सिराज जरमाल ग्राउंड रे इम्तियाज आजाद स्पीड हाकोणु, इम्तियाज आई फ्रेम, फैसल भाई समीर लकी स्टार, शरीफ वलाल प्लीज स्टेज बारो, शरीफ वलाल प्रेसिडेंट, फिर सौकत जनरल सेक्रेटरी प्लीज और स्टेज पर शबीर जाक, निल्ल आशिक नी शुरुवाके नीनु आशिक रहा केट्टी बच्चिंगदल्लि नल्ले इंत सिराज जरमाल, अफ्ता, दाऊद एक्सटेन लैन निक्कोणु, रियाज शैन एवडुंडु, सिराज जरमाल, ಫಜಲ್ ಡ್ರಬ್, ಮುನ್ನಾ ಕಮ್ಮರಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನ್ನಾ ಕಮ್ಮರಾಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನ್ನಾ ಕಮ್ಮರಾಡಿ, ಮುನ್ನಾ ಕಮ್ಮರಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮತ್ತು ಓನರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಲೈನಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಆಟಗಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದೀಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಓತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೈನಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಫಾನ್ ಕರೇಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುನ್ನಾ ಕಮ್ಮರಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಂಧ್ ಗುಜರಾತ್ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಲೈನಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಲೈನಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ವರ್ಕ್ ಅನ್ಯಾವಟ್ಟೆ ಎದುರು ಬಿಲ್ ಬಟ್ರೆ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರುಮನ್ ಬೇಯ್ಲುಂಡು ಪಿನ್ನೆಡು. ಎಸ್, ದಾವೂದ್ ವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾವೂದ್ ವಿಷನ್ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲೂನ್ ಇಲ್ಲ ಚೆಂತಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ I request all teams please come and join us on the line. ಈ ಲೈನ್ ಅವರ ಬಂದಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ರಂಗ ಒನ್ ಆರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕವರು ನಿಂಗೆ ಹೊರ ಆಲ್ಡೆ ನಡ್ಲು ಒನ್ ಆರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಇದ್ರು ಬರು ಪ್ಲೀಸ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅಫ್ತಾ ഞങ്ങൾ ടീം ആരും ಒನ್ ಆರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ సిల్వర్ స్ట్రైకర్స్ ప్లేయర్స్ ప్లీజ్ జాయిన్ ది టీమ్ జాయిన్ అవర్ ప్లీజ్. ಒನ್ ಆರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಭಾಯ್ ರಿಯಾಜ್ ಭಾಯ್ ಶೈನ್ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಂಡ್ ಎದುರು ನಿಕ್ಕ ಚೊಲ್ಲೋರು ಇದು ಜಾಕೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಚೊಲ್ಲೋರು ಎದುರು ನಿಲ್ಲ. ಅಮನ್ ಭಾಯ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗು ಅಮನ್ ಭಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. Okay, welcome to Coastal Friends Bangalore presents Jack Cricket Carnival 2025. Let's have a huge round of applause. Nange give applaud aka Nangalde tournament I declare. Let's have a huge round of applause for Coastal Friends Bangalore 2025, which is happening at SAHYADRI ground today and tomorrow. It's going to be a floodlight tournament. All four teams are absolutely packed, and it's going to be a wonderful tournament. On the stage, I'd like to request the president of Coastal Friends Bangalore, also representing Royal Hunters, that's Sarif Abbas Walal. And this tournament has become a grand every year. It's becoming grander every year. For that we have a big reason. Our sponsors are a big reason for this cricket carnival to be getting grander every year. So last year also Jack was the title sponsor. Even this year Jack is the title sponsor of cricket carnival. I request Fazal Rabi, who is representing Jack, to please come on the stage and join us for this opening ceremony. Also request Shabir Jack and Rauf Jack. Shabir Jack, and it's the decision of organizer. I request Rauf Jack and Shabir Jack, who is also the part of this company, Jack, to join us on stage for this opening ceremony. I request the owner of Silver Strikers, Aftab, please join us on the stage. I request the owner of Coastal Kings, Aman, to please join us on the stage. And also I request the owner of FN, Naufal FN. I request the owner of FN Brothers, Naufal FN. I would like to also mention the name of Faisal FN, who is also the title sponsor of this tournament. Big thanks to Faisal FN as well, who has been the part of this title sponsor.
I request Afros to please join us on the stage, and also Dawood Exton, who is the powered by sponsor of this tournament. Afros and Dawood Exton, who are the powered by sponsor of this tournament. And he is not ready to accept it, but he is one of the senior member of Coastal Friends Bangalore, Ansar Katipalla. Please join us on the stage. I'll senior and agree hakilla, I'll senior. And this tournament is happening because of two very, very powerful people. The convener of Jack Cricket Carnival, that is Faisal Puma and Naufal FN. Naufal FN has already joined us. I request Faisal Puma, please join us on the stage, who is the convener of Jack Cricket Carnival. Okay, we'll start our program with the symbolic national anthem. So I request everyone to please raise for national anthem. National anthem, please. National anthem, please. से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Stand at ease. To enjoy evergreen melodious songs from Always, over the I request years our to the esteemed latest guest to ones. please have your seat. Subscribe So next, we always we'd like to play this cricket with a sportsman spirit. That's been always Coastal Friends is known for the friendship. We play cricket with lots of sportsman spirit. So let's have a oath for that. I request our president Sharif Abbas Walal to have a oathing ceremony on behalf of Coastal Friends Bangalore. I request everyone to put your right hand in front on the chest, chest, on your chest. ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ 4 ತಂಡವಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾದರೂ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ. ನಾವು ಈ ಆಟವನ್ನು ಅಪಾರ ನಿಷ್ಠೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸ್ನೇಹ, ಭಾತೃತ್ವ, ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you. Okay, we will have a actual inaugural ceremony at 7:30. All our guests will be arriving at 7:30. Now the big show is going to happen now. The match that everyone is waiting for, the match between Royal Hunters versus FN Brothers. Yeah, first match is going to be a big game between the Royal Hunters. We have big guns here in the stage from Royal Hunters. Request the captain of Royal Hunters and
Royal Hunters and FN Brothers, please join us on the stage for the tossing ceremony. Ningale captain, Seri bhaiya. Ningale captain. Chollo baba. I request our title sponsor to do the tossing ceremony. Sabir bhai will do the tossing ceremony. We have two captains, Naufal FN and Sharif Walal. This is tails and this is heads. This is head and this is tails. So Shabir bhai is going to toss the coin. This is tail and this is head. Naufal is going to call. Head is the call and it is tail. Toss one by, okay, Jose is there. Seri bhai. Jose undu but avada palakari anu baru. Toss win item, match win item be achedi Seri bhai. So what are you going to do? ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. Okay. Royal Hunters is going to bat first. Any reason for that? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅದರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟಾಸ್ ಆಗುವುದಂತ ಖಚಿತ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ. ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅದು ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. Okay, always Sharif bhai is a positive person. He is confident that his team is going to win. Let's see who's going to win now for FN. Are you happy with your audition? In fact, you lost the toss and fielding. Are you happy with it? ಟಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಶರೀಫ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸೋತಿರೋದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. Okay, say this is the eating. Already the guns have been blown here in the stage between the Royal Hunters and FN Brothers. Now toss is done. First ball is at 440. First ball, 440 first ball. I am going to request ಸಿರಾಜ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸಮೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್, ರಿಯಾಜ್ ಶೈನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಫೈಜಲ್ ಪೂಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ,
gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Warning, this is a total blackout. Please stand by as we are currently testing our systems. Testing lighting equipment. LED screens. Testing blinders. perfect condition to play cricket matches. I think we've got some great players, great teams competing against each other with a great sportsman spirit. I think, like it was mentioned before, the toss is done and dusted. We had that block of time where we had the toss. It's done and dusted, I think. Royal Hunters, I think, have won the toss. Not sure about that. We didn't get that information till now to the com box. We got to get that information. We've got to try and make sure that we update the same. Who won the toss? Jack, who won the toss?
Royal Hunters have won the toss, and they're going to have a bat. And I think it's very clear that you're going to have a bat. I think if I be a captain, actually, if I play cricket, and I be a captain, I think, you know what, I'm just going to take a bit of time. You know, I just want to feel first. Because, you know what, ideally you win the toss, you don't know the conditions very well. You bowl, actually. You bowl because you want to know a little bit about the condition, how it's just going to play out. Right, and then get the measure of the track. And then understand how the pitches are going to work. The pitches are going to work. I think it's just very vital that you understand, fathom that part of it. Because, you know, when you don't get that right, I think you'll be in trouble. And that's why these batters, I think, are just going to go out there to express themselves. Not going to play baseball cricket. We've seen a lot of it. Entertainment type of cricket being played. Just got to see how these batters are going to go and express themselves. They got to take a bit of time. In my honest view, this is a sort of a red kookaburra track. It's not a sort of softball track. It's a red kookaburra track where you expect the ball to bounce a little bit because you got that, you know, attritional tennis ball bounce where it might just pose some amount of difficulty for these batters to. And it's very much like an Australian track where it's just going to bounce to that chest high, and then you just gotta, that big drive comes into play. It's gonna be difficult to play that kind of a shot earlier on. You gotta see off the first 1-2 overs and then start expressing yourself. I think it would be great, really. I'm excited as well, as much as the players are. ಕಾಸಿಂ ಬ್ಯಾರಿ ಜುಲ್ಫಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾರಿ ಜುಲ್ಫಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬರಬೇಕು. Mic check.
Right, it's 4:45 now. 4:45, I think. Is just gotta find out that 4:46 actually, to be accurate. The umpires, please make sure to get the game started immediately. Poor execution, I'd say. But I wouldn't say that in the mic, though. We're all set. Hold on, sir. Hold on, please. 12th man or anybody, extra player, anyone who can report us with the names and stuff, because we've got to do a lot of stuff here in the scoring area. Just got to make sure that someone from your side, both the teams actually, an extra player or anybody who can give us your names, actually, the players' names, or at least, you know, if we can have those player list in the exact order would be, I think would do. Both of them would do, actually. We got to have these. Right, you can watch this, I mean, on the big screen as well, you can watch it, right, plus the fact that you can watch it live on YouTube as well, where you can simply type in Mangalore Media or Cricket Carnival 2025 SAHYADRI. You can find out those. You can find out those, you know, live links where you can watch the game live as well. Okay.
Refreshment counter is available over there, I think, at the back. Tea is served free of cost, whilst snacks are charged. I mean, if you want to take the use of it, you can just go over there in the back and you can have it. Right, 2 batters have made their way to the crease. All awaited tournament starting up now. I think we've had a lot of delay trying to make sure that we just finish well within the timeline. It's a 10-over match, is it? Umpires, is it a 10-over match? Right, 10-over match. Fuzzle and Sheriff are the 2 batters are going to start the proceedings. Actually, Fuzzle's going to start from the dugout end. Jack Decker dugout end goes right arm over. Excellent error, but called wide by the umpire. And that's where I talked about, I think you win the toss, you're going to have a ball. I'd do that actually. If I be actually a captain, I just win the toss and just going to have a ball. Just going to see how it plays off in the first 1, 2. That doesn't mean that I think batting first is problematic, but you know what? You got to be careful and cautious in terms of the way you start up. In the air, just about safe. This is the problem that I talked about earlier, actually. I did talk about the tennis ball bouncing the surface. This is a sort of red kookaburra track, actually. Rolled a lot. It's a very hard track. I think you expect these softballs to bounce a little bit more attritionally, actually. That's the I think that's the propensity of this softball cricket. Nicely played. A waste clean pickup would have had the batter in trouble, but not sure. I'm not sure about the fitness level of the players here, actually, seasonal cricketers, or what. Do they play cricket? Do they have enough under their belt to play more? I think, do they have enough experience or practice, in fact? Might have experience, play cricket at some point in time, but do they have enough fitness and practice over the last 1 month or so? Because cricket's a game where shot and wide talks a lot about the bowling. The bowler's bending his back, talks about his fitness. And I think maybe when you're off cricket for a long time, cricket is one of those type of games, actually. If you're off cricket for some amount of time, it takes a bit of time for you to get back into the rhythm, actually. Especially bowling is a hard art to do in cricket, unlike batting. Full toss, it's been taken. I think the first wicket going down. Right, first wicket going down for them, actually. They were on the back foot now. And this is what I talked about earlier, that when you do not know the conditions very well, if it was a full toss, juicy full toss, you could have put it anywhere he wanted, but not to be the case. But to tell you frankly about when you win the toss, you're going to have a bat straight away, right? You need to know, you need to see off the conditions a little bit. You know, the ball's bouncing, that shot that the other batter played actually went in the air for a good amount of time. I think it just talks a lot about the track, actually, how much bouncer pace you can get out of the surface. It's something that you got to watch out as a batting team, especially in the early part of the innings. 5 overs each, right? After 5, you're going to jump in. Right. Yeah, jump into the mic box, actually. Jump into the mic. Another full toss. It's just time surely should be called a no ball. I think well over the batsman's reach, well over the chest line. Generally in overarm cricket, it's about waist, but it's gone well over that line. That threshold should be called. Excellent delivery. I think batters just got to be very careful the way they go about their shot making. Down the leg side. That, he's got some bat on that. Not sure. It's going to go all the way for 4.
first boundary of the evening, coming from the bat of Ashraf, left-handed batter actually, number 3. After the fall of that first wicket, was gone out there and just played that beautifully finer, and there was no one out there to protect it. On the rise, going for that big drive. I talked about the big drive. Big drives don't work here. I tell you what, you know what, you just got to go for that big drive early in the innings. It might just not work in your favour. I think you need to take a bit of time actually on the ground. Take a bit of time actually, read the track well, and then you slowly start to get into that rhythm. When you get to that rhythm, you start expressing yourself and start playing shots everywhere. You can do that. It's a beautiful ground, lush outfield. And the other thing is that the ball might not travel the way it generally does. The red kookaburra, white ball or pink ball generally does. I mean, you don't see that level of travel. Down the leg side, might be slightly down the leg side. Interesting to see whether the shot was attempted, but the umpire says the shot was attempted or not. I think shot was attempted. End of over number 1, end of a successful Ralph over, and just given away, in fact 10 on the 11. No ball, only leg by red wide. Only 4, red single. Only right first ball single, second ball single. Wide it, red wide. Yeah, 11 on the card after the end of that first over of Ralph. Looked a bit out of sorts, but he managed to pick up that wicket. You would never believe that he's got that wicket off that full toss. If it was a juicy full toss, you could have, I think, 19 out of 100 times to think any batter would have belted it across the line or anywhere for a massive 6, but not to be the case. But anyways, end of that first over, 11 on the cards. Not a bad start by any stretch, actually. But I think you can't lose wickets as well. From batter's perspective, I think need to show that application, mental toughness, and also just got to build in that partnership as well. That is super vital as well when you're actually lunging forward to try and get to that total where you're targeting round about, I'd say 100 or more than 100. I think, you know, would be a competitive. I'm not sure. I've never commentated here before. Not sure about the condition. What total do you think is acceptable? What total do you think is competitive and challenging? Something that we'll be able to find out more about. That is slightly a longer format, 10 over match. So players will need to come to, I think this time from the college end, beautifully struck, will just be one to the cover region. Didn't have the power to get it along, I think get it past that fielder. The fielder's done a good job there, but couldn't prevent that single. I think a large chunk of your time, you got to try and make sure to spend a bit of time actually picking up those 1s and 2s as well. It's not just about scoring big every time, you know. It doesn't work that way. Cricket doesn't work in that fashion, actually. You also need to take a bit of time and then just have that partnership going, pick up those 1s and 2s, rotate that strike. I think that's so vital. It's a crucial part of the game which is kind of missing, especially in modern day cricket. Modern day batters actually following that baseball type of cricket, which is much more about just expressing, just go out there and express and blast every ball. Down the leg side, it's just got bad on that, but it'll just be one there. The fielder's quite late onto that. I think could have been much faster, but not to be the case. But anyways, 1 to the total, scores raising up. But the key here is that these two batters actually, if they got to go, well, if they got to really try and target a big total, I think these two batters will need to stay there and then just try and make sure to build that partnership. It's very crucial in cricket when you bat first. You know, it's important that you see off, plus the fact you got to be aggressive at some stage as well. Beautifully bowled, I think.
That's what I talked about earlier in my pitch analysis. I did talk about that tennis ball bounce that you can find in Red Kookaburra track. This is the track that I see being used actually for Red Kookaburra, pink ball or whatever, white ball or red ball or whatever. I mean, you use the softball in that kind of a track or pitches. You expect the ball to bounce a little bit more actually. So generally I think in softball cricket we find out we don't see this sort of bounce, and that might actually create an awkwardness to players. They come afresh actually, so they need a bit of time to take and then just start playing that big drive. Big drive can be problematic earlier. Goes big, takes it away for 4. That's a good shot. That's a shot of confidence. That's a shot of a lot of confidence, played with great conviction. He's got a lot of bat on that one and whacked it in front of extra cover actually for 4. Towards that wide mid-on area for a 4. Super shot there. That'll give him loads of confidence as a batter. That's an excellent delivery, superb delivery. That is much fuller. I think that's where he's got to concentrate. And that's the channel that he's got to concentrate on bowling a large chunk of the time. A large chunk of the time, actually speaking. You can't do that. And you do that, I think, the other issue about the bowlers is that you're not playing cricket for a long time, and then you just come on and then have a bowl, and it's just not going to work out that way, especially when you bowl overarm. Much tougher. It's a hard art to follow, tough act to follow in cricket. End of over number 2, 17 for 1. And they take it, actually, winning the toss, batting first. They take it, I think. You know what? 17-1-7. I request Mr. Naufal FN to come to the commentary box as soon as possible. Mr. Naufal FN or Faisal Puma, conveners. Please report at commentary box immediately. Hunters winning the toss, batting first and 17 after the end of that 2 overs, and they find largely satisfied with their start. I think what they got to do is that now. What they got to do is that just keep that momentum going, and that's so vital. You lose the way now. You lose 1-2 wickets in a cluster. You lose that way, and then you go nowhere with your batting. And that's why it's important that you got that strike rotated on a regular basis. So crucial. Junaid's going to bowl the 3rd over. He's going to bowl to the left-handed batter on strike. Down the leg side is trying to manufacture a stroke. Right call by the umpire. So that's the kind of shot I think it's actually surprised a little bit that those kind of shots didn't really see coming. So these shots are really predominant in softball overarm cricket. You can find a lot of those actually. So just got to be very careful playing that shot. Full toss in the air, power player in progress, and now we run away to the boundary. 2 bounces. There's that big drive, but big drives are okay. Big drives are okay when you get full tosses. A full toss is, I think, where you can play shots.
But when you bowl that sort of, you know, good length, Chelsea, good length, you do that on a regular basis, and you will not be able to find out batters playing with freedom. That is a super strike. Mr. Sharif. Mr. Sharif, please make your way to the comm box. Mr. Sharif. Sharif Walal. Mr. Sharif Walal, would you please make your way to the comm box? And that is a terrific strike down the leg side. And the batter's making a full toll on that one. That's just going to go all the way for 6. Super striking, that is. Absolutely superb. Looks to be in good order, actually, the batter. The batter looks to be in good order at the moment, and I think winning the toss, batting first, you got to have that magic figure that you got to think about, so that you can get a psychological advantage when you go out to bowl. And that's why it's so central that you start well in a positive way, plus the fact that you put runs on the board and dictate terms. .28 on the cards. The score's just shooting up at the moment. Just flying. It's flying start, really. They take it anytime, any day. Winning the toss, batting first. I thought the conditions would be different. But I'll tell you what, you know, to tell you frankly about not just the bowling, but I think another loose. Now this time he finds the fielder. Can you believe that? Can you believe that? It went straight into the hands of that fielder. Only fielder. Only fielder placed that shot finally. You got that man at 45. You've got a man at third man. You got only fielder there, and he's found exactly that fielder. What a way to get dismissed. That big whack. He'll take it. I think, you know, that only fielder that he was able to find, that shot fine leg, and he found that fielder exactly. And I think this is the danger, that when you start playing shots too many, one too many. I think it was a half tracker. He could have put it anywhere he wanted, but not to be the case there. Found the fielder, and another wicket going down for Hunters. Hunters are actually aggressive. They played sort of aggressive brand of cricket at the moment, but they've lost 2 wickets. It's a good phase of game where, you know, you really need that momentum and you want to take it forward. You do that, you'll be on the front foot for the large chunk of time. I think it's so vital when you play a 10-over match like this. Nicely played, good delivery. That is first off. I think any batter will really want to take a bit of time. Siraj knows about it. I think Siraj is one of the X-factor batters for their side. He's got tons of experience, plus the fact that he wants to spend a bit of time out there. It's not a sort of track where, you know, you just go out there and play just expressively. Nicely cut away straight to the fielder, but had enough time to cross over for that single. Just talking a little bit about the bowling, what you got to really generally do on a surface like this that just generally bounces so much. There's a lot of takeoff. Goes big, goes straight to the fielder at long on. That big drive coming in, I think. They want to make the most of that power play over, I think. And I think that's the end of over number 3, right? 30 for 2. Not bad by any stretch, actually speaking.
But they want to continue that momentum. You know, you lose 1-2 wickets in a nick of time, and then you're on the back foot straight away. You got to put yourself on the front foot. How do you do that? I think you got to play that aggressive brand of cricket. Plus, you got to have that mindset, and that's what I think England did. That Test cricket revolution back in. England did that revolution in Test cricket. That talk about 30 for 2, sir. 30 for 2. Back in 2019 or leading up to that 2022 Ashes or before, they started playing aggressively in white ball cricket. I think it's about putting the bowlers under pressure. Cricket's about two things, actually. I think as much as I play cricket and watch cricket, I think I'm in the system of cricket. Cricket's about two things, as Rob Key, managing director of English cricket, pointed out that. I think cricket's about two things, putting up pressure and soaking up pressure. If you're a batter, you put pressure. If you're a bowler, you soak up pressure and also put pressure as well as a bowler. Play that attackingly, aggressively. Got the outside edge, landed the ball. I think took the ball towards that backward point region. No one out there to patrol. I think it's good bowling. Actually, you got to do that on a consistent basis as a bowler, is to just bowl that sort of roundabout fourth stick or fifth stick channel consistently from that sort of angle. You do that, you get a bit of purchase out of the surface. Plus, I think it's not a bad idea if you've got that pace where you can just bounce the ball. I think you can do that to try and get something out of the surface. Nicely struck, just the one this time. There is protection in the deep. Ones and twos will still put them on in the rock solid position. But still, they're hungry for more. I think, you know, that's the problem when you bat first. You don't know what type of total do you think that you would settle. And then you just got to go for that big blast. And every now and again, you're not happy with that total. And then you just got to blast every ball out of the park. Beautiful, absolute gem. Absolute gem from the batter. Absolute gem from the bowler. Absolute gem from the bowler. Could tell you what, because that was a beautifully landed delivery. One of the problems that bowlers generally face is where do you land the ball or land the ball. I think a lot of spinners nowadays have got that issue. It's about landing the ball. I think in that previous test match in the Ashes where, you know, England have got that problem with that pitch map where you got to pitch the ball consistently. 12th player, extra player from either sides, actually. Both the teams. Extra player, anybody over there in the dugout, would you please make yourself available at the comm box? Please. We've got issues here. Right, well bowled. And that's where you got to concentrate more often than not, I think, as a bowler. Is to where do you land the ball and where do you take it past, and that's where it's just going to add that amount of confusion, sort of put the batter under a bit of confusion to try and, you know, execute that shot, that big drive coming into play. Got to be careful on that. Soft hands, disastrous. It could have been disastrous actually, but I think it's to survive and gets to the other end. New batter's name, please. Shakib. Shakir, right, okay. This is good bit of phase of bowling. Actually, it's bowling beautifully. It's just got that sort of right line of length. Very relentless on that. Nicely struck. Straight to sweeper. Will just be one there. I think you've got to do that as a batting team. It's not just about cracking or just playing super aggressive or ultra aggressive type of cricket. I think you just got to do that on a consistent basis, is to try and pick up those singles as well, to put yourself in a sort of
position where you can score runs. End of over number 4. End of over number 4. Third. Bowler's name, please. Someone's got to really try and assist us here in the com box, please, because we've got a lot of issues when it comes to players' names, and we've got to try and jot down a lot of pointers here. Plus, we have to have that person who can contribute to the scorecard technologically, plus this attritional scorecard system that we've gotten here. Right, talking a little bit about the mindset in 10-over matches, I think it's very crucial to have that right mindset. The key is that I think, you know, you got that sort of two-dimensional mindset. It's not about attacking cricket. You just got to also try and make sure to play attritional brand of cricket as well. Very crucial to get that bit going when you're batting first, especially because you don't know what type of target you're backtracking a total which is too far from your side can put yourself in trouble. Cut away with some conviction. That might go all the way. No, it's been pulled back. It's been pulled back by the wicketkeeper, backtracking to try and cut it. And has done that exceedingly, saving 2 crucial runs for his side. No slipping plays, actually. That kind of a cut shot can come into play and sometimes can bring your own downfall. You know what? When you've got a slip fielder trying to have a big slash, can be problematic. Siraj's got tons of experience and talent, but he's playing according to the situations and scenario now. Played away with ease, straight to the fielder, but one take, and they might think about the second they do get it easily as well. This is sloppy, absolute sloppy by the fielder. There's no way that can be 2 runs. It's just 1 actually. You've got to be sharp in your fielding as well all the time. In the air, I think he's just spooned it to the fielder, but we've got to wait for the umpire's signal. Just for a moment I thought that he might have taken the outside as the sort of leading edge actually, but not to be the case there. But excellent bit of stuff, really. This is good bowling, good bit of time wear, good bit of face wear. Got to really try and force the issue. Nicely played away on the onside. Will just be 1 there. They might backtrack. No. Good bit of fielding there. Good bit of tidying it up. Just the 1 to the total. Takes the scoreboard now all the way up to the score. Stretches up to 39 on the board. I think not a bad idea by any stretch, actually speaking, but what kind of target you're targeting, I think these 2 batters are very mindful of that fact. You've got a packed offside, packed leg side, you've got a field. We'll come back to that. That might go all the way. No, the fielder is backpedaling. No, he can't get it. He can't get it, but in the end, and that's gone for 4. I think that shouldn't have been a boundary, really, by any standards. That should have been stopped. I really feel that should have been stopped, really. That should have been cut off. By any standards, that can't be a boundary. That should have been pulled back, really. I think it's the fielder who's long off. He should have taken that catch, in my view. You know, this fielder at mid-off is backtracking. No way that he would just get to that point of catching, really. Ended in a bizarre consequence. Absolutely bizarre.
That's a beamer. Is that a beamer? It should be called a no ball. Four overs or 5 overs? 5 overs bowled at 43 for 3, and it's time to change in the comm box as well. We're going to have Mr. Ajay Raj is going to give a ball-by-ball commentary, I think, in Hindi language. Over to you, Mr. Ajay Raj, and take you further until the end of the innings. Thank you very much. हेलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद आइए तमाम दर्शकों को हृदय से स्वागत करते हैं। कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की शानदार प्रस्तुति जैक क्रिकेट का कार्निवल 2025 सीजन 6 चलता हुआ, और इस वक्त मुकाबला आप जानते हैं रॉयल हंटर्स और एफएम ब्रदर्स के बीच में हो रहा है। टॉस जीतकर हंटर्स ने शिकारियों ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और ऐसे में ये यादगार क्रिकेट श्रृंखला जो कि निश्चित तौर पर नए इतिहास को रचाने के लिए जा रही है। सह्याद्री महाविद्यालय का ये बहुत खूबसूरत मैदान, आमतौर पर मैचेस जो कि नीचे जो नदी के तट पर जो मैदान है वहां पर खेला जाता है, लेकिन इस वक्त नेशनल हाईवे के बगल में एक बहुत खूबसूरत मैदान सह्याद्री महाविद्यालय की इमारत दिखाई पड़ती है। बिल्कुल उसके सामने ये मैदान स्थित है, विद्यमान है। वहां पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन 6 में हम हैं, और शानदार साफ सुथरा प्रसारण मैंगलोर मीडिया की तरफ से कमाल और उनकी टीम दे रही है। क्रिक हीरोज में लाइव स्कोर अपडेटिंग किया जा रहा है, और अंपायर हमारे ऑफिशियल्स जो कि चुनिंदा दीक्षित जी, नवीन और प्रकाश इस वक्त है। दीक्षित इस वक्त विश्राम कर रहे हैं, लेकिन नवीन और प्रकाश ऑन फील्ड। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहा है। सिराज स्ट्राइकन पर ऑप्शन के बाहर थी, और इस गेंद को रीच करते हुए कट करने का प्रयास किया, सिराज ने चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं। बड़े दिग्गज बल्लेबाज ऑलराउंडर माने जाते हैं सिराज और इम्तियाज को भला कौन भूल सकता है। एमपीएल लेदर के इस क्रिकेट श्रृंखला को हमेशा याद रखा जाएगा। इम्तियाज और सिराज जो कि उसके कर्ता धर्ता थे, और एक तरह से क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में उसको लिखा गया। ये गेंद विकेटों को कवर किया, ऑन साइड की दिशा में गेंद को थोड़ा सा ग्लांस करना चाहते थे। फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं सिराज, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है शायद बल्ले से नहीं लगी थी। लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा हो चुका है। स्कोर मूव्स अप टू 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शाम का शानदार प्रहर, 5:30 हो चुके हैं, और हरा भरा मैदान आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे के बगल में स्थित सह्याद्री का यह मैदान, जहां पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना। आशिक की गेंद, फुल टॉस गेंद को ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया। खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पर आ गए। संभावित चौके को उन्होंने रोक लिया है, और जब तक विकेट कीपर के दिशा में थ्रो आ जाता बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का अवसर। इन 2 रनों के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 46 पर 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 46 फॉर 3 स्ट्राइक एंड पर अभी भी
शाकिर तैयार हो रहे हैं। आशिक की गेंद, शाकिर इस छोर पर स्ट्राइक कर रहे हैं। फील्डिंग की रूपरेखा ऑफसाइड पर, पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर कहना ठीक रहेगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी नजदीकी खिलाड़ी में दिखाई पड़ रहा है। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट से गिरने के पश्चात थोड़ा सा डिविएशन के साथ ऑफ स्टंप के बाहर निकली और शाकिर इस गेंद को कट करने के प्रयास में थोड़ा सा बच गए। बल्ले का अगर सिरा लिया होता तो विकेट कीपर बड़े खुश हो जाते। बहरहाल बाल बच गए और फिर से आशिक गेंद को लेकर दूर वाले छोर से तैयार हो गए। स्क्वायर लेग पर फील्डर थोड़ा सा तिरछा और बैकवर्ड रखा गया। मिड ऑन दायरे के अंदर दूर वाले छोर से एक और गेंद, फुल टॉस थी, हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। अंपायर ने कहा कि 6 रनों के लिए जैक का शानदार छक्का। थैंक यू, क्या बात है। जबरदस्त छक्के के साथ ही कुल रन संख्या अर्धशतक का पड़ाव पार हुआ। 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बहुत खूबसूरती के साथ शाकिर ने स्ट्रोक को खेला और एक तरह से लूजनर थी, फुल टॉस का फायदा उठाते हुए वाइडिश मिड ऑन क्षेत्र में गेंद को लेफ्ट कर दिया। इस छोर से एक और गेंद, इस बार स्लो ऑन डिलीवरी थी, थोड़ा सा फंस गए पासे में, इंतजार करना चाहिए था लेकिन थोड़ा फ्रंट फुट पर गेंद को डिफेंस से ड्राइव करने का प्रयास किया, चूक गए, मिस कर गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर 6 पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर स्कोर इज ऑन 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और शानदार मौसम, ऐसे में क्रिस्टल फंस मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन छठा चलता हुआ। स्ट्राइक एंड पर सिराज आ चुके हैं। पिछले मैच साल में उनकी बल्लेबाजी का हुनर जो हमने देखा, जो टैलेंट उनमें है, तो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है। लंबा कद है और बिल्कुल अपने कद के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। आज इस मैच में वो अपनी टीम को कितना बड़ा लक्ष्य देने के लिए सहयोग कर पाते हैं, योगदान दे पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैदान को किस खूबसूरती के साथ सजाया गया है उसके लिए मैं शब्द ढूंढ रहा हूं। बाउंड्री लाइन के बाहर जो हमारे स्पॉन्सर्स डोनर्स हैं उनके विज्ञापन, कुछ डगआउट्स लगाए गए हैं, खूबसूरत कैनोपीज लगाए गए और मैं समझता हूं कि शायद दाऊद विजन की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो अपने काम को करते हैं और इस क्रिकेट श्रृंखला को और शानदार बनाने के लिए ढोल नगाड़ों का बंदोबस्त जो कि हमारे दाहिनी ओर मौजूद है। खूबसूरत मैदान, इनफील्ड और आउटफील्ड में हल्के घास दिखाई पड़ रहे हैं। इस छोर से सिराज के लिए गेंद ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद को पूरी तरह से जज नहीं कर पाए। वहीं पर रही विकेट कीपर फुर्ती के साथ गेंद के ऊपर आ गए, रन लेने का अवसर नहीं है। महफिल आक्रमण पर योजनाबद्ध तरीके से मुश्किल से 2-4 कदम निकालते हैं और योजना उनकी अच्छी रहती है। सटीक लाइन और लेंथ में गेंद करने का उनका प्रयास। सिराज के लिए ऑफसाइड पर अगर देखा जाए पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है, गली कहना ठीक रहेगा और मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है। इस छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, नौफल की अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दे। दिशाहीन गेंद, कुछ ज्यादा जोर रफ्तार देने के प्रयास में गेंद दिशा से भटकी, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गई, रन अतिरिक्त के खाते में जोड़ दिए गए। थोड़ा सा स्क्वायर ऑन होकर सिराज खड़े रहते हैं तब दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट का फासला, 1 या 1.5 फीट का फासला होता है। ये गेंद हवा में उछाल दिया, गेंद को कवर की दिशा में फील्डर डीप में आ गए, उन्होंने गेंद को समेट लिया लेकिन इससे पहले वो गेंद को समेट कर थ्रो कर पाए। दोनों बल्लेबाजों के पास इतना समय के आसानी के साथ दौड़कर 1 रन को पूरा कर ले और इस 1 रन के साथ रन सब बढ़कर 54 पर 3 विकेटों के नुकसान पर।
54 for the loss of 3 wickets. दोनों बल्लेबाज शाकिर और सिराज आपस में शब्दों का लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं. कदकाठी और शैली में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है दोनों में, लेकिन इस वक्त पार्टनरशिप के लिए न कदकाठी की जरूरत है न कुछ अंतर की. आपस में तालमेल बहुत जरूरी है और इसी को दोनों बना रहे हैं. इस छोर से विकेट, ये गेंद इस वक्त ड्राइव किया गेंद को, अच्छा स्ट्रोक ऑल अलाउंग द कारपेट, गेंद गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर आ गए गेंद के ऊपर. समेट पाते इससे पहले एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया. और वैसे भी सिराज लंबे कद वाले हैं, लंबे लंबे पैर हैं, लंबे डग भरते हैं, तो आसानी के साथ एक रन को उन्होंने पूरा कर लिया. स्ट्राइक एंड पर जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी है. नौफल अब क्या योजना बनाते हैं? और फील्डिंग आउटफील्ड में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि 2 खिलाड़ी डीप में है और इस वक्त गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया. बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जैक का जबरदस्त छक्का. डीजे क्या बात है, जैक का बहुत एक कमाल का छक्का सिराज के बल्ले से निकलता हुआ. बहुत जल्दी गेंद को साइड कर लिया और अब तो वो जम चुके हैं. निश्चित तौर पर गेंद उनको बहुत आसानी से दिखाई पड़ रही है और ऐसे में गेंदबाज को अब सोचना पड़ रहा है कि अब गेंदबाजी किस और लाइन लेंथ में करना पड़ेगा. डूबता हुआ सूरज इस वक्त आपके सामने आकाश में, समय शाम के 5:35. नेशनल हाईवे बगल में है, वाहनों का आना जाना दिखाई पड़ रहा है. दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है. रात के फ्लड लाइट की रोशनी में मैदान बहुत खूबसूरत और भी शानदार होगा. ये गेंद ड्राइव किया गेंद तो, लेकिन फील्डर वहां पर है, प्लेस नहीं कर पाए. इससे पहले कि वाइडिश मिड विकेट टीप में फील्डर आकर गेंद को उठा लेते, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन को पूरा कर लिया और कुल रन संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया 62 पर 3 विकेटों के नुकसान पर. 62 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. इस छोर से एक और गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लगभग उसको बैकवर्ड पर गया, बल्ले पर आने दिया, भारी मोटा सिरा देकर फिसल नहीं दिया गेंद को. थर्ड मैन डीप में गई. दोनों बल्लेबाजों ने 30 कदमों के साथ 2 रनों को बटोर लिया. रन्स बढ़कर 64 पर. 64 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अच्छे खासे रन्स बोर्ड पर बन चुके हैं. तो कुल मिलाकर 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर स्कोर इज ऑन 64 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. Thank you. 64 for the loss of 3 wickets. 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 9.14 का औसत इस वक्त चलता हुआ. क्या बात है, बहुत तेजी के साथ रन्स बन रहे हैं. 3 ओवर से शेष बचे हुए हैं. सेकंड पर फिर से सिराज थोड़ा सा स्क्वायर ऑन होकर खड़े हैं, यानी कि अंदेशा है कि वो अपने कदमों पर ऑन साइड पर आक्रमण कर सकते हैं. इम्तियाज दूर वाले छोर से इनके गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैकफुट पर गए, पंच करना चाहते थे लेकिन गेंद की रफ्तार कुछ ज्यादा निकल गई, मिस कर गए. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया. रन देने का अवसर नहीं है. आउटफील्ड में डीप में अगर देखा जाए तो कवर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, कवर में एक डीप में खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट डीप में एक खिलाड़ी तैनात है. एक और गेंद पुल किया, गेंद को बैकफुट पर जाकर खूबसूरत स्ट्रोक. सिर्फ 1 रन मिल सकता है. फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं. शाकिर थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन फिर पलटकर अपने क्रीज की दिशा में पीछे की तरफ आकर खींच लिया अपने पैरों को. रन्स बढ़कर 65 for 3.
इम्तियाज की गेंद बैकफुट पर गए, कट किया गेंद को, फील्डर ने, क्या बात है, अच्छी फील्डिंग, फुटबॉलर की तरह गेंद को अपने पैरों से रोका, एक रन आसानी के साथ मिल गया। हालांकि बहुत नजदीक थे खिलाड़ी, इसके बावजूद एक रन को चुराकर कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया 66 पर, 66 for 3, यानी कि अब कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा लक्ष्य होने जा रहा है। और देखे हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, कवर में फील्डर नजदीक है, गेंद उन तक नहीं पहुंच पाई, डीप में फील्डर ने आकर गेंद को उठा लिया, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रनों को पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 68 पर पहुंच चुका है, 68 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि आसानी के साथ रन इस वक्त बन रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 90-100 तक के रन बन सकते हैं। इस वजह से गेंदबाज को अपना पैतरा बदलना पड़ेगा, योजना अलग बनानी पड़ेगी, कुछ नाजुक नब्ज को पकड़ना होगा कि बल्लेबाज को किस तरह से फंसा जाए। इस छोर से फिर से इम्तियाज तैयार हुए और देखे बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जा रही है वाइडिश मिडल के ऊपर से 6 रनों के लिए, जैक का बहुत जबरदस्त छक्का। क्या बात है, क्या कमाल का स्ट्रोक, ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक, गेंद जैसे ही एक लेंस से टप्पा खाने के बाद ऊपर उठी, आक्रमण कर दिया, घुमा कर गेंद को सिराज ने स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर हवा के रास्ते उछाल दिया 6 रनों के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल अपने कद के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, गेंद को बहुत दूर हवा के रास्ते भेज दिया। अब गेंदबाज थोड़े से दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर सिराज को किस तरह से गेंदबाजी की जाए। रन बढ़कर 74 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर, 74 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 8वां ओवर प्रगति पर है, रन्स बन रहे हैं या बह रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता हुआ इम्तियाज अब सोच में पड़ गए कि आखिर क्या करना होगा। फिर से वो अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहा है और विकेट उनकी गेंद, और बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया, पॉइंट में डीप में गई है, रन आउट का मौका, शॉट बन जाए, विकेट कीपर के पास थ्रो आ चुका है, विकेट कीपर ने गिल्लियों को उड़ा दिया, लेकिन अंपायर स्क्वायर लेग पर खड़े नवीन जी ने जिम्मेदारी को तीसरे अंपायर पर सौंप दी है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसी को कोई शक न बने, न शुबा बने, और बहुत नजदीकी मामला हो सकता है। अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज आउट हो रहा है, क्या बात है, और इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, सिराज आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, और इसी के साथ एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस वक्त रन आउट होकर लौट रहे हैं। सिराज ने 75 for the loss of 4 wickets. 75 for 4. सिराज ने इंडिविजुअल थे. सिराज ने इंडिविजुअल. एक बॉल से 18 गेंदों में 24 रन बनाकर सिराज जो कि पवेलियन लौट चुके हैं। बहुत शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की, दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। क्या शानदार स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए, और अगर अभी भी मौजूद होते तो निश्चित तौर पर डेथ ओवर्स में आक्रमण ज्यादा हो सकता था। एंड मौके पर रन आउट के रूप में ही सही एक बहुत बहुमूल्य विकेट जो कि सिराज का गिर चुका है, और मैं समझता हूं कि यहां पर बस रन की कोई दरकार नहीं थी, क्योंकि सिंगल लिया जा चुका था। दूसरे के लिए सिराज ने खुद मजबूर किया अपने पार्टनर को कि वो दौड़ कर दूसरा रन पूरा कर लें,
और ऐसे में डेंजर एंड पर खुद दौड़ रहे थे तो हो चुका था। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, जल्दी स्टंप्स को उड़ा दिया इससे पहले कि बल्लेबाज सिराज ड्रैग करते हुए अपने बल्लों को क्रीज में पहुंचा देते, और ऐसे में आउट होकर पवेलियन का रास्ता वो नाप चुके हैं। शानदार मौसम और इस वक्त कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की ये प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन छठा चलता हुआ रॉयल हंटर्स और एफएम ब्रदर्स के बीच में मुकाबला हो रहा है। जो दर्शक देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठा रहे हैं उन सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। अजय राज का सप्रेम नमस्कार। और इस मैच में कांटे का मुकाबला होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि दोनों टीमों में गेंदबाजी और बल्लेबाजी का क्रम बहुत सशक्त है। अच्छे क्षमता प्रदान गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं और कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज। और ऐसे में क्या होगा, आइए नए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। आशिक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। 9 ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, बल्लेबाज ने गेंद को जाने दिया, अंपायर को मजबूर होना पड़ा इस गेंद को देख करके वो इस गेंद को वाइड घोषित करें। 1 रन के साथ रन बढ़कर अब 76 पर 76 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 76 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शकीर स्ट्राइक एंड पर हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, कैच होगा, सीधे फील्डर के दिशा में गई और इसको क्या कहेंगे आप, गेंद आसान सा कैच बन सकती थी लेकिन किस्मत वाले निकले बल्लेबाज शाकिर। फील्डर के हाथ से गेंद छूटकर बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जैक का शानदार छक्का। 82 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इसलिए कप्तान की भूमिका बहुत बड़ी होती है कि आउटफील्ड में आप किस खिलाड़ी को रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। ऐसे चपल, चतुर, चालाक, फुर्तीले खिलाड़ियों को आउटफील्ड में रखा जाता है बाउंड्री लाइन पर। इसको बहुत लाइटली लिया फील्डर ने और इस वजह से गेंद उनके हाथ से छूट गई। एक और गेंद शाकिर के लिए फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस को ड्राइव किया। मैदान क्षेत्र में फील्डर आ चुके हैं दायरे के अंदर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 83 पर 83 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अच्छे खासे रन बोर्ड पर बन चुके हैं। 9वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। आशिक अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए सलाम के लिए ऑन साइड की दिशा में पुल कर दिया और फील्डर फिर से हल्के से मिसफील्डिंग हुई। मौके को देखते हुए इसका फायदा उठाकर दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई। पहला रन आनंद फानन में पूरा किया, दूसरा रन 23 कदमों के साथ पूरा कर लिया। हर एक रन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन रनों के साथ रन बढ़कर 85 पर 4 विकेटों के नुकसान पर 85 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फिर से सलाम स्ट्राइक पर आ चुका है। आशिक कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बल्लेबाजों को दबाव में लाएं। जब वो कैच छूटा तो निश्चित तौर पर वो थोड़े से परेशान हो गए क्योंकि बहुत अच्छा मौका हो सकता था। बहरहाल लेकिन फुल टॉस गेंद को हवा के रास्ते उछाल दिया, एक और कैच बनेगा। इस बार नहीं बचेंगे बल्लेबाज, लॉन्ग क्षेत्र में कैच कर लिए गए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। एक तरफ से डीजे अपने शानदार धुन को बजा रहा है, उनकी तरंगे इस मैदान के वातावरण को और चकाचौंध कर रही है। दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों का बंदोबस्त। नगाड़े हालांकि नहीं है, बैंड बाजा के हाथ कहा जा सकता है। दूल्हा भी तैयार नहीं हुआ है। कौन बनेगा इस कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन 6 का विजेता चैंपियन कौन बनेगा, ये तो कल आपको आपके सामने आएगा, पता लगाया जा सकता है। आइए 6 ओवर की गेंद को चलते हैं और बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बल्लेबाज को। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह से चौंक गए और रन लेने का अवसर नहीं। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है, तो कुल मिलाकर रन बढ़कर
85 पर 85 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 9वें ओवर की आखिरी गेंद को लेकर गेंदबाज इस छोर से तैयार हो रहा है। आशिक कोटे का दूसरा और आखिरी गेंद हवा में उछाल दिया, कैच हो सकता है और वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। जब तक फील्डर आ जाते, इससे पहले फील्डर आकर गेंद को समेट पाते, फील्ड कर पाते। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया और इसी के 7 ओवर समाप्त हो चुका है। So that's the end of over number 9, and after 9 overs it's 86 for the loss of 4 wickets, 86 runs, correction 86 for 5, 86 runs 5 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय कुछ दिया गया है और आप जानते हैं कि क्रिकेट नियमों से बना हुआ है और हर टीम के कप्तान को इस बात की जानकारी दी गई है कि अपने समय के अनुसार वो गेंदबाजी करें और अगर समय का उल्लंघन किया गया तो फिर अंपायर की तरफ से कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा, कुछ उसका भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, और ऐसे में समय जो दिया गया उसका पालन करें, कृपया थोड़ा सा जल्दी करें। अभी बहुत सारे मैचेस खेले जाने, अगर मैं गलत ना हूं तो लगभग 4 मैचेस निर्धारित 10 ओवर्स के, यानी कि कुल मिलाकर 80 ओवर्स हो जाते हैं। तो 80 ओवर्स का खेल खेलना है रात के अंदर और अभी इस वक्त 6 बजने में 10 मिनट है, 5:50 हो चुके हैं और ऐसे में दूर वाले छोर से इस पहली पारी की आखिरी गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहा है। शफीक सेकंड पर, जुनैद की गेंद थी, कुछ अलग अंदाज उनका, ड्राइव किया गेंद को ऑनसाइड की दिशा में और हल्की सी मिस फील्डिंग हुई और इसको देखते हुए दोनों बल्लेबाजों ने तेज कदमों के साथ रनों को बटोर लिया और इन रनों के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 88 पर 88 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 88 for 5। आखिरी ओवर प्रगति पर चल रहा है, 5 गेंदें शेष बची हैं दूर वाले छोर से और ये गेंद हवा के रास्ते उछाल दिया गेंद को, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक दोनों फील्डरों के बीच में से, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और ये शानदार 4 रन। जैक का लाजवाब चौका, क्या बात है, खूबसूरत चौके के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 92 पर 92 for 5। 8 रनों की दरकार है और 8 रन अगर बनते हैं तो एक बहुत सम्मानजनक, एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन सकता है, 100 रन बन सकते हैं। वो देखिए गेंद फिर से उछालने का प्रयास, विकेट कीपर के पास गेंद है और बहुत जल्दबाजी में एक और महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका है, एक और विकेट का पतन। $92 for the loss of 6 wickets, 92 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एक और बहुमूल्य विकेट और इस रन की जरूरत नहीं थी, दरकार नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। विकेट कीपर गेंद के ऊपर बहुत तेजी के साथ, चपलता के साथ, फुर्ती के साथ आ गए। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेने का मन बनाया और उस गलती का भुगतान उनको करना पड़ा। विकेट कीपर ने जल्दी आकर गेंद को उठाकर स्टंप्स को उड़ा दिया, रनआउट के रूप में एक और बहुमूल्य विकेट का पतन हो चुका है। दूर वाले छोर से गेंद फिर से थोड़ा सा ऑन द ऑफ खेलने का प्रयास, गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए और इससे पहले कि मिड ऑन क्षेत्रों में फील्डर आकर गेंद को समेट पाते, दोनों बल्लेबाजों ने तेज कदमों के साथ रनों को बटोरने का जो प्रयास किया उसमें बहुत सफल हो गए और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 93 पर 93 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 7 रनों की दरकार 100 के आंकड़े को पूरा करने के लिए, क्या ये बन पाएगा, क्या इसको बनने का अवसर देंगे गेंदबाज। और दूर वाले छोर से इमारत से, सह्याद्री महाविद्यालय के इमारत छोर से गेंदबाज तैयार हुए, विकेट उनकी गेंद हवा में उछालने का प्रयास था, ऑन द ऑफ खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, गिल्लियां उड़ा दी,
लेकिन फिर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर पर विकेट कीपर ने दबाव बनाने का प्रयास किया, बात नहीं बनी, बल्लेबाज रन के लिए दौड़ गए, गिल्लियां पहले उड़ी थी, फिर से स्टंप्स को उड़ा दिया, लेकिन अंपायर दोनों आपस में इस वक्त मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके पश्चात निर्णय निकाला जाएगा। मैं समझता हूं कि शायद गिल्लियां उठ गई हैं तो फिर स्टंप्स को उठाना चाहिए था उनको गेंद के साथ। अब अंपायर क्या बातचीत करते हैं और क्या निर्णय निकालते हैं, ये तो अब सोचने वाली बात है। दोनों अंपायर इस वक्त उस तथ्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, बहुत नजदीकी मामला था, विकेट कीपर ने जल्दी गिल्लियों को उड़ा दिया और उसी के साथ बल्लेबाज जल्दी 1 रन के लिए दौड़ पड़े, फिर से स्टंप्स को उड़ा दिया, लेकिन अभी अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया है, तो स्टंप्स को दुरुस्त करते हुए अंपायर गिल्लियों को लगा रहे हैं और उसके पश्चात खेल शुरू होगा। शायद बल्लेबाज बच गए। रन आपको बता दूं, रनों का लेखा जोखा कुल मिलाकर 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 94 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स और आखिरी ओवर प्रगति पर है। 2 गेंदे, इस आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है और आखिरी गेंद पर क्या होगा? जुनैद थे, जुनैद इत्तेफाक से दोनों जुनैद हैं। दूर वाले छोर से जुनैद की गेंद हो देकर जुनैद के लिए स्टेप आउट किया, उछलने का प्रयास किया, विकेट कीपर के पास से गेंद टहलती हुई निकल गई, बल्ले का सिरा लेकर शायद गई थी, जब तक शायद थर्ड मैन में फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। जी नहीं, बल्ले से नहीं, अंपायर ने संकेत किया कि पैर से लगकर गई है। लेग बाय के रूप में रन पूरा हुआ और इसी के साथ निर्धारित 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 95 for the loss of 7 wickets, 95 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और अब जीत का लक्ष्य 96 यानी कि 96 का टारगेट है और 96 का टारगेट बनाने के लिए शुरुआत किस तरह से दोनों बल्लेबाज कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले कि दूसरी पारी शुरू हो, माइक्रोफोन पर फिर से विवरण में बदलाव करते मेरे साथी मोहम्मद जी को अनुरोध करूंगा कि वो जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। At the halfway stage, I think the batting team has actually got a good total on the board. I think they would be targeting around about 100. I think that's what the magic figure would be. And it's out there. It's about the bowling. I think they got to go out there and give a good account of themselves actually when it comes to their bowling. But I think I'll tell you what. One thing is that you get bad balls and that'll be punished anytime, any day. And that's just one thing very evident about this track, this track and these batters. I think I've seen over the course of the first 10 overs, it's just very evident that you get bad balls and that'll be dispatched out of the ground. But you never know how the chase is going to pan out. The twilight time as well. The twilight time, actually. It's not a sort of red ball or pink ball or whatever. But still, I think it's just going to be a natural. I think just going to be a soft ball. I think just not going to misbehave much. We expect the ball to do a little bit because the ball's got some weight on it, actually. It's not a sort of ball that we generally see in softball cricket. It's slightly heavier in weight.
So it's just going to be easy for the bowlers to really go about their bowling. But you still got to hit the right line, a right length on a consistent channel, consistent basis to try and get that bit going. And that, I think, is crucial from my perspective, I think. Royal Hunters have scored 890. 95 they've managed to score. That means 96 is the magic number, the chasing target that they got to backtrack. I think they've got gun batters. I think they've got good batters. I think when you're chasing down, you got to get your application right. We'll find out more about that in the first 1-2 overs. We'll be able to get a very good view of the track and plus how they can really execute their chase. Chasing's difficult. I fundamentally feel that because under lights, the ball's going to be coming onto the bat nice and clean, no doubt on that. But it's about your approach, your mindset, actually, the way you go to play your cricket, I think, is just going to be down to your skills, I think, as batters. Up next, we've got another match actually coming your way, and we've got Silver Strikers and Coastal Kings. Both of the captains would be welcome here. If you could just make sure to come down to the comm box, I think would be ideal so that we can discuss about the toss time as well. We don't want to waste a lot of time being wasted at the start of the game. We should have had the scheduled start of the game at 2:30 or 3 at least, or thereabouts. But now I think we started at 4:40, and that's something we want to try and compensate for the loss of the time. So the two captains, please make your way to the comm box immediately. But in the meantime, we've got an exciting chase. Interesting to see the field placement as well. So what type of field do you think is actually effective? Plus, what type of bowlers you've got that sort of, medium pace, or just got that Mitchell Stark or sort of Jofra Archer type of bowlers? I think that's something. Got to wait and see. Are they going to go with an attacking mindset? Are they going to be on the defensive side? Are they just going to concentrate more about defending the runs? Are they going to go for wickets? And that's something that we got to wait and see. Target. 96, that means 9.6 is what the asking rate. And they got to do that. They got to start in a very blistering way. And they don't really have a lot of time to take. I think you want to take a bit of time. That's one good advantage if you're batting first. For all its detriment and problems, I think one good thing about batting first is that you set a total and then you get over 6 runs per over. Then the chasing side is slightly under a bit of pressure. I'm sure that they'll feel that pressure. 9.6 per over, never easy. Anywhere, anytime, any day you play cricket, you want to score around about that channel, difficult. Lights are on. Beautiful spectacle of the SAHYADRI cricket ground. So the track, I talked about the track, that it's a beautiful track where you could just, it's a sort of red ball, red kookaburra, white kookaburra type of, or duke ball type of track. Yeah, all set to go. Yeah, I've actually given a call to them. Right, first ball. Bowler's name, please. Someone's got to help us out in the comm box, really, at the scoring area. Salam to start the proceedings from the sort of jack end. Not sure, yeah, from the jack 10-10 or from that floodlight end. Anyways. Sorry, from the college end. It's just going to bowl to the right armour. Right-handed batsman. Oh, that might go all the way. It does go all the way. It's a clean strike. Excellent shot that is. Came from the middle of the screws. That's the kind of intent.
And I'm sure that this is a sort of Brendan McCullum type of intent. Just play fearless cricket. Superb ball striking that is by the batter. Naufal the batter, throwing that long handle, throwing everything, kitchen sink at it. Superb ball striking that is. Beautiful. This time much better in terms of the trajectory of the ball and also in terms of the place where you land the ball. And that I think is so crucial, is where you land the ball in the first place. And just pulling that length back slightly. And you know, that just sometimes, you know what, because of this track. Pulled away with conviction. There is a fielder over there, takes it. No, he puts it down. Made good amount of ground. I tell you what, never an easy grab at all. He had to run a lot of distance to cover it, but it's done superbly, Junaid, but just about not able to take it comfortably. So one shot as well. One shot. I think one shot. I think just the one run to the total. 7 on the cards. Just for a moment, Naufal had his heart in his mouth because he was living dangerously. It could have been taken, I think, but I just got to give it. I can't be tough on that fielder, really. I got to give it to the fielder as well because he was actually tracking to his right and he's kept his eyes on the ball, and in the final instance I think he couldn't control that catch in the bucket. Excellent piece of fielding then. That's the kind of fielding that will uplift your side. But Junaid, I think Naufal's got that luck now. He's just going to cash on that one, surely. It's much better in terms of the line. I think slightly shorter, but I think he thought that he would not go for that pull shot because he wants to get off strike, and then, you know, he doesn't want to take that risk on purpose. I think not a bad idea by any stretch because he's already gotten that big 6. Why would you go? Why would you go for that big 6 once again and bring your own downfall? Because wickets can sometimes tumble you. In the air, will it be caught? It's a straightforward catch. He's not going to drop that. It's been taken beautifully at extra. First wicket going down for. Effin brothers have lost the first wicket, and that will surely put them slightly on the back foot. Now, the ultra-aggressive approach that Naufal started might be dented a little bit because, you know what, 1 wicket down, back in the hut, and then you need someone brand new to go there and express. Never easy. You lose another one now, you're completely on the back foot, and then it becomes that much more difficult for the likes of Junaid or anybody to try and throw that kitchen sink sort of stroke. Difficult it becomes, really. Just got to play attritional cricket, and that's what Junaid's sending that message. Just play normal, basic, fundamental cricket. Don't do anything, overdo stuff, or don't play sort of aggressive, ultra-aggressive brand of cricket. Just express bowling this is by the bowler. Trying to hit the ball deck hard. I think one good thing, bowlers, if you're taking my point, actually, hit the deck hard. I think it's going to give you something off the surface. Much better this time, I think. Might have got some bat on that, not sure about that anyways, but I think it's just going to be a dot ball in the end. So end of over number 1. For 1.
Sharkey to bowl the second over. Has got to pull things back in his favour, really. He's got to bowl some good deliveries right bang on target. I think that's what he's just got to concentrate at the moment. Not just bowl wide, you know, just give that sort of length for the batters to work with. Not a bad start by any stretch for wide outside the off stump. Should be called a wide. Not a good start for the bowler. Sharkey has got to get his line right. One of the issues about these bowlers is that you play seasonal cricket, you play on and off actually. Sometimes it becomes that much more difficult for you to get back and then just play, you know, cricket all again. Beautifully bowled that is. This time much better, I think, in terms of the line as well. Got to wait for the umpire's decision though. By signal, but better bowling really in terms of the line and length actually. So that's what sometimes batters are premeditating that shot. They sit back and then just wait for that sort of shot ball, and you get those shot ball and then you can whack it out of the park. And that's the way, you know, batters really targeting the bowlers. Beauty of a delivery, an absolute beauty, a gem. Really, you're asking the batter's now on the back foot. He's brand new at the crease and pushing on the back foot sort of the bowler, and then you bowl that sort of fuller length. I think it becomes that much more difficult for batter to play a shot. Beautiful again, superb delivery. This is excellent. I gotta admire the bowling really here. It's about experience, I'd say. Showing his experience, the bowler. Sharkey might have bowled, I think, previously, but showing great skills with the bowling. That's the kind of length, that's the kind of line that you got to persist with. If you, I think you're slightly way back of length, and then you're asking the batter to go on the front foot and then just drive, the big drive coming into play. That's a full toss. He takes the full toll on that one. He's not going to miss out on that one, Junaid. Sorry, no full. Full toss down the legs, a rare bad delivery. I think he would be gutted about that, really. Seriously gutted by that delivery, because there was a full toss down the leg side, sort of asking to be hit, sort of hit me ball, and he's obliged that and he's gone to the boundary in no time. Superb batting this is by Norfolk, because he knows he's maneuvering the field beautifully, plus the fact that he's taking that attack. Nicely played away, calmly played away to backward a point for one. This is good batting. I think, in my view, if they got to win the game, Norfolk's got to stay there, I think. Effin brothers, if they got to win, if they got to go towards that goalpost, Norfolk's got to stay in there and got to make sure that it stitches in a partnership and then play as a glue to others. And I think that's the way he's got to go forward. Nicely played away down the leg side. I think it's going to be one there. It's the one to the total. End of over number 2 as well. 17 for 1, Effin brothers. Chasing that massive total of 96. And no matter whether you're chasing 100 or 120 or whatever or thereabouts, doesn't matter actually in reality, whatever type of, what a brand of total that you're backtracking. But what matters is, you know, you got to stay in there, build that partnership, get things going, and you got to have that two-dimensional type of batting. It's where you just pick up singles or twos and then have that mix. Very important. Your innings are just going back, I think, looking back, I think you go out there at the dugout, you look back and then you look at your innings to say that it's a mixed bag actually. Not a sort of, you know, you can't dominate from ball one. You can't do that on a perpetual basis in cricket. I think it's just about making sure you stay in there, do the basics, and that's the way you got to backtrack a total. It's a beautiful track. Any batter will love batting on a surface like this. Plus, I told you that this is a sort of track. Got it away over the top, just about over the top.
1 to the total. I'm giving you another call, actually. Another call for match 2. Teams, please. I request the captain of Coastal Kings and Silver Strikers, Faisal Puma, captain, and Aman, captain bar Arjun. Full toss, and that is disappearing out of the park. That is sheer power striking by Naufal, and that's what I said. If FN Brothers, if they gotta win the game, this man's the key to me, because he's got such amazing power, and a bat swing really suggests about his batting quality. Sometimes I think, to me, that is so vital, that you got that wild bat swing, and in a nick of time, then you've got that point of contact, impact of contact. Nicely played away for 1. This is good batting, good intelligent thinking, really. Strategic thinking by Naufal. He's got to stay there. He knows the value of his presence. He gets out here, they'll be in trouble. And also, the responsibility of number 3 here is to try and ensure that Naufal gets back on strike often, and then he does the job bulk of the time, rather than you doing it alone. Okay, if you can do that, great. I think all parts are elbow. But I think the key here is that set batter Naufal to get back on strike. Beauty of a delivery. That's where you got to land the ball. From bowler's perspective, I think what they got to do is that just bowl towards that sort of pitch. I think this sort of back of a length area. Then the batter's either on the front foot or on the back foot. Then that confusion chips into play. And then you can't really go on the back foot, and then you got to come on the front foot. You're in trouble as a batter. Fiercely struck. The wrist protection out there will just be 1. Good bit of work by the fielder at long off. Just be 1 there. Yeah, that's talking a little bit about bowling and blueprint to what good bowling is all about. Is just bowl that back of a length consistently. You do that consistently, you can put the batters.
Welcome back after the break, after that call to prayer break. Anyways, Norfolk's back in the hut. I think it's just a big blow in my view, in the context of the game. I think that will certainly put them on the back foot, but they got to rebuild that. I'm sure that they've got some good batters, really. They got to restart everything from the beginning, and that's one of the challenges in chasing. When you're backtracking a total of that nature, you got to have some good batters really trying to reinstate everything from the scratch, really. Three overs bowled out. $26 for 2. Two more overs in the bank. Sorry, I think a few more overs in the bank they've gotten, and they got to try and make the most. The question is, a batter coming brand new at the crease. It's not that easy. I did tell you about the fact that it's not a sort of track where you can drive through the line, you can play through the line. I think you can... Ashraf Alur is the new bowler, is going to bowl. So I think what I did mention about the fact that I think what suit would be very handy on a surface like this is sort of red, white ball, pink ball sort of track. I think, just got to hit the deck hard. You got to have that kind of a bowler. Plus you got to try and dark or take you away. And that's the kind of bowling I think will work wonders for the bowling side. Here goes big. Does he pack a punch? No, he finds the fielder. The wickets are tumbling now. And this is where I did mention very, very clearly about the fact that the value of wicket of Norfolk, I think, got dismissed. Now the wickets are tumbling and falling like a pack of cards, and they got to pull things back. How do they do that? I think this is the issue, and I think this would be the strategy of why do you win the toss and bat first. I think if you can do that, great. I think I'm a big admirer of that. You win the toss, bat first. I like that idea, but not especially when you're batting on a brand new surface. I'd not back that really. I back it actually, generally speaking, on a track where I know the conditions well, because it's easy, because it's an English mindset, is that you win the toss, bat first, put runs on the board, and then attack, pick up some wickets, you're on the back foot, and I think that's where it becomes problematic. And in my view, the chasing team now are in a spot of bother, and they got to pull things back. I think it's been just going haywire for them in their chase. Who's that man to pull things? I think put their hand up, trying to turn the ball towards that fine leg region, vacant space. So you can see the field positioning there. It's a backed off leg side sort of field, but you got that field. I think you've got third man and fine leg up in the ring, so you can use that pace. And I tell you what, the bowler's not generating with a lot of pace as well. So you can still use that force, that pace. Maybe, that's one way to play in a risk-free manner. White called by the umpire. Wide down the leg side. Anything goes down the leg side, regardless of whatever it is, it's gonna be called a wide. So that's a good decision made by the umpire. So yes, accessing that field about shot third or shot 5, man of 45 in business. You got a man of 45 in business behind that keeper. So you just get it past that field, and maybe sort of innovation shot, I think, is where you can get it past that fielder. And there's the man there. I don't know, the captain's listening to me.
Nicely played away. They might push hard. No, they don't. Just the single. Singles and twos will not get the job done. But yes, it's a mix. Surely it's a mix. You got to have that mix. Is where you can take your team to a level of comfort. And then you can get to a point where you can launch it from there. Ashraf to the right-handed batter on strike. And that might go all the way. It looked good, and it's gone all the way for 6. It's a full toss. And no way, I think you bowl a full toss and get away. It's not a long boundary, I tell you what. You get decent connection with that ball that's traveling. You're going to get a boundary or a 6. You're going to get a boundary or a 6, and that's exactly what's actually unfolded. So he's slowly getting back on track and slowly getting into his rhythm, the batter is. And he's got to stick in there, he can believe in himself and then try and structure a chase. That's a good one. That is a good one, really. Trying to pack it up, trying to play towards that long or mid-wicket region, but missed it completely by a long way, actually. .34 on the cards. Last ball of the over coming up in the 4th over. Batters have got to be very careful the way they go about their shot selection. Oh, in the air, taken, beautifully taken. Excellent catching, that is. Never easy to take catches of that nature, especially when you're so ahead, so near to the batter. I think it's Pickham. You got to have that good judgment. I think judged it to perfection, really. Excellent catching, that is. And that will certainly put them on the back foot. More blow now for the chasing side. Effin brothers got to resurrect their innings. How do they do that? They got to find a way to do it. They got to find a way to play two-dimensional cricket, not just one-dimensional. In the context of the game, I think it would not match, actually. You just play singles. And the batter's got it. He can't believe that that catch has been taken. And that's one thing I did mention about the pitch analysis that I did do earlier in the day, is that you know what, there's a lot of bounce on the surface. There's a lot of carry, a lot of bounce. Batsman Rauf. బాల్ రిలీజ్ అయిపోయినా చెల్లండి అయిపోయినా చెల్లి అది బ్యాట్స్మెన్ రోఫ్ అప్ అండ్ Shakir. New bowler, Shakir. Shakir is going to bowl. 4 overs bowled. 4 overs done. 4 overs bowled out, 34 for 4. The key question is that who's going to take them towards the proximity of the total. Now, it's not about, you know, hitting big sixes and just blasting every ball out of the park. No. I think it's just much more than that. In fact, it's much more than that, really. It's about getting to the proximity of the total and trying to ensure that you keep yourself in the hunt all the time. And that's something that you got to be very careful about. And how do you fashion and structure your innings really matters. And that's up to these batters, really, to think about. Trying to play that scoop shot, really. Not success. No, you can't do that against the runner play, really. And again, you can't do that when you've got that kind of a pace being generated. You've got to be careful on that.
Flashed hard towards that backward a point for one. Good bit of fielding there. Good pick up and throw. Excellent bit of work by the fielder over there at backward a point. Will just be one. So this is a sort of phase where crucial phase of the game really is that they got to throw some counter punch back. So there's that big shot. It's got to come at some stage. They got to pull that trigger at some stage. The key question is, when would they do that? You can't do that. I think you got to do that in a calculated way. Risk-free cricket you got to play, not play sort of brand aggressive, ultra aggressive brand of cricket. Bring your own downfall in that way. Played away neatly, up and over extra. Safely played away for one. Good bit of drive on the up actually. One of the shots, very a trademark shot. A lot of great Indian batters like Rohit Sharma or Virat Kohli go about the way they go. In the air, I think, in my view, it's a nothing shot really. Absolutely terrible. Nothing shot, nothing catching. I think, you know what, the bowler's gutted really, looking at that. And the fielder's not going to have a friendly night tonight as well, looking at that drop catch. Under the night sky. Never easy, I tell you what, the twilight time that I talked about, this is where sometimes can be problematic for bowlers or batters or fielders sometimes, just to keep their eyes on the ball really. But good fielders make it look easy. Beautiful delivery, can't be out, no deflection. I've never seen that deflection actually, but again, it's not easy from our angle actually, from here, to really predict that, or just to discover that as well. Last ball of the over coming up. This time certainly the edge. But inside edge, I think not easy again to find that out. But anyways, end of that over as well. So it's the crucial time of the game, really. They got to try and think about strategies after strategies. And how do they go ahead and, you know, get to that sort of proximity of the total. Now they are 38 for 2. 38 for 4, and they've got another 5 more overs in the tank, and they got to go a long way up. I think around about how many more? Maybe about 58, or not sure about that. Anyways, equation, but they got to really do some serious thinking on how do they go about their chase. They can't lose wickets. To tell you more about the game, to tell you more about the chase, take you through to the end of the match, we've got with us Mr. Ajay Raj Mangalore is going to give you a ball-by-ball analysis in Hindi language. Over to you, Mr. Ajay Raj. Thank you. I'll be back shortly. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हाशिम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने शानदार प्रयास में खूबसूरती के साथ आपको अंग्रेजी में विवरण सुना रहे थे। वेलकम बैक। कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन 6 में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। अशफाक जी का हृदय से स्वागत करते हैं। कृपया अशफाक जी, तो अशफाक जी से अनुरोध करते हैं कृपया इस बड़े मंच की ओर आए जो हमारे वीआईपीज के लिए बनाया गया। कृपया बड़े मंच की ओर आए। अशफाक जी, आपसे अनुरोध करते हैं
आगे इस मैच में वापस आते हैं जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन छठे में सीजन 6 चल रहा है और मुकाबला रॉयल हंटर्स और एफएम ब्रदर्स के बीच में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल हंटर्स ने कुल मिलाकर 95 रन बनाए 95 और टारगेट इस वक्त एफएम ब्रदर्स के लिए 96 का है। ताजा स्थिति के अनुसार स्कोर आपको बता दें, कुल मिलाकर 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स, यानी कि 5 ओवर शेष बचे हुए हैं। एक छोर से नेशनल हाईवे से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहा है। रॉफ के लिए गेंद लॉन्ग कर दिया, गेंद को लॉन्ग आउट क्षेत्र में फील्डर आ रहे गेंद के ऊपर। एक रन आसानी के साथ लेने का अवसर बल्लेबाज के पास, रन बढ़कर 39 पर पहुंच चुका है। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इक्वेशन आपको बता दें कितने गेंदों में कितने रनों की दरकार है। 29 balls to go and 57 more runs to get। 57 रनों की दरकार। 29 गेंदें बची हैं और इस गेंद को उछलने के प्रयास में बॉल होगा, शायद गिल्लियां उठ गई है और झिलमिलाने लगी है गिल्लियां। अंपायर इस वक्त थोड़े से रुके हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ही नजदीकी मामला है। अब सारे फील्डर शायद अंपायर से बातचीत कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जितने सारे दर्शक इस मैच को देख रहे हो वो बिल्कुल अचंभित रह गए कि विकेट इस तरह भी गिरता है। टप्पा खाने के बाद एक तरह से हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसको उछालने का प्रयास किया और बल्ले से लगकर घूमकर खेलना चाहते थे, बल्ले से लगी शायद हो, गिल्लियां स्टंप्स पर जाकर गिरी और इसी के साथ दाऊद इस वक्त पवेलियन की दिशा में, हालांकि उनको गोद में उठाकर ले आया गया है, उनको गोद में उठाकर ले आया गया है। अभी वो खुश नहीं है और मुझे लगता है कि अंपायर ने कोई संकेत अभी नहीं किया। देखते हैं कि माजरा क्या है। तो हमारे डायमंड स्पॉन्सर, जी हाँ, श्री अशफाक जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस बड़े मंच की ओर आए, जो खास तौर पर वीआईपीज के बुलाए गए और आकर इस सीट पर बैठकर इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को बढ़ाएं। आपका हृदय से स्वागत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आइए कृपया अशफाक जी बड़े मंच की ओर। तो हालांकि दाऊद इस वक्त खुश नहीं है। गेंद डिप होने के पश्चात स्टंप्स पे जगह घुमाकर खेलने के प्रयास में स्टंप से जाकर गिरी थी और इस वजह से दाऊद थोड़ा खुश नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों ने उनको गोद में उठाकर उनको समझाकर कन्विंस करते हुए बाउंड्री लाइन की दिशा में ले आकर छोड़ दिया है। ये मित्रता की बात है, ये स्नेह है कि ये प्यार भरा वातावरण है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। ऐसे में एक और विकेट का पतन, कुल मिलाकर रन आपको बता दें 39 for the loss of 5 wickets, 39 for 5। क्या बात है, नए बल्लेबाज का आगमन, काफी देर से वो इस वक्त मैदान पर पहुंच रहे हैं। समय बहुत सा इस वक्त शानदार दिखाई पड़ता हुआ, शाम का पहर बढ़कर इस वक्त रात की ओर बढ़ता हुआ 6:35 हो चुके हैं और आकाश इस वक्त अंधेरों में डूबता हुआ जा रहा है। बहुत शानदार मौसम है, फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी मैदान को नहला रही है। सह्याद्री का ये मैदान फ्लडलाइट्स की रोशनी से झिलमिलाता हुआ और कुछ एलईडी लाइट जो कि इस वक्त टिमटिमा रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, घने पेड़ जो दर्शकों की भूमिका को अदा कर रहे हैं और दूर दूर जो डगआउट्स और कैनोपीज बनाए गए हैं, उसके लिए मैं दाऊद विजन को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस मैदान को सजाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बहुत खूबसूरती के साथ इस मैदान को उन्होंने सजाया है। आइए इस वक्त दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार, सरफराज स्ट्राइकर पर उनके लिए गेंद थी, थोड़ा सा रुक कर आई, प्रतीक्षा भर करते हुए उन्होंने थोड़ा सा पीछे हटते हुए ग्लांस के अंदाज में गेंद को खेल दिया। जब तक फाइन लेग में फील्डर आकर गेंद को समेट पाते, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया है। इस वक्त परिस्थिति काफी गंभीर चलती हुई एफएम ब्रदर्स के लिए, क्योंकि सामने रनों का एक पहाड़ है, 96 का पीछा करना है और विकेट्स काफी जल्दी उनके गिर चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ होता है,
रॉ स्ट्राइक एंड पर है। सिराज गेंद को लेकर दूर वाले छोर से नेशनल हाईवे एंड से अपने बॉलिंग वाक से तैयार हो रहा है। और एक अच्छी गेंद थी, तेज तरार गेंद, लोअर फुल टॉस जो थोड़ा सा डिप हुई, हाई आर्म एक्शन के साथ करते हैं क्योंकि लंबा कद है, उसको बल्ले का मुंह खोलते हुए मैदान की दिशा में धीरे से पुश बार कर दिया बल्लेबाज ने। रॉफ ने रन देने का अवसर नहीं मिलेगा, रन फिर वहीं पर स्थिर है। और विकेट, फुल टॉस गेंद को उछाल दिया, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के बाहर विज्ञापन से जाकर टकराए, 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का। ये लगा जैक का लाजवाब छक्का और न मालूम क्यों सिराज ने इस गेंद को फुल टॉस कर दिया। शायद गेंद को तेज करना चाहते थे, लेंथ में ज्यादा देना चाहते थे, ये गेंद फुल टॉस रह गई और रॉफ ने बहुत खूबसूरती के साथ पहले गेंद को जज किया, बहुत तेजी के साथ गेंद को साइड किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। और विकेट दिशाहीन गेंद तो नहीं थी, लेकिन फुल टॉस को ज्यादा जिसको जाने दिया बल्लेबाज ने और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। बल्लेबाज रॉफ इस वक्त अंपायर से गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस गेंद को वो अतिरिक्त करार दें, लेकिन अंपायर ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। फिर अंत में जाकर अंपायर ने संकेत किया कि थोड़ा सा देख ले, तीसरे अंपायर की तरफ उन्होंने संकेत किया है और तीसरा अंपायर इस वक्त एक्शन में दीक्षित जी जो कि इस वक्त एक निर्णय निकालेंगे और इसके पश्चात पता लगेगा कि आखिर क्या है। तो बहुत शानदार क्रिकेट श्रृंखला क्रिस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की ये प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन छठा चलता हुआ, लगातार 5 साल काफी सफल रहे और इसके पश्चात ये छठा साल इस वक्त चलता हुआ बहुत खूबसूरती के साथ इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है। और पहला मैच जो कि आज शाम को शुरू हुआ, रॉयल हंटर्स एफएम ब्रदर्स के बीच में टॉस जीतकर हंटर्स ने शिकारियों ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार 95 रन बनाए, जिसका जवाब एफएम ब्रदर्स ने 86 फेयर डिलीवरी का संकेत किया अंपायर ने। इट्स ए फेयर डिलीवरी, अंपायर ने कहा कि फेयर डिलीवरी है, लीगल है और बल्लेबाज थोड़ा सा शफल हो चुका था, जिसकी वजह से अंपायर ने कहा कि फेयर डिलीवरी है और मैं समझ सकता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक रन है, लेकिन अंपायर के निर्णय को निश्चित तौर पर आपको स्वीकारना होगा और चुनिंदा शानदार अंपायर जो कि ऑफिशियल्स हमारे इस क्रिकेट श्रृंखला में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए इस ओवर में चलते हैं। 50 रनों की दरकार, 4 ओवर शेष बचे हैं, 50 more runs to get in 24 deliveries, 24 गेंदों में 50 रनों की दरकार है और दोनों बल्लेबाज अब क्या कुछ कर पाते हैं। रॉफ एक छोर पर बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, जम चुके हैं, दूसरे छोर पर एक नया बल्लेबाज जो कि अभी प्रयास कर रहे हैं, एक सहायक भूमिका अदा कर रहे हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, सारे फील्डर्स आपस में बातचीत करते हुए, जबकि एक अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान पर जलपान को लेकर और ठंड का ये मौसम है, आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में जो खुला इलाका होता है वहां पर ओस पड़ती है और उसकी वजह से फिर रात में, शाम के पश्चात रात में जो ओस पड़ती है उसमें निश्चित तौर पर इनफील्ड और आउटफील्ड में नमी आ जाती है, करीब पिच पर तो नमी आ ही जाती है और ऐसे में खेल किस तरह से बदलेगा, पिच किस तरह से बिहेव करेगा रात के मौसम में, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। तो खेल फिर से शुरू होने जा रहा है, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार है। अशरफ शायद आक्रमण पर आ रहे हैं।
शरफ स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रौफ है और अशरफ दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। तो खेल फिर से शुरू होने जा रहा है। फील्डिंग में इधर उधर परिवर्तन करने के पश्चात ऑफ साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट में लगभग नजदीकी खिलाड़ियों में दो खिलाड़ी, ये नहीं एक मात्र खिलाड़ी दिखाई पड़ता हुआ। अब शॉट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी है ऐसा दिखाई पड़ रहा है। पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड है, पॉपिंग क्रीज की में सीड में जो रेखा जाती है उसमें थोड़ा सा पीछे खड़े हैं और एक और खिलाड़ी ऑफ साइड पर दायरे के अंदर जो कि मिड ऑफ पर तैनात है। शरफ सेकंड पर राउंड विकेट गेंद और इस गेंद को उछालने का प्रयास किया था, थोड़ा सा आधे अधूरे मन से मिस कर गए। गेंद उनके पैरों से टकराई। लगभग के रूप में एक रन का इजाफा हो चुका है। इस एक रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर अब पहुंच चुका है 47 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक छोर पर रफ बहुत ही शानदार तरीके से इस एक जाबाज बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। विश्वसनीय बल्लेबाजी उनकी चल रही है। जब तक वो क्रीज पर रहेंगे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आशाएं बनाई जा सकती है। इस वक्त एफएम ब्रदर्स के लिए जो पीछा कर रहा है 96 रनों का, 5 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं, यानी कि आधी टीम इस वक्त डगआउट में विश्राम कर रही है। उस छोर पर फिर से अशरफ गेंद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से तैयार हो रहे हैं। रॉफ स्ट्राइक एंड पर इस ओवर की एक और गेंद। राउंड विकेट में गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। वुडलैंड स्पॉट से गिरने के पश्चात थोड़ा सा घूमकर और विश्वास नहीं था स्ट्रोक में, खड़े खड़े रफ ने बल्ले को चलाया। गेंद काफी दूर रह गई और इस वजह से बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर गेंद को संभाल चुके हैं। ऑन साइड पर नजदीकी खिलाड़ियों में मात्र एक खिलाड़ी वाइडिश मैदान पर। राउंड विकेट एक और गेंद। फिर से बल्ले को चलाने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। फुटवर्क का कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है और खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, मिस कर गए। विकेट कीपर ने फिर से गेंद को गैदर कर लिया। हल्की सी याद कट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया। एक और गेंद दूर वाले छोर से अशरफ तैयार हो गए। लगातार 3 गेंदें बल्लेबाज रॉफ को बीट करते हुए गई है। डॉट में तब्दील हुई है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी अशरफ कर रहे हैं। गेंदबाज को बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट से गेंद को निकालकर ऑफ स्टंप के बाहर एक चुनौती देती हुई गेंद थी। लगातार 3 बार बीट हो गए, कुछ नहीं कर पाए और विकेट कीपर के पास मात्र गेंद जाती ही रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। एक और गेंद। विकेट कीपर ने अपील हालांकि जोरदार की तो जरूर है और गिल्लियां कुछ चमकती हुई दिखाई पड़ती और ऐसे में विकेट कीपर ने गेंद को फिर से संभाल लिया। सफान ईके कृपया अपने टीममेट्स के साथ ज्वाइन हो जाए, वो इंतजार कर रहे हैं। सफान ईके थोड़ा जल्दी करें, आपके टीम के सदस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो डॉट में तब्दील हुई एक और गेंद। अशरफ क्या शानदार गेंदबाजी उनकी चल रही है। कहां से एक एक खूबसूरती के साथ गेंद को ढूंढ कर निकाल कर वो गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट कीपर जिस तरह से हर गेंद पर अपील कर रहे हैं उसे अंपायर अब बिल्कुल समझ गए हैं कि दबाव लाने का प्रयास है और वो अपनी जगह पर बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। पिछली गेंद भी ऐसे ही हुई, कुछ लेग स्टंप के बाहर थी, खेलने के प्रयास में बीट हो गए। अपील विकेट कीपर ने की लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई थी। दूर वाले छोर से अशरफ की एक और गेंद। राउंड विकेट ड्राइव किया बहुत स्टाइलिश अंदाज में और फील्डर गेंद को उठा चुके तो कर दिया गया स्ट्राइक एंड की दिशा में। एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 7 एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर स्कोर इज ऑन 48 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 48 फॉर 5, 48 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ब्रदर्स ऑफ इस वक्त बहुत दबाव की स्थिति में।
नजीर बदौड़ी, कृपया अपने टीममेट्स के साथ ज्वाइन हो जाए, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करें। नजीर जी, नजीर बदौड़ी, आपके टीममेट्स इंतजार कर रहे हैं। तो सारे फील्डर्स एकत्रित होकर अब मंत्रणा कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाज भी इंतजार कर रहे हैं। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इक्वेशन आपको बता दें, 3 ओवर शेष बचे हैं, यानी कि 18 गेंदें शेष बची हैं और 48 रनों की दरकार है। 18 बॉल्स टू गो एंड 48 रन्स टू गेट, यानी कि लगभग समझता हूं 30 गेंदों का फासला है और 16 का आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 16 का है। तो 16 आस्किंग रन रेट के साथ आपको रन बनाना होगा। अभी भी एक छोर पर रॉफ मौजूद है, लेकिन पिछले ओवर्स में वो लगातार बीट होते गए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि वो काफी दबाव में है। एक और नया ताजा ओवर, 8 ओवर की पहली गेंद को लेकर चलते हैं। इस छोर से गेंदबाज दौड़ना शुरू कर चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी और फील्डर्स हौसला बढ़ाने की कोशिश में, अंपायर को कुछ भटकाने की कोशिश थी, लेकिन अंपायर बिल्कुल सतर्क, उन्होंने उस गेंद को वाइड करा दिया। दिशा से भटकी हुई गेंद थी। एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ लिए जाएंगे अभी और 47 रनों की दरकार 18 गेंदों में। राउंड विकेट, एक और गेंद दिशा से भटकी, दिशाहीन गेंद थी। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और अतिरिक्त रन के खाते में एक और रन, 46 रनों की दरकार। 50 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 50 का आंकड़ा पूरा हुआ। 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। सरफराज 7 गेंद को लेकर फिर से तैयार और अंपायर रिव्यू की मांग कर रहे हैं और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। दीक्षित जी इस वक्त एक्शन में टीवी अंपायर के जिम्मेदारी को निभाते हुए। अंपायर ने कहा कि वाइड है, एक और अतिरिक्त रन खाते में जोड़ लिया जाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं क्रिस्टल फ्रेंड्स बैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन 6 और इस वक्त 7 गेंद को लेकर तैयार। दूर वाले छोर से नेशनल हाईवे एंड से लगातार उनकी गेंदें दिशा से भटक रही है, अपनी लाइन को वो तलाश कर रहा है। और देखिए अच्छी गेंद का है या बुरी गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उछाल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर के हथेलियों में जाकर क्या दे, एक और शानदार विकेट। क्या बात है, बैंड बाजा ढोल नगाड़े शानदार धुन को बजाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और ये स्ट्रोक ऑन दी आप खेला गया स्ट्रोक था, गुड लक स्पॉट से निकली, लेकिन अच्छा प्रेडिक्शन जरूर था। कहना होगा कि प्लेसमेंट में थोड़ा सा मात खा गए। लॉन्ग ऑन क्षेत्र की दिशा में थ्रू द लाइन गेंद को ड्राफ्ट करना चाहते थे,
वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को खूबसूरती के साथ कैच कर लिया और इस कैच के साथ ही छठे विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर आपको बता दें 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। गेंदें धीरे धीरे कम होती जा रही है, रनों की दरकार ज्यादा है, आस्किंग रन रेट बढ़ता जा रहा है। 15.88 का आस्किंग रन रेट इस वक्त चाहिए एफएम ब्रोलर्स को इस मैच को जीतने के लिए। 15 के ऊपर का औसत, एक और सात हो रहा है। उनकी गेंद ऑन साइड पर, गेंद को थोड़ा सा फ्लिक के अंदाज में कट करना चाहते थे। शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर मौजूद, दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया, रन्स को बढ़ाकर पहुंचा दिया 52 पर। 52 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। सिंगल से काम तो नहीं चलेंगे एफएम ब्रोलर्स को इस वक्त कहना होगा कि चौकों और छक्कों की सख्त दरकार है, साथ लंबी दौड़ के साथ। और विकेट उनकी गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को बीट करती, छकाती, चकमा देकर विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। हर वो गेंद पैनापन लेकर बल्लेबाज को छकाती हुई जा रही है। बहुत शानदार गेंद थी, बल्ले का सिरा लेकर गई, विकेट कीपर सिराज के हथेलियों में समा गए। शानदार कैच उन्होंने लपक लिया, एक और विकेट गिर चुका है। जैक का एक और शानदार विकेट, जैसे जैक का एक शानदार विकेट। जैसा आपने देखा, गेंद गुडलैंड स्पॉट से निकली, आक्रामक तरीके से उछलने का प्रयास, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई। विकेट कीपर के पास कैच का मौका जरूर था, लेकिन इतना आसान नहीं था। सिराज जो कि लंबे कद वाले हैं, उनको झुकना पड़ा, लगभग घुटनों को झुकाकर अंतिम क्षणों में जो टप्पा खाकर नीचे जा रही थी, उसको खूबसूरती के साथ कैच कर लिया और इस कैच के साथ ही एक और बहुमूल्य विकेट गिर चुका है। संख्या विकेटों की बढ़कर 7 पर। 52 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 7 एक और बार और की गेंद और हाफ ट्रैकर थी, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद उछल कर आई, उसको थोड़ा उछल कर खेलना चाहते थे, ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। रन अभी भी 52 पर सिर है। तो बहुत ही मजबूत शिकंजा इस वक्त रॉयल हंटर्स का शिकारी है, नाम वही रखा गया है और इस वक्त शिकार कर चुके हैं। 7 बड़े शिकार उन्होंने प्राप्त कर लिए, 7 विकेटों को चलता कर दिया। एक और गेंद लोअर फुल टॉस के अंदाज में आई, उसको ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। फॉलो थ्रू में 7 ने गेंद को फील्ड कर लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है एंड दैट्स द एंड ऑफ ओवर नंबर 8 एंड आफ्टर 8 ओवर्स इट्स 52 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आप देख रहे हैं कोस्टल फंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन 5। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, शानदार धुन डीजे की जो कि इस वातावरण को चकाचौंध करती है। 12 बॉल्स टू गो एंड 44 more runs to get। 44 रनों की दरकार 12 गेंदों में, यानी कि इस वक्त शिकारियों का परिणय काफी भारी दिखाई पड़ता हुआ। एफएम ब्रदर्स को इस वक्त वो बैकफुट पर है, उनको चौकों और छक्कों की सख्त दरकार हर ओवर में चाहिए। इम्तियाज इस वक्त स्ट्राइक पर, सिराज की गेंद थी और इस गेंद को खेलने का प्रयास, बल्ले को लग कर गई। फील्डर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। जुनैद स्ट्राइक पर है, इम्तियाज स्ट्राइक पर, ऑफ साइड पर, पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड। उसके अलावा मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात है
ऑन साइड पर दायरे के अंदर फाइन लेग नजदीक मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है और शायद इस वक्त पैरों में थोड़ी सी मोच आई हुई है जिसको दुरुस्त कर रहे हैं बल्लेबाज और एक और खिलाड़ी। हैमस्ट्रिंग हो सकता है बैक थाई में। आप जानते हैं कि जब आप बहुत समय के पश्चात खेल खेलते हैं तो थोड़ा सा मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और यही हुआ। ऐसे में सिराज में जहां तक मैं जानता हूं आमतौर पर वो क्रिकेट खेला करते हैं हर सैटरडे संडे शायद, लेकिन इस वक्त थोड़े से मांसपेशियों में उनके खिंचाव उसको दुरुस्त करने के पश्चात वो फिर से तैयार हो रहा है। रन अप को शायद उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। इस छोर से उनकी गेंद और देखिए बहुत अच्छी गेंद थी और इस गेंद को डिफेंस तो करना चाहते जरूर थे लेकिन अनुमान में ज्यादा विश्वास में कम था ये स्ट्रोक और जब शायद पैरों से टकराई। अपील तो किसी ने नहीं किया है और फिर से गेंदबाज गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। टाइम आउट का संकेत किया है। जी हाँ, जो समय दिया गया है उसके अनुकूल आपको उसके अनुसार आपको खेल खेलना है। और देखिए गेंद लॉफ्ट कर दिया गेंद को। अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग आउट क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। एक रन लेने का अवसर बनेगा लेकिन सिंगल से बात नहीं बनेगी। इस वक्त चौकों और छक्कों की सख्त दरकार है एफएम ब्रदर्स को क्योंकि पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने और इस वक्त नोवा प्रगति पर चल रहा है। और विकेट ये गेंद बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बल्लेबाज को। डूब हुई गेंद और उनको बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट कीपर के हथेलियों में जाकर समा गई। योजनाबद्ध तरीके से ये बात अलग है कि अपने रनअप को थोड़ा सा छोटा कर दिया सिराज ने लेकिन लाइन और लेंथ पर वो काफी ध्यान दे रहे हैं। और देखिए टेक और गेंद इस वक्त थोड़ा सा परिवर्तन शॉर्ट ऑफ लेंथ थी हाफ ट्रैकर थी मौका मिला पुल किया ऑन साइड की दिशा में। मिड विकेट में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। शॉट में दायरे के अंदर एक रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया जबकि रन्स बढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे औपचारिकता की ओर खेल बढ़ता हुआ। दिशाहीन गेंद फुल टॉस रह गई और अंपायर ने कहा कि वाइड है। वाइड के इस रन के साथ रन्स कुल मिलाकर बढ़कर पहुंच चुके हैं 55 पर 55 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 55 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। सिराज फिर से तैयार बी वाले छोर से उनकी गेंद ओवर विकेट ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर। फिर से अंपायर ने वाइड घोषित किया। मुझे लगता है कि सिराज को गेंदबाजी में काफी परेशानी हो रही है। पैरों में जो खिंचाव आ रहा है बैक थाइज में इस वजह से अब शायद वो फिर से दौड़ना बंद करेंगे और स्पिन का आक्रमण उनका चलेगा। और बिल्कुल हरभजन सिंह की तरह उनकी ये गेंद थी और इस अंदाज में वो गेंद किया था उन्होंने। अंपायर ने कहा कि बाई के रूप में इस रन को लिखा जाना चाहिए। एक और रन के साथ रन बढ़कर अब 57 पर और उसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 57 रन 7 विकेटों के नुकसान पर जबकि 9 ओवर समाप्त हो चुका है यानी कि अब सिर्फ औपचारिकता बची है। 6 गेंदें बची हैं। DJ Uday and DJ கடலை பங்காளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு கலூச்சி எதுக்கா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் சுறாவளி பொண்ணாச்சு பட்டனை பார்த்தாலே பசியாக்கும் பாடி கொட்டுக்கா மீனெல்லாம் காணுமே இரவு கலராக்கும் ஜலேபி லேடி சால்ட்டும் थैंक यू डीजे थैंक यू। तो आइए इस वक्त समय है हमारे उन अतिथियों का स्वागत करना। पनामूर के पुलिस इंस्पेक्टर श्री सलीम अब्बास वलाल जो कि यहां पर पहुंच चुके हैं उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। कृपया बड़े मंच पर आकर विराजे और इस बड़े मंच के गरिमा को बढ़ाएं। आपका हृदय से स्वागत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। कृपया आकर बड़े मंच पर इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को बढ़ाने के लिए आकर विराजे। नागराज पोलीस इन्स्पेक्टर कंकनाडी स्टेशन सर नो बॉल ఒక అష్ఫాక్ నాథ్ అండి
तो इस वक्त मोबाइल का संकेत अंपायर ने किया, एक अतिरिक्त रन। उसके अलावा आप जानते हैं कि फ्री हिट का अवसर भी मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ होता है, दो बॉलें छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हुए। एक विकेट, उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन थी, हवा में खेल दिया, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। एक रन मिल जाएगा, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई है लेकिन इससे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अब इस औपचारिकता को पूरा करने का समय एफएम ब्रदर्स, जो कि इस वक्त बैकफुट पर परास्त होने की और रॉयल हंटर्स जीत की और अग्रसर है, जीत के दहलीज पर वो खड़े हुए हैं। विकेट कीपर अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड के लिए, शायद यहां बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया। एक और शानदार विकेट। सिक्सटी फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 60 रन 60 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर प्रगति पर चल रहा है। क्या बात है। जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन छठा चलता हुआ कोस्टल फंड्स मैंगलोर की यह शानदार प्रस्तुति है और बहुत शानदार तरीके से इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है। अगले मैच के लिए सिल्वर स्ट्राइकर्स और कोस्टल किंग्स दोनों टीमों से अनुरोध है कृपया तैयार हो जाएं। ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास गुडलैंड स्पॉट से निकली और शायद पैरों से टकराई नहीं, देखना होगा। जी हां, अंपायर ने संकेत किया कि लेग बाय है, एक रन और मिल जाएगा। 61 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 61 फॉर 8। 3 गेंदें शेष बची हैं। एक और अच्छी गेंद, बहुत जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी चल रही है। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे, विकेट नहीं दे रहे और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। आखिरी 2 गेंदें शेष बची हैं। बिल्कुल रॉयल हंटर्स जीत के दहलीज पर खड़ी हुई है। एक और गेंद को हवा के रास्ते उछाल दिया, फील्डर गेंद के नीचे तो नहीं आ पाएंगे। गेंद गई मैदान के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का। ओवर द विकेट ये गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए। ये गेंद, इस गेंद को पुल किया, फील्डर आ चुके गेंद के ऊपर और 1 रन को पूरा कर लिया। 1 रन के साथ विकेट कीपर की दिशा में थ्रो रन आउट का मौका बनेगा और इसी के साथ इस मैच को शानदार तरीके से रॉयल हंटर्स ने शिकारियों ने जीत लिया। क्या बात है, बधाई और अभिनंदन, मेरी कंग्रेचुलेशंस। क्या बात है, क्या शानदार धुन बजाई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सारे सदस्य इस वक्त ढोल और बैंड बाजा में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए, इस मैच में रॉयल हंटर्स ने शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मेरी कांग्रेचुलेशंस। एफएम ब्रदर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है, अगले मैच के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। और नया ताजा मैच सिल्वर स्ट्राइकर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में मुकाबला शुरू हो रहा है और इससे पहले के पहली पारी शुरू माइक्रोफोन पर रेवरेंड में बदलाव। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद
हाशिम जी हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे के इवेंट के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for listening to the hottest remixes. Thanks, Mr. Ajay Raj, for that beautiful commentary in Hindi language. Nicely done, really. But I'll tell you what about the game. So if you look at the game summary, just one-dimensional with the way that I think that he forgot at one stage where they were dominating in that chase. If he had gone further a little bit, I think could have been a different story altogether. That's what chasing's all about. One of the issues about chase, I think, not about toss to win. Actually, you win the tossing, you bat first, and I wouldn't have done that. But I think he's just proven me wrong as well, the captain, because when you know the conditions very well, the twilight time that I talked about, where the ball's going to dart a little bit, not easy to chase down a total sack by the opposition. Taking that into consideration, I think that was a good cricketing decision made by the captain. I applaud that anyways. Congratulations on their first win. Royal Hunters, they batted beautifully, they bowled magnificently, their catching's been good. They were spot on right from ball one. I think they dictated the terms. And I think to me the match of the moment is that Junaid got out. Norfolk got out, actually cutting that wide ball straight into that extra cover's throat. I felt that was the moment to me where the game shifted massively to the side of Effin Brothers' side. Towards their side actually. And that's where when you're chasing, you've got to structure your chase beautifully. You've got to fashion that by having great mindset. So I talked about the ultra aggressive mindset. You got to also have sometimes a sort of attritional mindset. Attritional mindset meaning, you got to play, knock around, pick up those singles or twos, try to put yourself in the hunt. I think is very crucial. If you take a sort of back foot, you're on the back foot, then you lose too many wickets up front. I think all parts of their elbow played beautifully and they dictated the terms. That's done and dusted. Now we're going to have the launch of the second match. The second match is going to be played between Silver Strikers versus Coastal Kings. So 4 or 3 hours power play. 3 hours power play. A toss or winner? Silver Strikers. This is Sharif Abbas Walal. Coastal have won the toss, and they've chosen to bat first, I think. And they've chosen to field. Jay chose to field. Coastal chose to field or bat. Yeah, Coastal won the toss, electing to bowl first. Yeah, who do I call now? Who do I call? Mr. Sharif Abbas Walal. Mr. Sharif Abbas Walal.
If you could just find, if I could just find your presence here at the comm box, it would be great, really. Mr. Sarkath is looking for you. Right, so different conditions, under lights, exciting moments, really. Batters really need to be very careful about their shots. So shot selection is one of the things that we've got to be very careful about. These shots, as batters actually generally want to play aggressive brand of cricket. In an attempt to do that, sometimes they bring their own downfall. I think that's where they got to be super careful with the shot choice, the shot making. You got that 3 overs of power play where you can take that full toll of the power play. Maybe, you know, you don't really have to blast the ball like I mentioned earlier. You just can play, you know, normal, just a traditional cricket. It's just to play through the line, just play just easy, simple cricket. Bowler name. Bowler name. Bowler's name, Main. Main's gonna bowl the. Main is gonna bowl the first over actually from the college, and is just gonna fire to the right-handed batter on strike. Let's see how it goes. Actually, it's a beautiful spectacle here. The drone surely should be operational in about a minute or two. The live capture, I think you can watch this game live as well. Trying to switch it. First ball actually. First ball was trying to. Not sure about what type of cricket is he gonna focus on. It's just gonna focus more about playing just normal cricket. Don't really have to do that so soon, so early. Just got to take a bit of time, actually get the measure of the track and maybe play, you know, just normally. Not just one way of batting, as Michael Vaughan pointed out at the Ashes, that England were too one-dimensional in the Ashes that's been running. So miscollection, that might go all the way. No, it doesn't have enough legs to go that far. But be a couple of runs to the total, I think. 2 byes to the total, I think. Right. Now you get off the mark. Talking about, you know, Michael Vaughan and the Ashes that's going on, and it's just playing one-dimensional cricket. It's just not going to work out for you. You just got to have that mixture. When you're a batting or bowling or whatever team, I think you've got to have that mixture. It's not just about just attacking. Not going to work out all the time. Goes big, goes bang all the way for 6. No one's going to catch that one. Excellent shot that is. Came from the meat of the blade. Superb ball striking that is. Sensational timing on that. That's got attritional cricket. Just played through the line. Why would you play innovative like first ball reverse? Just don't do that. I think you play this normal cricket. All in good. I think all good. All part to your elbow if you're able to do that. You just got to focus on that really, realistically. Again, another attempt. Another attempt. It's gone in vain. I think he could just back himself to play normal cricketing shots. It doesn't have to really take that sort of risky option. A lot of risk involved that in shot, because you bowl straight and bang on target, then you're out, dismissed, bowled. And that's why just take a bit of time, relax a little bit at the track, I think. Just calms your nerves a little bit. Sometimes you're an opening batter, you have that nerve in your mind. After this. Beautifully placed shot. Picked up the length, almost like a half volley. That is a super strike, really. I gotta admire the batter here. If he can play shots like that, why would you play switch hits? Just back yourself to play normal cricket.
This is great stuff, scintillating stuff for them, really. Sort of ultra-aggressive fashion, the way he's just gone about his business. Superb timing on that, more than anything else, I'd say. Great timing. Score races up to... Just looking for the score, is it? Not sure what you're looking at, but maybe a boundary check. Looks like slightly inside the rope. I just got to find out more about it from the TV umpires. Got that better view using that modern sophisticated technology. Mangalore media on the line should be 6, but we don't get the right view. The big screen, my evidence is that big screen, but a technician is working behind us, actually is going to give, and also the third umpire, the TV umpire, is working alongside the technician to try and find out that best angle so that you can get convincingly with evidence whether it's gone outside the park or no. You got to get that right. Okay, 6. It's 6. Looks 6 to the naked eye. I told you about the about that big screen evidence. Right onto the line. If it's on the line, it's always a 6. And that's the rule of the game, actually, even in international cricket, that's a 6. Nicely, calmly played away. Just the one there. Good batting, good thinking, really. Not really trying to play shots of every single delivery. 1 over done and dusted. $15 for none. Good start, really. This is for Silver Star. Would take it, actually, anytime, any day. Losing the toss and being put into bat first by the opposition. Coastal, they take it, actually. They take it, and they want to really build on that. Freely from the batting team's perspective, I think I'd say now I've changed my viewpoint. I'd say you win the toss, choose to bat first, put runs on the board. You know what? You're on the driver's seat straight away. Because you know what? When you come down to bowl, you're fresh. Your bowlers are fresh. They get that much amount of time, and then they can fire in. And the chasing process becomes that much more difficult and complex. And I think you win the toss, elect to bat first, and then you put runs on the board. You're on top, actually, because you've done almost 50% of your things right. Then the rest 50 is the way how you bowl and field. So it's proportional success, actually, when you win the toss, bat first, put runs on the board. That's exactly what in the previous game we saw Royal Hunters did, the way they've batted brilliantly to get to that stage, and then they dictated the terms later. And that's exactly what Silver Star must focus on doing. They should really focus on doing that sort of stuff. Has got some bat on that. That'll run away to the boundary. No one's going to track it down. Reverse sweep. Got some bat on that. That'll go all the way to the boundary. Not a bad option, actually. Third man, fine leg up inside the ring, I think. And then you get some bat on that. That'll run away to the boundary. But there's a lot of risk involved in that shot. A risk and reward, actually, there for the batter. The bowler's just got to be very careful with the way he goes about his business. एक मिनट होल्ड कीजिए
थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस वक्त ये समय कीमती जहां पर मुख्य अतिथि पधार चुके हैं कंकराडी के पुलिस इंस्पेक्टर जी श्री टी नागराज जी, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। कृपया आए और इस बड़े मंच पर आकर विराजे, हमारे इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। श्री टी नागराज जी पधार चुके हैं, उनको अभिनंदन और कृपया आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आकर इस बड़े मंच पर आकर विराजे और इसके मंच की शोभा को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। And as the batter, the bowler's actually trying to get a wicket here. I think they should focus more about getting wickets rather than trying to dry things up. First up, I think if you try and get that, I think 1-2 wickets up front, it will be a counter-punch to the opposition side. And that's what the batting teams are actually wrangling to do. They're wrangling to try and put themselves in a dominant position by scoring extra too many runs up front, and that will really put them on the driver's seat. Nicely struck, will just be one. Didn't time that well enough to get past that fielder. Will just be one. Ones and twos will do, really. That's what the mix that I talked about, creating that partnership where you got to have that two-dimensional, not one way, two ways of cricket. I think it's so fundamental to build that building block. And that might go all the way. It does go all the way. Deposited into the leg side boundary. Full toss down the leg side. You cannot bowl there. You cannot bowl there. It's crime bowling down the leg side. Free gift for the batter. Just got some bat on that. It will travel the distance because the ball's got that weight. It almost treats the same way like a red kookaburra ball, actually speaking, because of the weight in the ball. You get some bat on that will disappear out of the park. Flat batted strike, that might go all the way. No, it's been pulled back. Good bit of fielding there by the fielder at mid-wicket. He had to cover a bit of ground, but he's done that exceedingly to block that from going to the boundary. Excellent bit of fielding that is. That's the way how you put pressure back on the batting side. Good phase of cricket. In the air, that might go all the way. It does go. Looks like it's going to bounce. One bounce over the ropes. Great start, absolutely gigantic start for the batting side. Silver Star, I think they put themselves in a very dominant position to try and go for that big glory score total that they're backtracking. They'll surely be able to get that if they go at this rate with the way they're going. And that's why Coastal needs to rise back to the occasion. And they got to pull things back by picking up a wicket. That's what I talked about. Pick up wickets, not just about drying up runs. Because if you dry up runs, maybe for 1 over, 2 overs, good enough. But then you've got a gun batter who's going to take the attack and will take you apart. And that's a problem, actually. Got to be very, very careful with the way you go about your stuff. Acting, bowling in particular on this surface. You cannot bowl length balls, cannot bowl half trackers, cannot bowl full tosses. And the batters are going to hit you all day long. And all night as well. 3 overs bowled out. Sorry, first over bowled out. Moin. 31 after the end of that second over. In the form of bias, they get 1, I think.
Sabit's going very actively at the moment in a very aggressive way. Down the leg side again. That might go all the way. Looks like it's going to be... No, it's going to be just stopped inside the boundary line. Be one more, two more to the total. Mr. Sharif Clinton is with us, is one of our chief guests of our tournament. Thank you so much for coming down to this event. On behalf of Coastal Friends Mangalore, I wish you a very, very warm welcome to this competition and this tournament. Goes big. There is a fielder over there. Will just be one. It's been pulled back, but they had enough time to go for that second run. Sabit's going good at the moment for their side. I think as long as he goes well, I think they're gonna actually put up a good total on the board, and that's what they're gonna be thinking about at the moment. Good bowling, this is much better. Just the one there, one to the total, one to the card. And the progression of the third over. Sabit on strike, Anas at the non-striker's end. Both of them are going well. Good delivery, pace on delivery, that is right up in the block hole. Nothing much the batter could do about that one to try and manufacture a stroke out of that. This is going to be a dot ball. It's got to do a lot of bowling like that actually to try and pull things back. Pace on and then try and make life difficult for batters to deal against. Here goes big this time. It's a miscue, mistimed, and taken comfortably by the fielder at long off. And Sabit's got to take a walk back. I think it was not a fully committed shot, I think. He tried to launch it from his presence, but I think he mistimed it. I think he's got that slice of the bat and the ball taking in the air and no power behind that as well. And that's what happens if you try to hit it too hard, if you don't middle the ball. And sometimes it can pop up in the air like that. And Sabit's got to take a walk back, I think. Big blow, and I think it's much needed in the context of the game for Coastal. They needed this badly, really. And if they had actually gone well for a good block of time, then they would have piled up runs on the ball. Absolutely high class. This is by the batting side. You know, the way they're going at the moment has been really good and impressive. And they've got to keep pressing that button now. Beautifully played away. That will run away to the boundary. That skill for you. Skillful batting at its very best. Using the pace, full toss down the leg side, very little protection. No way you could track it down. That's a gifter for delivery. Cannot do that. It's crime bowling down the leg side with minimal protection. And it's always a boundary. Well flicked, well done by the batter. Got to give credit to the batter. End of over number. 42 for 2 after the end of 3 overs. Mr. Sharif Clinton is with us actually on stage on behalf of this tournament.
I welcome you to take your respectful seat on stage. Thank you so much, sir, for coming down to this event and making it a grand success. Three overs bowled out, 40, 2 for 2. Sort of phase where I think they're dominating the batting side at the moment, and they're trying to put more runs on the board, put more pressure on the bowling side, and then take them apart. And that's the brand of cricket that they're going to focus at this stage in playing. Now, new bowler is going to do the bowling. Bowler's name, please. Bowler's name, please. Samir, the bowler, is going to bowl to the right-handed batter on strike. Batter's name. Anas, the batter. And Imtiaz at the non-striker's end. Interesting to see how they approach their innings. Are they going to play big shots? Are they going to look for singles and twos? Just got to wait and see about that. But I think that the fact that they lost that wicket, they've got the 9 wickets intact as well. They can go for that big blow. Sorry, they've got 8 wickets intact, so they... In the air, simple catch. I don't think he's going to put that down. Make it number 3. Number 3 perishes. Anas has got to take a walk back as well now. In the previous over, actually, his partner got out, and now Anas has got to take a walk back, and this is a big, big blow. And Coastal's right back in it, actually. And they want to pick up more wickets meaning more pressure. That means you can't score runs freely. That's one thing, surely, that'll be playing in the back of the mind. And that's where captains need to be agile. One thing I didn't really talk about much is the way you got to handle the field, the batting, the bowling, everything as a captain. You got to do that 3-dimensional activities. And that's where the captain's agileness comes into, agility, sorry, if that's the right term, comes into picture. Got to be agile as a captain. Got to work well with the wicketkeeper, sometimes with the vice captain, sometimes with the bowler, to try and get that best strategy for you, whether you're fielding or batting or bowling or whatever. So really central. And that tenet is missing in tennis ball cricket, is that where the captain's coming into that area to influence the game in a big way, in a massive way. Played away, calmly, driven away, gentle drive for 1. Hello. Yes, Coastal Friends presenting. Got it away. Coastal Friends Mangalore ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೀಸನ್ 6 ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹರ್ಷಾದ್, ಸಿಇಒ ಉಗೂಸ್ ಕಂಪನಿ, ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸರ್, ಇವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜುನೈದ್ ರವರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಟಿಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಂಕನಾಡಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲೀಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪನಂಬೂರು ಠಾಣೆ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಇದರ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೋರಂ, ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶರೀಫ್ ಹಿಲ್ಟನ್, ಇವರನ್ನ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೀಸನ್ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Four overs done, 49 for 3. I think slightly pulling things back, I think, but still the run rate shooting up. Silver Star actually are batting so well, and they got the measure of the track, and they are starting to play expansive ways, expansive drives, nice cut shots, a good mix actually, mixed bag actually. Speaking the way they've gone about their business so far, it's been truly impressive in many ways, especially the way they stitched in that partnership, plus the fact that they picked up those good deliveries. I think decent deliveries to play shots. I think it's been truly good. New bowler, bowler's name Rafiq to bowl, the 5th over. He's going to bowl to the right-handed batsman. He's going to bowl from the college end to the right-handed batter on strike. Right arm round, I think. Calmly played away, just dabbing it. Not bad by any stretch, because you got to have that kind of thinking as well. The key question is who's going to be that X-factor player, and that's where everything is going to determine for each and every team. Actually, you get your gun bats and X-factor batters to stand in. Nicely played away, calmly played away, stylishly played away by the batter. ಎಸ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕೀರ್ ಪೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಶಾಕೀರ್ ಪೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟು cut away with conviction, but there is protection out there in the DWGSP1. So you get all these batters. He's a talented batter, I think. Looks like a right-handed talented batter. His name? Imtiaz. Looks a very classy. Yes, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಟಿ.ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಇವರಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಿಯಾಜ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ರಿಯಾಜ್ ಖನೂರ್ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಲೀಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಣಂಬೂರು ಠಾಣೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಜೀರ್ ಬೆದ್ರೋಡಿ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ. ಎಸ್,
ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶರೀಫ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ಇವರಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ರವರು ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಚೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಇದು ಜುನೈದ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು ಇವರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1 2 3 ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1 2 3 ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಹಿತೈಷಿಯಾದಂತಹ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. പിന്നെ എടുക്ക ബൈ. ಒಂದು ಕೊಡು ಪಿನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡು, ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಡೋರು ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸಾಧನೆ ಎಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, बहुत बहुत धन्यवाद. आइए तमाम दर्शकों का हृदय से ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಸಲೀಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್ ಇವರು ಪಣಂಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಸ್ಎಂ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಲೀಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಹಿತೈಷಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಕಾಣದ ಕೈ. ಎಸ್, ನಿಂಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡು. ಎಸ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಸೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಜಾಕ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೀಸನ್ 6 ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಎಸ್ ಸರ್.
ಹಲೋ 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 ಎಸ್ 63 ರನ್. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ 1-2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ 2 ನಿಮಿಷ, ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಾಗಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 80 ಜನರಿದ್ದರೆ ಅದು 80 ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ outstanding contribution social service ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಈಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪಿನ್ ಕಾರ್ಯ ಇಂದ ಬೇರೆ. ಎಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲದಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 25ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೋರಂ ಅಬುದಾಬಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ KNRI ಫೋರಂ UAE. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ 10-20 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಕಣ್ಮಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಸರ್, ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಂಟೆಗಳು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಿನಗಳು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಾರಗಳು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆ ಪರಮ ದಯಾಮಯನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಸರ್. ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳು. ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ. ಸರ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು
ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಶರೀಫ್ ವಲಾಲ್ರವರೇ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಹತ್ರ, ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯುವಕರೇ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಗ್ರೂಪು ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರೂಪು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ಕವರು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಬ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಎಳೆದು ತಂದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದಿವಸ ಆಗಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಸತ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸುದೃಢ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಜ್ಜಲ್ ಸರ್ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಫರ್ಲಡ್ಕ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ ನೀವು ಅನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದೊಂದು 80 ಯುವಕರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ ಸಮಯವನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು. Yes, sir. Over to commentary box. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद. जितने सारे मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हैं उनका हृदय से स्वागत करते हैं. अभिनंदन, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. आइए इस वक्त मैदान पर चलते हैं. कोस्टल फ्रेंड्स बैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन 6 में इस वक्त मुकाबला सिल्वर स्ट्राइकर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में चल रहा है. टॉस जीतकर कोस्टल किंग्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सिल्वर स्ट्राइकर्स जो कि इस वक्त ताजा स्थिति के अनुसार 65 for the loss of 4 wickets.
65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सिल्वर स्ट्राइकर्स बना चुका है और अभी अभी 1 विकेट गिर चुका है और कहना होगा कि अच्छे खासे लक्ष्य बनाए जा सकते हैं जिस तरह से औसत करता हुआ। हेलो 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 यस ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನ ನುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಕನಾಡಿ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವವರು. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಲಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋದು ಸಲೀಂ ಅವ್ರನ್ನೇ, ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ. ಎಂಥವ್ರನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೂ ನಗಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಸಲೀಂಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೇನಿದ್ದೀರಿ 80 ಜನರ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಹಿತನೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಹೃದಯದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರೇ. ನಾನು ಆವಾಗವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಯುವ ಜನರ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸೇನಿದೆ ಅದು 80 ಹುಡುಗರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 80 ಜನರ ಏನು ಯುವ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಾಗ ಇಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸದೃಢವಾದಂಥ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದೇನು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇ ಟೀಮ್ ಇದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು. ಸೋತವನು ಗೆದ್ದವನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಸೋತವನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ 10 ನಾಯಕರನ್ನು ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೋತವರು ನಿಮ್ಮವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದವರು ನಿಮ್ಮವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೊಂದು 46 ಆಯಿತು ಸಲೀಮ್. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಡೈಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಟದಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾನು ಸಲೀಮ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದರು, ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಲೀಮ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮದು ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಕಂಕನಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಬೇಕೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಸಲೀಂ ಸರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಸರ್. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಬಂಧ ಏನಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನವಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಒಂದು ಸೋಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣ ಉಳ್ಳಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಲಾಭರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒತ್ತುಗೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ. ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಓಟ, ನಮ್ಮ ಈ ಏನಿದೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಈ ಓಟ, ಇದು ಚಿರಂತನವಾಗಿರಲಿ, ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲೀಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಸರ್, ನೋಡುವ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿತನುಡಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸಾಂತ್ವನ ಸಂಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಂತ್ವನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ನೀವು ತೆಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, 2ನೇಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ, 3ನೇ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಮಾತ್ರ ಈ ಸಲದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಡೈಲಿ ನೋಡುವವರು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ರಿ ಕೆಲವರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಸಂತೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮನೆ ಕೂಡ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮೊನ್ನೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಬೇಕಂತನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದರು, ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದರು, ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ
ಅದ್ಭುತ ಯುವ ಕವಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಕಥೆಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಂದು ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕತೆ ಕವನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮುನವರ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯುವ ಕಥೆಗಾರ ಮುನವರ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು. ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಇವರಿಗೆ ಶಫೀಕ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್ ರವರು ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಮುನವರ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು. ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕವಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಶ್ಫಾಕ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರು. ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ದುಬೈಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರು. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಕೋಸ್ಟಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ವಿಶ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತುಗಳಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನನಾದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶರೀಫ್ರವರು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಂದರು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವರ್ಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ, ನೋ ವರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಚ್ಪನ್ಗೆ ದೋಸ್ತೆ. ಸಲೀಂ ಅಬ್ಬಾಸ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೋಸ್ಟಲ್ನವರ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವರ್ಕನ್ನು ನಾನು ಈಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ supportive work for the social people and Mangaloreans, okay, and also continue with all these progressive works. Thank you so much for everyone. Thank you so much. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲು ಏನು ಮುತ್ತು ಏನು ಅಂತ. ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಮುತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರೇ, ನೀವು ಒಂದು ಮುತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಅಶ್ಫಾಕ್ ರವರಿಗೆ. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟೇಟರ್. वेलकम बैक कोस्टल फ्रेंड्स. मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन 6 में तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं. ताज़ा स्थिति के अनुसार आपको बता दें, टॉस जीतने के पश्चात पहले गेंदबाजी करने का फैसला कोस्टल किंग्स का. सिल्वर स्ट्राइकर्स ने कुल मिलाकर
79 रन बनाए, 79, जबकि 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 79 for 7, यानी कि आखिरी ओवर इस वक्त पादान पर बचा हुआ है और इस आखिरी ओवर्स में कितने रन बनेंगे देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला चलता हुआ। अंपायर संकेत कर रहे हैं कि बैटिंग पावर प्ले जो कि लिया जा रहा है, टाइम आउट का संकेत किया है। आखिरी ओवर इस वक्त बचा हुआ है और इस आखिरी ओवर में कितना कुछ होगा। टाइम आउट का संकेत, क्षमा प्रार्थी, आमतौर पर कुछ ऐसे ही संकेत बैटिंग पावर प्ले के लिए भी लिया जाता है। तो शुरुआत में दोनों हाथों को एक साथ करते हैं और उसके पश्चात यस, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಟಿ.ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೂ ಆದಂತಹ, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಸಹೋದರರು ಆದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಶ್ರಫ್ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ ಪಿ.ಬಿ. ಹಫೀಜ್ ರವರು, ಅಜ್ಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿ.ಬಿ. ಹಫೀಜ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಸ್ ಎಂ ರವರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ಅಶ್ರಫ್ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಸ್ ಎಂ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶ್ರಫ್ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಅವರು ಓರ್ವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕೂಡ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬೊಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿತೈಷಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಯಾವತ್ತೂ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯ ಅಶ್ರಫ್ ನಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಸ, ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್. ಯಸ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಅಜ್ಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಿ.ಬಿ. ಹಫೀಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾಗಿದೆ.
ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೀಸನ್ 6 ಆಗಿದೆ. PB ಹಫೀಜ್ ಅವರು तो इस वक्त 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 9 ओवर के समाप्ति पर 10 ओवर समाप्त हो चुके, क्षमा प्रार्थी, तो पारी समाप्त हो चुकी है. 10 ओवर के समाप्ति पर सिल्वर स्ट्राइकर्स ने कुल मिलाकर 84 रन बनाए हैं, 84, और लक्ष्य है 85 का. कोस्टल किंग्स को 85 रनों की दरकार, 85 टू गेट आउट ऑफ 60 डिलीवरीज, यानी कि 10 ओवर में 85 रनों की दरकार. कैसे होता है शुरुआत, ये देखने वाली बात होगी. 5-0 के औसत से, क्या बात है, थैंक यू सो मच. और आस्किंग रन रेट 5-0 का है, तो क्या ये लक्ष्य बनता है या नहीं? ದಾವೂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾವೂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟನ್ ದಾವೂದ್. वेलकम बैक. कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन 6 में पहला मैच रॉयल हंटर्स और FM ब्रदर्स के बीच में हुआ और उसको शानदार तरीके से रॉयल हंटर्स ने जीत लिया है. और ये दूसरा मैच आज का सिल्वर स्ट्राइकर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में हो रहा है, जिसमें टॉस जीतकर कोस्टल किंग्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 85 का टारगेट उनके सामने रखा हुआ है. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ ದಾವೂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟನ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಎಸ್ ದಾವೂದ್ ರವರೇ, ಎಸ್ ದಾವೂದ್ ರವರೇ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಬರುವ 27 ಮತ್ತು 28 ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಸ್ಟೈಲೋ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಇವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುನ್ನಾ ಕಮರಡಿಯವರ ಮೂಲಕ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಕಕ್ಕಿಂಜೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ದಾವೂದ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ 27-28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಸೈಲೋ BPL ಸೀಸನ್ 15 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Right, well, we're all set for the chase. I think we're just going to wait and see how the chase is going to be executed. One of the issues that the players have the batters actually have had confront is to chase the total and turned out to be that much more difficult, really, to chase down a total of that nature, any nature for that matter, because you're backtracking and the conditions are not that suitable when you're backtracking a total.
Moin and Samir to start the proceedings for their side. Chase is total down actually, the set up by the opposition side. Just gotta see how they go about their business. 60 balls, 85, that's the asking, that's the magic number on the big screen. They gotta backtrack that, I think it's never gonna be easy. And you just gotta be very careful the way you start actually. Right, all set. The application, the process of chasing is very crucial. I think it's lost his run up, I think, Imtiaz. Imtiaz is a utility player. He can bowl. He's very much like Ben Stokes for England. Can bowl, can bat. Beautiful bowling that is. Good line, good length. Could have been a run out really of the very first delivery, but not to be the case in the end. Talking a little bit about Imtiaz, the way he goes about his bowling. I think doesn't have a long run up if you look at the way. It's just not like a Jofra Archer type of bowler. It's very much like Boland from Australia. Just got that short run up and then hits the length. Hits, I think for me the bowler, what you got to really try and target about is that hitting spot where you pitch the ball. And you got to hit the deck very hard. And you do that consistently, you're going to put the batter in trouble as well to a greater degree. Excellent stuff this is by Imtiaz. Good bowling, really. There's that example about how good a bowler Imtiaz is. Talked about his utility nature as a player. Can bat a bit, can really play in a stylish way. He did bat, I think, beautifully to take his team to a level of comfort. And then now bowling. He's taken that new ball, a brand new ball, and then he's got doing the job. I think the twilight time is over now. It's not gonna, it's just gonna be, you know, one-dimensional condition that you can find out now. Nicely played away, calmly played away, opening the face of the blade and just getting it past that fielder towards that backward point position for one. Excellent stuff this is really. That's the way you got to execute a chase. The chasing is not about backtracking in a sort of aggressive way. You do that, you've put... Oh, that's beautifully ball. Might have gotten a little bit of an inside edge, not sure about that. But do we have an LBW in place? And that's the big question. Another big question. No, I think. Decline. I think if there was LBW umpire, I think a soft signal, please, would have been out. Would have been out. Yeah, looked ages end from that view and that angle. It's fast and express. Goes big. And put down. That should have been taken really by all stretch. That should have been taken. Catches going down actually. These are sort of straightforward chances. You can't afford to drop those catches. You could put really your team in a bit of a bother actually if you drop those catches actually. Excellent bowling this is by Imtiaz. You've got to give it to Imtiaz the way he's gone about his bowling so far. Has been accurate, has been pitching the ball in the right area. Excellent bowling, that is superb delivery, bang on target, pitching the ball beautifully. That length that I'm talking about has been superb really. End of over number one. It's 3 for no loss. Good Imtiaz over comes to an end. Good. It's not an express type of bowler like I told you. It's not about whether you got to be express like Jofra Archer or Mitchell Stark really, bowling in a very aggressive way. Instead, you got to really think about pitching the ball in the right zone. You can do that consistently. You can certainly put the batters in a bit of a trouble. And now they're backtracking.
85, backtracking 85 is never going to be that easy. For me, I think you got to save wickets, and that's exactly how they're approaching at the moment. The batting side, the chasing side at the moment is that they know that they lose a wicket or two here in a cluster. In a nick of time, things can change really drastically, and that's why you got to be very careful about the way you approach the target. In what way? Shaukat, I think, is the bowler. The two openers are still there, actually. The key for them is to keep that momentum going. They got to acquire that momentum. It's not about, you know, you can get bogged down at one end or another end, actually get bogged down on the back foot. You've got to take that attacking option at some stage. Anas to bowl the second over from the college end is going to fire it to the right-hander batter over the wicket, crossing the umpire. Under lights, a fantastic spectacle of the tournament. And that is a half-tracker. That is a half-tracker. You can just sit back and whack it all day long for 6. It's almost like a hit-me ball. I did talk about the hit-me ball. I think this is the one, actually. Not a great deal of power needed to dispatch that out of the ground. It's just the bat flow. You can just have that free swing of the bat coming through the direction of the ball. It's going to go all the way because you get that timeline. You give that extra bit of timeline for batters to make that judgment in a nick of time. And you can whack it anytime, any day. Rohit Sharma is very good at it, actually, for pull shots. He goes reverse. Does he do that again? Yes, he does. Tremendous timing on that one. Absolutely outstanding stuff by the batter. Really, you got to give it to him. This is how you shift the pressure back on the bowler. Reverse switch. This is probably the first switches that's gone for 6, actually. Beautiful batting. Really full respect. Showing absolutely complete respect to the bowler. It doesn't want to really get out, actually, because you know why? He's batting well. You can afford to take your time as well if you're batting well. You don't really have to think otherwise. Full toss. Smashed away. Great catching. Staggering catching by the fielder at long off. Mid-off, in fact, inside the circle. That was travelling in the second attempt. He was able to take that catch. That is a great bit of work. The batter is gutted. He's got to take a long walk back, disappointingly. Incredibly disappointing, that is, for the batter. You play that kind of a shot, and that's been taken, and that's the danger. Safwan's pulled off a blinder. Moeen's got to go back to the hut after hitting that massive 6 over mid-wicket and that backward point region. Moeen should have stayed in there. I think that's what happens in cricket. I think in a nick of time, when you're chasing under pressure, you want to overdo at times. You really want to take that counter punch option, and sometimes might not work in your favour. And it can backfire in a very bad way. And that's exactly what we've seen over there. Moeen's got to take a walk back. I think he's just going to go back disappointingly. That's what I talked about. Your shot selection's got to be super accurate. You don't get that bit right, you're on the back foot, you're going to bring your own downfall. And that's where, really careful about the way you play shots. Sometimes playing in the air. I think you can still play attritionally. A full toss, he could have hit it anywhere he wanted. But very, very unfortunate that he found that fielder. But that was a spectacular grab. Probably one of the best catches taken today. Again, another half-tracker. Another half-tracker by the bowler, but just the one this time around. Got away with that one. Can't bowl that kind of deliveries, really, for a batter who can play big shots, really. Because you give that extra bit of time. Sometimes back of a length is fine. I think slightly further up.
But half tracker meaning shorter, which means you can whack back, you can rock back or sit tall and just whack it. Does it beautifully, does it beautifully, does it get part? No. Good bit of fielding by the fielder, square leg. Had to cover a good bit of ground and has done well there, Fies. Is a good, brilliant fielder, Fies is. End of over number 2. 17 for 1. 2 overs bowled out. 17 for 1. Kindly note the score. 17 for 1. Kindly note, the spectators or anybody, some of the cars have been parked on the road over there, and we get that message from the security personnel actually. If you can just move those cars and make the way. Okay, so if you can clear the way, we'll be really thankful to you. Anybody who's actually parked the car on the road. We've managed to get that information coming from the security personnel actually. Walked up to us and gave that information. But anyways, anybody who's parked the car on the road, kindly clear that off. Please look into that request. Got it away for 1. Just the one there. So talked about the template for chasing. The template for chasing is very crucial. I think, what kind of template do you think would work? But in my view, I'd say, you got to have that 2-dimensional batting approach, which is much more about that might go all the way. It does go all the way. Super strike, that is. Came from the meat of the blade and traveled the distance into the square leg boundary. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Back-to-back boundaries for the batter is oozing in confidence now. That's what I talked about. You can't bowl half-trackers. You bowl half-trackers. That'll be taken for plenty. That's exactly what we've seen. Got to pitch it further up and try and, ask the batter to drive through the line rather than, giving that extra bit of time to whack it. Another full toss. That might go all the way. Luckily for the bowler, manages to find the fielder there. Will just be 1. End of over number 3, right? 34-1. 30 for 1. 30 for 1.
Silver Strikers will want to really try and break things up here by picking up a wicket or two. But at the same time, Coastal have got a good pace of scoring at the moment, which means they can go at this rate. They'll get there, surely. But Silver Strikers are mindful of the fact that they got to remove one or two batters here to try and pull things back in their favour. And this is what I think cricket's all about, soaking up pressure and putting pressure back on. And that's what cricket's all about, as clearly pointed out by one of the smartest brains in cricket, Rob Key, Managing Director of English Cricket. Just put pressure continuously and soak up pressure. You got to do that continuously in cricket. Any type of cricket for that matter, whether it's softball, whether it's red ball, pink ball, or whatever. And that's how you go about it. Cut away with conviction. It's got some, I think the fielder's over there has got some part of the body there protecting the boundary. It could have raced away if he had not gotten any part of the body touching or deflecting. Just the one there. So chase is on, actually. Chasing process is on despite of losing those wickets. It's in the air. It's a mistimed shot, actually speaking. Just be one. Not going to go for more, actually. Lucky that it didn't go straight to the fielder. It could have gone. Sometimes what happens is that certain shots can go straight into the throat of the fielder. But on that occasion, just falling in the no man's land. No one's inside the circle in the leg side. On the leg side, actually. On the onside, actually. Trying to play an innovative shot down the leg side will be called a wide. There's a lot of risk involved in that shot. But if it comes off, it's great, actually. If it doesn't, it's problematic. That might go all the way straight to the fielder. Takes it beautifully. Kept his eyes on the ball. Fires, like I said earlier, is a safe fielder. Judged it to perfection. Excellent catching, that is, by Faiz. Kept his eyes on the ball, kept his cool, judged it to perfection. Excellent grab, that is. It was dying on him, dipping on him. He had to keep his eyes on the ball all the way through. Never easy, like I mentioned earlier. Catching under the lights, actually. You know, sometimes you have a blurred vision. And that's why you have to really focus on the ball until that last point. But great catching, that is, by Faiz. And this will certainly slow the process of scoring. This will certainly slow down the process of scoring to a certain degree. But I think they're going to go anyways because they back themselves and they got gun batters. And they want to go for it anyways. They don't mind about losing wickets. And that's the positive idea you got to have. But at the same time, you also need to be, you know, come to terms about the fact that you lose too many wickets, you're actually on the back foot, and then you won't be able to play risk-free cricket. And in my view, I think when you're chasing a total like this and you lose wickets on a consistent basis, probably you can target 1-2 deliveries in an over rather than targeting every single delivery to pack a punch. And then that, I think ideally that way, that would be the right suit of batting. It's a new batter. Shiab walks out. That'll go all the way. No. Again, Faiz in action. Does well there. Excellent fielding by Faiz. Moves very quickly across the turf and gets rid of the ball immediately, as well as sign a good fielder, actually speaking there. Got to be very careful, I think, these batters. I think there's numerous half trackers, actually. You know, you can just sit back, and he goes big, he goes massive, he goes all the way for 6. Terrific ball striking this is. Sensational stuff. Absolutely sensational stuff, that is.
on the length, giving the charge all the way to that long on boundary. There was a fielder over there. He had to try valiantly, but still he could have managed to grab it. It's just gone all over him actually for a 6. Superb ball striking this is. Just got to give it to him the way he's gone about it. Here goes yet again. This time I think has not timed it well enough. Yes, has not timed that well enough. He's absolutely gutted about his own exit, because he could have packed it up, he could have whacked it anywhere he wanted. He could have chosen to hit it square, mid-wicket, long gone, anywhere, but he didn't get the distance because it didn't come from the meat of the blade. It went straight into the pouch of the fielder. Another wicket going, another one bites the dust, but the runs are coming. Runs are coming at a rapid pace, but at the same time they're losing wickets as well in a cluster. The score still stays there. The score shot up to 40 for 3 after the end of over number. 40 for 3 after 4. 40 for 3 after 4. Kindly note the score. This game's going right down to the wire. This game's not over yet. Looks even Stevenson nicely poised and balanced at this stage. It can go either way. I tell you why. Latif walks out to the centre. Whoever goes out there has got to really... Whoever goes out to bat really has got to be very circumspect about the way they construct and structure the innings. And that, I think, is so vital. Express spacey bowler in action now. Bowler's name? Sabit, the bowler. From the highway end. Half track, a shot ball, much shorter actually, but well directed actually. If it was outside off, a leg side-ish, could have been a boundary. But luckily, that was very much, well directed, I'd say. So just the 1 to the total there. Sabit's got a bowl of brilliant over in the context of the game to pull things back slightly. Again, nicely struck straight to the field. The bowler on his follow through. Sabit just about not collecting that ball. I think he could have picked it up clean. He could have put the batter in trouble to a certain degree, I feel. But not to be the case in the end. No damage done. 1 run taken. Sabit's got that aggressive mindset to bowl express pace. Cut away with power, but there is protection over there. Fielded well, I'd say. Just got to give it to that fielder. Excellent fielding, that is, because the ball's actually turning away from you. As a backward point fielder, you got to be super accurate in judging that. Where's going to go, actually. Beautiful delivery. That's pace on delivery. Length ball, slightly back of a length. Good length, actually. Rather in that good length zone. You do that. I know that it's difficult, it's complex to actually try and hit the ball in that good length channel every time you bowl. But if you can try and do that, at least back of a length, you bowl well, actually. And that might go all the way. The ball's going to turn away from the fielder. He's got to be mindful about that fact. You play international cricket or whatever in a ground like this, you expect the ball to turn a little bit with that pace. Just the 1 to the total there. Beautiful bowling, that is. Absolutely super accurate. End of over number 5. Coastal have raced themselves to 44 for 3, with 41 more needed to win. 44 for 3,
And I think, it's going to be a roller coaster ride for Coastal, but you never know which way the game is going to go. And to tell you, unpack more about it, we've got with us Mr. Ajay Raj Mangalore is going to give you a sort of a paint a picture on how the batters really need to go forward and how they can execute this chase and how the bowling team can defend it successfully. And he's got that, Mr. Ajay's got that blueprint. He's going to give you that blueprint for both of the teams. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद हाशिम। आइए इस वक्त चलते हैं, बहुत ही रोमांच बढ़ता हुआ और कहना होगा कि दोनों के बीच में ये कांटे का मुकाबला हो रहा है। दर्शक जो कमेंट्री बॉक्स में के सामने खड़े हैं, मैं उनसे बहुत ही विनम्र भाव से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा वो साइड में जाए। कमेंट्री बॉक्स ಎದು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಡಲಿ, ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯವಂತದ್ದು ಆರ್ ಎದುರ್ದಾರ್ ಒಂತ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರುತ್ತಿನಾರು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆ। तो इस वक्त 85 रनों का पीछा कर रही है कोस्टल किंग्स और कांटे का मुकाबला दूर वाले छोर से गेंद ऑन विकेट और इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया लेकिन ब्लाइंड शॉट था, जज नहीं कर पाए गेंद को, लेंथ में ज्यादा थी गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। बहुत शानदार मौसम, धुंध पड़ी हुई है, ओस गिर रही है, रात के 8:50 हो चुके हैं, आकाश अंधेरे में डूबा हुआ, दूर आकाश में चांद खिल उठा है। कहना होगा कि क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए ऑन साइड पर ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, दोनों बैट्समैन बल्लेबाज एक रन आसानी के साथ पूरा कर चुके हैं, रन बढ़कर 45 पर 3 विकेटों के नुकसान पर, 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और सियाब स्ट्राइक एंड पर है, जिशान नॉन स्ट्राइक एंड पर और गेंद को लेकर आफ्ताब तैयार हो रहा है। आफ्ताब जो कि सह्याद्री महाविद्यालय के इमारत छोर से गेंद को लेकर तैयार सीआर्स के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर थी, विर था, थोड़ा सा बैकफुट पर गए, बल्ले पर आने दिया, भारी सिरा देकर गेंद को कटभर कर दिया, जब तक गली में फील्डर आ जाते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन को तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया, रन्स बढ़कर अब 46 पर पहुंच चुका है, 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लक्ष्य है बहुत बड़ा तो कहा जा सकता है कि सम्मानजनक लक्ष्य है, 85 का टारगेट है और ऐसे में दोनों बल्लेबाज अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 7 विकेट शेष बचे हुए, दूर वाले छोर से गेंद और विकेट ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, खूबसूरत सोकर मिड विकेट डीप में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, सिर्फ एक रन देने का अवसर और इस एक रन के 7 रन बढ़कर 47 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। हर एक मैच जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि चारों टीमों में से उन दोनों को ही प्रवेश मिलेगा जो निश्चित तौर पर फाइनल का मुकाबला करेंगे और इस शानदार यादगार क्रिकेट श्रृंखला को जीतने का श्रेय किसको जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। दूर वाले छोर से इस ओवर की एक और गेंद और विकेट पलट कर गेंद को खेल दिया, कुछ जी हां फील्डर लगभग मिड ऑफ क्षेत्र में दोहरे प्रयास में उन्होंने गेंद को समेट लिया, दोनों बल्लेबाज रन्स आसानी से बना रहे हैं, सिंगल्स बहुत मुश्किल से नहीं बिल्कुल आसानी से बन रहे हैं, लेकिन इस वक्त इक्वेशन आपको बता दें कितने गेंदों में कितने रनों की दरकार है। 24 बॉल्स टू गो, 37 रन्स टू गेट, 37 रनों की दरकार, 24 गेंदें शेष बची हैं, ओवर समाप्त हुआ, कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर 48 रन्स 3 विकेटों के नुकसान पर, 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि अभी 4 ओवर शेष बचे हुए और इन बचे हुए 4 ओवर्स में 37 रनों को बनाना होगा इस मैच को अगर जीतना है तो क्या यह मुकाबला रोमांच की ओर बढ़ेगा ये इस वक्त समय बताएगा। सह्याद्री का मैदान बिल्कुल चारों ओर धुंध पड़ी हुई है
आकाश डूबा हुआ है अंधेरों में और चांद आकाश में खिल उठा हुआ है। एक तरह से इस मैदान की ओर देखते हुए इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला का आनंद उठा रहा है कोस्टल फ्रेंड्स की शानदार प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन छठा जो कि चल रहा है। सफल 5 साल बने, उसके पश्चात ये छठा साल एक नया इतिहास बनाने के लिए जा रही है। इस छोर से नेशनल हाईवे एंड से नए गेंदबाज आक्रमण पर आ रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज इस वक्त सियाब तैयार हो रहे हैं गेंद को लेकर। दूर वाले छोर से सफान अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। ऑफ साइड में फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी हैं। पॉइंट और कवर के बीच में लगभग पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है और कवर दायरे के अंदर है। उसके अलावा मिड ऑफ को भी दायरे के अंदर रखा गया है। तो सफान 2 वाले छोर से उनकी ये गेंद कोटे का दूसरा पारी का 7 ओवर लेकर उनके गेंद को पुल करने का प्रयास किया। ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, चूक गए और वहीं पर शरीर से गेंद टकराई। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। ऑन साइड पर अगर देखा जाए स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर मात्र एक खिलाड़ी जो कि लगभग 5 लेग में थोड़ा सा अंदर। राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी। सफान कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद फिरकी लेकर गेंद निकली, उसको बैकफुट पर जाकर कट करने का असफल प्रयास किया। बहुत जल्दी गेंद टप्पा खाने के बाद निकल गई और चकाती हुई गई। मात देकर बल्लेबाज को विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। योजनाबद्ध तरीके से मुश्किल से मुझे लगता है कि लगभग 6-8 कदम निकालते हैं। उनके गेंद पलट कर गेंद को खेल दिया। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री लाइन के दिशा में गई और ये शानदार 4 रन। क्या बात है, जैक का ये खूबसूरत चौका आपने देखा। पलट कर गेंद को स्विच हिट कर दिया। पॉइंट बैकवर्ड बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 50 का आंकड़ा पार हुआ। 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कमाल का स्ट्रोक। सफान को अब सोचना होगा कि किस लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जैसे ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ मिली बल्लेबाज ने आक्रमण कर दिया। सियाब ने पलट कर गेंद को स्विच हिट कर दिया और इस चौके के साथ अब जो फासला बहुत ज्यादा लग रहा था वो धीरे धीरे कम होता हुआ। अब क्या बनेगा इस छोर से सफान। राउंड विकेट ऑन साइड की दिशा में खूबसूरत स्ट्रोक। फील्डर गेंद को रोकने के लिए मिड विकेट डीप की दिशा में दौड़कर आ गए। उन्होंने गेंद को समेट लिया, लेकिन बल्लेबाज के पास इतना समय था कि वो छोर को बदल लें और 1 रन और खाते में 53 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर। 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गेंदों और रनों के बीच में आंख विचोली का खेल। एक और गेंद ऑन साइड पर आड़े बल्ले से हॉरिजॉन्टल बल्ले से गेंद को घुमाकर स्क्वायर लेग में खेल दिया। फील्डर डीप में मौजूद थे, इससे पहले वो गेंद तक पहुंच पाते। दोनों बल्लेबाजों ने फिर से छोर बदलकर 1 रन को पूरा कर लिया। 54 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई और श्रृंखला का दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है। जो दर्शक अभी इस मैच को देखने के लिए YouTube पर आए हैं उन सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की यह शानदार प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन छठा। और इस मैच में दूसरा मुकाबला इस वक्त सिल्वर स्ट्राइकर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में हो रहा है। कोस्टल किंग्स को इस वक्त 85 रनों की दरकार है और वो लगभग 54 रन वो बना चुके हैं। 7 विकेट्स उनके पास शेष बचे हुए हैं। राउंड विकेट इच्छर से गेंद हवा के रास्ते गेंद को लॉफ्ट किया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गई। अंपायर ने कहा कि 6 रन। जबरदस्त छक्का। ये लगा शानदार छक्का जैक का। एक क्वेश्चन आपको बता दें, 24 बॉल्स टू गो एंड 25 मोर रन्स टू गेट। 24 गेंदों में 25 रनों की दरकार। 4 ओवर शेष बचे हुए हैं। करेक्शन 18 गेंदों में 25 रनों की दरकार। और 18 बॉल्स टू गो एंड 25 मोर रन्स टू गेट। 25 रनों की दरकार 18 गेंदों में और रोमांच काफी बढ़ता हो।
ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ 25 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ನೀಡ್ 18 ಬಾಲ್ 25. 18ಗೆ 25. 25 रनों की दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं. गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होगा? कप्तान इस वक्त किस गेंदबाज को आक्रमण पर लाएंगे? विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, ये सोचने वाली बात होगी. दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. 18 balls to go and 25 more runs to get. I repeat, 25 runs to get in 18 balls. 18 गेंदों में 25 रनों की दरकार. ऐसे में दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार. आफ्ताब की गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी. बल्ले को उठाया, जाने दिया, अंपायर की तरफ देखा, अंपायर ने कहा कि वाइड है. 1 रन और खाते में जोड़ लिए गए. अब 24 रनों की दरकार है और 18 गेंदें शेष बची हैं. आफ्ताब गेंद को लेकर तैयार. ज़ीशान के लिए गेंद, कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल, ऑन साइड की दिशा में गेंद को फ्लिक के अंदाज में ड्राइव कर दिया. 1 रन लेकर अपने पार्टनर सियाब को जिम्मेदारी सौंपी है और दोनों बल्लेबाज बहुत शानदार तरीके से पार्टनरशिप को बिल्ड कर रहे हैं. लेकिन इस वक्त रनों के और गेंदों के बीच में थोड़ा सा फासला दिखाई पड़ता हुआ. क्या होगा? एक छोर से गेंद को लेकर और देखिए धवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया. बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई है. 6 रनों के लिए जैक का जबरदस्त छक्का. क्या जबरदस्त छक्का जड़ा है ज़ीशान ने. इस छक्के के साथ रनों को रफ्तार मिली. 68 रन, 68 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. और इस वक्त बहुत जरूरी था, आवश्यकता थी, दरकार थी चौकों और छक्कों की. एक और गेंद ज़ीशान के लिए बहुत अच्छी गेंद, अच्छा परिवर्तन था और इस गेंद को लेंथ में ज्यादा करते हुए हालांकि बल्लेबाज चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया. दूर वाले छोर से फिर से गेंदबाज तैयार हो रहा है. ज़ीशान स्ट्राइक एंड पर और विकेट हवा में उछाल दिया. फील्डर वहां पर थोड़ा सा डीप में मौजूद है, जब तक वो गेंद तक पहुंच पाए. शॉट कवर की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 23 कदमों के साथ दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया और इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 69 पर 69 फॉर 3. आई रिपीट 69 फॉर 3. 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. इक्वेशन आपको बता दें, 14 balls to go and 16 more runs to get. 16 रनों की दरकार, 14 गेंदें शेष बची हैं. सियाब गेंद को इस छोर पर स्ट्राइक एंड पर, उनके लिए गेंद थोड़ा सा आगे बढ़े, गेंद के ऊपर आकर गेंद को धीरे से दबाकर पुश करने का प्रयास था. बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई. विकेट कीपर खुद गेंद के ऊपर आ गए. स्लिप कॉर्डन पर उन्होंने गेंद को उठा लिया, समेट लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया. अब कहना होगा कि कोस्टल किंग्स के जितने सारे ये दोनों बल्लेबाज खास तौर पर हर 1 रन को तेजी के साथ बनाने में लगे हुए हैं. 30 रनों की भागीदारी, क्या बात है. शानदार 30 रन पार्टनरशिप बन चुकी है. 30 रनों की भागीदारी दोनों के बीच में. 23 गेंदों में क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहा है. ये आपके लिए गेंद और गेंद को हवा में उछालने का प्रयास, वहां पर खुद गेंदबाज आ गए, डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया और इस शानदार कैच के साथ ही एक और झटका ये पार्टनरशिप टूट चुकी है. ज़ियाब का विकेट गिर चुका है.
थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 12 गेंदें शेष बची हैं, 15 रनों की दरकार है। क्या जबरदस्त कैच आफ्ताब ने लपका, डाइव लगाकर अपना सब कुछ झोंक कर हवा में और शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ कैच पर एकाग्रित होकर खूबसूरती के साथ कैच लपकते हुए जियाब को उन्होंने कॉटन बोल्ड करा दिया। वो आउट होकर पवेलियन लौट गए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप इस वक्त ब्रेक हुई, टूट गई और नए बल्लेबाज मुस्तफा इस वक्त आ चुके हैं। तो अब 12 गेंदों में 15 रनों की दरकार। इम्तियाज गेंद को लेकर आ रहे हैं, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर, बल्लेबाजी में जादू करते हैं, गेंदबाजी में कमाल करते हैं, जिम्मेदारी के साथ अब खुद गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। लंबा कद है, छरहरा बदन, कहना होगा कि अच्छे शानदार गेंदबाजी में गिने जाते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको गेंद करना होगा। स्ट्राइक एंड पर जीशान, स्ट्राइक एंड पर, और विकेट, अच्छी गेंद थी और इस गेंद को सम्मान देकर फ्रंट फुट पर फॉरवर्ड डिफेंस किया, बल्ले का मुंह खोलते हुए स्ट्रोक के साथ दौड़ पड़े। जानते हैं कि हर एक रन बहुत कीमती है। मिड ऑन में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन एक रन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और अब 14 रनों की दरकार। 11 गेंदें शेष बची हैं। 14 मोर रन्स टू गेट, 11 डिलीवरीज टू गो। फिर से इम्तियाज कमर पर हाथ रखते हुए इधर उधर देख रहे हैं कि क्या कोई कमी रह गई है, क्या क्षेत्ररक्षण में कोई कसर रह गई है, उसको देखने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। दोनों बल्लेबाज आपस में शब्दों का लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं, समेट रहे हैं, एक तरह से कहना होगा कि समझा रहे हैं। मुस्तफा स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। बहुत कड़ा मुकाबला होगा इम्तियाज और मुस्तफा के बीच में। और विकेट, अच्छी गेंद, फिर से सम्मान दिया इम्तियाज ने, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर नॉन स्ट्राइक हैंड की दिशा में थ्रो कर दिया है, लेकिन निशाना उनका चूक गया। बैकअप कर रहे खिलाड़ी काफी डीप में मौजूद थे, एक रन पूरा कर लिया है। अच्छी गेंद थी और कहना होगा कि बल्लेबाज अब बिल्कुल हर एक गेंद को बहुत बारीकी से देखकर जज करते हुए खेल रहे हैं, क्योंकि सामने इम्तियाज गेंदबाजी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और इसी को इस वक्त दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इम्तियाज की गेंद में कुछ ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए गेंद को थोड़ा सा जज करने में सिंगल्स को बटोर रहे हैं। और विकेट, हवा में उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, एक रन को चुरा लिया, दूसरे रन की दौड़ लगाई, दिशाहीन थ्रो और 2 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है। पहला रन आनंद फानन में पूरा कर लिया, दूसरे रन का रास्ता बनाया। मौका हो सकता था स्टंप्स पर अगर निशाना गिरता, लेकिन निशाना बिल्कुल दूर था और कहना होगा कि बल्लेबाजों को अवसर मिला कि वो 2 रनों को पूरा कर लें। 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 74 for 4। और विकेट, एक और गेंद, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का अंदाज था, फील्डर वहां पर आ गए, उन्होंने गेंद को कैच किया है। क्या कमाल का कैच, शानदार विकेट। साबित का ये कैच साबित करता है कि अभी दमखम बाकी है। क्या जबरदस्त कैच, 8 balls to go, 11 runs to get, 11 रनों की दरकार, 8 गेंदें शेष बची हैं। इम्तियाज की पिछली गेंद लॉफ्ट किया था बल्लेबाज ने, साबित द्वीप में आ गए, अंतिम क्षणों में झुककर पूरी तरह से, इससे पहले कि गेंद जमीन को जाकर छू लेती, उन्होंने गेंद को हथेलियों में कैच कर लिया, कैद कर लिया और शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन हो चुका है। 8 गेंदें बची हुई हैं और 11 रनों की दरकार है। और इम्तियाज फिर से छोर पर क्या योजना बनाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। इस गेंद में रनों को रोक कर रखा है, चौकों और छक्कों को उन्होंने रोका है। ये बात अलग है कि सिंगल और डबल्स गए हैं, लेकिन योजना बनाकर सटीक लाइन और लेंथ में उनकी गेंदबाजी चल रही है। बैट्समैन को ज्यादा विड्थ नहीं दे रहे हैं, रूम नहीं दे रहे हैं, और यही मैं समझता हूं कि उनको इस वक्त करने की दरकार है, क्योंकि अगर एक आक्रामक स्ट्रोक लग गया तो परिस्थिति बदल सकती है। मिसाइल स्ट्राइक एंड पर इम्तियाज की ये गेंद, इस गेंद पर क्या होगा, सारे दर्शकों की धड़कनें इस वक्त जुड़ी हुई हैं।
इस छोर पर योजना बनाकर इम्तियाज शुरू कर चुके हैं। और विकेट की गेंद, अच्छी गेंद बीट कर गए, छकाती हुई चकमा देकर बल्लेबाज को न गेंद को समझ पाए, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन एक ऐसी गेंद को ढूंढकर इम्तियाज ने कर दिया जो गुडलैंड स्पॉट से निकलकर सीधे विकेट कीपर के हथेलियों में जाकर समा गई। और विकेट, एक और गेंद थी, लगातार 2 गेंदें डॉट में तब्दील। क्या बात है, क्या कमाल की गेंदबाजी। ये ओवर बहुत ही शानदार किफायती रहा। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 9 ओवर के समाप्ति पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स 74 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 11 रनों की दरकार, 6 गेंदें शेष बची हैं, 6 बॉल्स टू गो, 11 रन्स टू गेट। क्या होगा, कौन जीतेगा, सिल्वर स्ट्राइकर्स या कोस्टल किंग्स? दोनों के बीच में एक बहुत कड़ा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। तो आइए, जो दर्शक यहां पर मौजूद हैं, और मैं समझता हूं कि साफ सुथरे हिंदी में आपको बताता हूं कि इस वक्त 8653 इनोवा कार जो कि पार्किंग स्लॉट में नहीं बल्कि यहां पर रास्ते में पार्क किया गया है, तो 8653 इनोवा कार जिनका भी है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, कृपया उस कार को ले जाकर पार्किंग स्लॉट में पार्क करें। एक और बार दोहरा दूं, 8653 इनोवा कार जिनका भी है, कृपया जाएं, अपने कार को वहां से निकालें और सीधे पार्किंग स्लॉट में वो पार्क करें। दिक्कत हो रही है आने जाने में, आपसे अनुरोध करते हैं। आइए इस ओवर में आते हैं, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन 6 में। कांटे का मुकाबला सिल्वर स्ट्राइकर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में। 85 रनों का पीछा कर रही है कोस्टल किंग्स, 6 गेंदों में 11 रनों को बनाना होगा। स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंड बैटर मुस्तफा तैयार है। अनस की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस गेंद को बल्ले को चलाने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन लेने का अवसर नहीं है और ऐसे में डॉट में गेंद तब्दील हो चुकी है। अनस की गेंद मुस्तफा के लिए, 5 गेंदें शेष बची है। बैकफुट के ऊपर गए और पुल कर दिया गेंद को, बैकफुट पर जाकर 1 रन मिल जाएगा। दूसरा रन चुनाना चाहते हैं, सेकंड की दिशा में थ्रो हुआ और रन आउट का मौका बना है या नहीं। दीक्षित जी ने सर पे हिलाया, उंगली को उठाया और कहा कि बल्लेबाज आउट हो गए। क्या बात है। और इसके पश्चात दीक्षित जी शायद इस वक्त तीसरे अंपायर की तरफ संकेत कर रहे हैं, थर्ड अंपायर थोड़ा सा एक्शन में आ जाए और ताकि लगे कि बिल्कुल कोई पक्षपात नहीं है। और यही वजह है कि आज का आधुनिक दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो निश्चित तौर पर हर उस दृश्य को कैप्चर करते हुए रिप्ले में आप देख सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। तो इस वक्त दीक्षित अंपायर ने सीधे तीसरे अंपायर के और संकेत किया और तीसरा अंपायर इस वक्त एक्शन में। कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन 6 जो कि इस वक्त चलता हुआ कांटे का मुकाबला सिल्वर स्ट्राइकर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में। और इस वक्त 85 रनों का पीछा कोस्टल किंग्स कर रही है। तो अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज आउट हो गए। क्या बात है,
आइए सभी से अनुरोध करता हूं थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ हम खेल को लेते हैं। और शुरुआत में इम्तियाज जी ने कहा कि एक यूनिटी बनाने का प्रयास हमारा है और निश्चित तौर पर हम यूनिटी के साथ खेलेंगे। अंपायर के जी हाँ जो कुछ भी डिसीजन आता है उसको हम स्वीकार करेंगे। तो बैट्समैन की तरफ से रिव्यू की मांग की गई थी और ऐसे में वो खारिज हो गई। निश्चित तौर पर कहना होगा कि रिव्यू बिल्कुल खाली गया, एक तरह से विफल गया और नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अंसार स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 10 रनों के दरकार, 4 गेंदें शेष बची हैं। कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने सारे दर्शक हैं कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने कमेंट्री बॉक्स ಎದುರಿತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ದಯವಂತಿದ್ದು 44 नंबर उनते साइड बले दयವಂತಿದ್ದು। तो 4 गेंदें शेष बची हैं, 10 रनों की दरकार। रोमांच अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ता हुआ। क्या होगा इस मैच में? क्या बल्लेबाज इस वक्त अपने टीम को एक शानदार स्ट्रोक दे पाएंगे या फिर गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते हैं? ऑफ स्टंप के ज्यादा भारतीय और इस वक्त स्टंप का मौका था, दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ गए थे। अंपायर ने कहा कि आउट है और उस छोर पर विकेटों के पीछे अंपायर ने कहा कि वाइड, एक अतिरिक्त रन भी मिला और साथ ही साथ बल्लेबाज आउट हो गए हैं। एक अतिरिक्त रन और एक विकेट का पतन। चार गेंदों में 9 रनों की दरकार। रोमांच अभी जीवित है और कौन जीतेगा ये तो अभी बताना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जिस तरह से खेल चल रहा है, रन भी बन रहे हैं, विकेट भी गिरते जा रहे हैं। और एक और नया बल्लेबाज 77 नंबर के जर्सी में इस वक्त स्ट्राइक एंड की दिशा में बढ़ता हुआ लतीफ स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्या वो आक्रामक स्ट्रोक खेल पाएंगे? अनस गेंद को लेकर तैयार, लतीफ स्ट्राइक एंड पर है। एक स्ट्रोक आक्रामक परिस्थिति को बदल सकता है। एक विकेट, एक डॉट गेंद और दबाव ला सकता है बल्लेबाजों पर। 4 गेंदों में 9 रनों की दरकार। पिछली गेंद वाइड थी लेकिन दोनों बल्लेबाज हार ना करते हुए क्रीज को छोड़ गए। विकेट कीपर ने चतुराई दिखाई, जल्दी उन्होंने गिल्लियों को उड़ा दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त कर लिया है। तो इस वक्त खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, अंपायर से बातचीत चल रही है। तो ये खेल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से अनस गेंद को लेकर तैयार और उस छोर से उनकी गेंद और विकेट, बहुत अच्छी गेंद उछालने के प्रयास में चकाती हुई गेंद उनको चकमा दे गए और बोल्ड हो गए। यू मिस मी, आई हिट यू। तीन गेंदें बची हुई है, 9 रनों की दरकार, 8 विकेट गिर चुके हैं। जबरदस्त रोमांच चलता हुआ अनस कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछली गेंद पर बल्लेबाज को चकमा दे गए और गेंद जाकर स्टंप से टकराई। एक और महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका है। तो इस वक्त साजिद इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अनस गेंद को लेकर तैयार, 3 गेंदें बची हैं, 9 रनों की दरकार है। और देखे गेंद ड्राइव किया, गेंद को बहुत जबरदस्त टप्पा खाकर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गई और अंपायर कर रहे और ये 4 रन, शानदार चौका है।
जैक का एक और कमाल का चौका लगाया बल्लेबाज ने, और कहना होगा कि अभी तो रोमांच बाकी है, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 5 रनों की दरकार है, 2 गेंदें शेष बची है, अभी भी रोमांच देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज डटकर मुकाबला कर रहे हैं। क्या जबरदस्त स्ट्रोक उन्होंने अंतिम क्षणों में लगाया। अनस इस वक्त दबाव में है, ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण। विकेट उछालने का प्रयास किया, गेंदबाज खुद फॉलो थ्रू से गेंद तक पहुंच गए। 1 रन लेने का मौका मिलेगा और इस 1 रन के साथ ही अब आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है। आखिरी गेंद में 4 रनों की दरकार है। 1 चौका अगर लग जाए तो बात बनेगी, लेकिन क्या गेंदबाज ऐसा अवसर देंगे। निजार स्ट्राइक एंड पर। निजार को अपने भटके हुए आत्मविश्वास को एकत्रित करना होगा, और पूर्व में क्रिकेट के इतिहास को अगर आप खंगालें तो कई ऐसे मैचेस जिसमें आखिरी गेंद पर चौका या छक्का लगाया गया है, लेकिन दूर वाले छोर पर अनस योजना बनाकर विश्वास के साथ, ओ देखिए डुलकी गेंद और बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त छक्का जड़ा है। क्या बात है, क्या जबरदस्त छक्का जड़ा निजार ने, और हिस्ट्री को रिपीट किया उन्होंने। 4 रनों की दरकार थी एक गेंद में, जबरदस्त छक्का जड़कर कोस्टल किंग्स को उन्होंने विजेता बनाया। इस मैच में जबरदस्त स्ट्रोक था, और इस छक्के के साथ ही कोस्टल किंग्स ने इस मैच को शानदार तरीके से जीत लिया। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, वेरी कंग्रेचुलेशंस। आइए अब डीजे को शानदार धुन बजाने का अवसर देते हैं। ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ತಲೆ ಕೆರಿತಾ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬರತ್ತೇನೆ ಮರಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಜೀವನ ಒಂದು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಲೂನು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕುಂತೋ ನೋಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂಪಿನ್ನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡು ಕಾಯ್ತಿನ್ ಶಿವಾನೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕಡೆ ಶವಾನೆ ಎಲ್ರು ಕಾಲು ಹಿಡಿದ ಕಾಲಾನೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕಂದ ಪುಣಿತ ಬರ್ರಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡ ನಿಕ್ಕೆ ವಾ ಓಪಲೆ ಗಂಡನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿಲ್ಲನ ಕೊಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಗ
Which captain should I call it? The next match, the two captains, please make your way to the comm box. The umpires are waiting over. Just gotta sprint in, please. Can't take a lot of time, actually. We also have got another 40 overs to be bowled today, which takes a lot out of us, actually. So please, the captains for the next match. கடலை கொந்தளிக்கும் சுனாமியே உண்டாச்சு காதலுக்கு எதுக்கா எனர்ஜி தலையை சுத்த வைக்கும் சுறாவளி பொண்ணாச்சு பட்டனில் பார்த்தாலே பல்ஸ் இறக்கும் பாடி கொட்டவா மீனெல்லாம் கூத்தாடுங்க ரவ கலராகும் ஜலேபி ரெடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே ஓனிகா
5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say, well, I'm on the way this time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. ಎಸ್, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇದರ ಕಪ್ತಾನ ಶೌಕತ್ ತಾರಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಕಪ್ತಾನ ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್ ರವರು. ಎಸ್, ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಈ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಬ್ಬರು ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಲಾಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು.
ಎಸ್ ಶರೀಫ್ ರವರು ಎಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಲಾಲ್. ಎಸ್ ಶರೀಫ್ ರವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋರರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಗೌಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. I'm back in a flash. I don't really take a lot of time actually off commentary. Right, post-dinner session will launch in just about a minute time actually. The umpires are ready. Who won the toss and who's going to bat, who's going to bowl? Can we get some details on that? Certain structures that we got to follow, right? I think as umpires they'll be following certain standards, protocols. I think international standards, I think, is just vital to get that flavor, international flavor into our cricket. The lights are on actually. It's a beautiful spectacle scene. I think you can watch it live. I think if you're in any part of the world, if you're in the GCC, if you're in the UK, if you're in the United States or Europe or anywhere, simply type in Mangalore Media on YouTube. You can find out live links. The live links will take you directly to the live action. No idea on that, really. Hunters. Please get the concrete information because a lot of people are actually watching it live as well. We don't want to create a baffling situation in the mind of the viewers on YouTube. Royal Hunters won the toss and they're batting for, I think their template's very clear. They want to go with a positive mindset, the way they did in the previous match as well, where they won the toss, they didn't look back and they wanted to bat and put the opposition in a bit of pressure. And that template worked out wonders for them and they want to keep going the same way. I think it's a good idea. And I really applaud the captain. I think one of the dimensions that we didn't talk about and also not been exposed much to the maximum is the idea of the mentality of the captains, actually speaking. So when these captains
when these captains, they got to think out of the box sometimes. You know, that's what one of the things that Ben Stokes didn't do in the Ashes, is that didn't think out of the box, actually just go positive, aggressive brand of cricket. Doesn't work that way. And that's why Australia are 3-0 up in the Ashes with 2 matches to play. England are in all sorts of trouble. But anyways, Hunters really are batting first, and I have the same template which I mentioned. Batted brilliant. In the last game they batted brilliantly, bowled brilliantly and fielded brilliantly, and that's why they won that game comfortably. And they got that massive total on the board. I think that's the secret. I think you win the toss, elect to bat first. I think your template should be to try and score 9-10 runs per over is what you're backtracking. If you can do that, all part to your elbow, if you can do that on a consistent basis. And I think you can do that until the point that you get to the finals, so surely you're going to win the trophy. But it's the execution that matters in cricket. A lot of us actually talk about he's a gun batter, she's a gun batter, he's a gun bowler, they're gun fielders. Don't worry much about that point, actually. So it's about the execution, especially batting, in my view, is directly or indirectly to do with execution. How well can you execute your game when it matters the most? And a classic example of that is, you know, take a look at Harry Brook in England. Harry Brook actually is a talent of a generation. An unbelievable, incredible talent England has found out, but in the Ashes, he's not chipped in. It's because the execution's the problem. And that's why you got to get your execution bang on target. Cricket's all about execution. Three pointers I'd mentioned about cricket, and we see, I think, all 3 pointers actually marrying well with these ideals. I'd say the first is soaking up pressure, the other is shifting the pressure back on, and the other one that I'll come back to later. First ball. That is a hit me ball, half tracker down the leg side. All he had to do was just use the pace. And beautifully done by the batter, left-handed batter actually. Not pace, actually on pace on delivery down the leg side. All he had to do was just use the pace. Did it beautifully. And the fine left fielder's up inside the ring, which means you get some amount of bat on that. You race away to the boundary. I think that's one way to play cricket. It's just use the pace and, you know, play to the conditions and play to the field set. This time it can't be out. Surely no ball. No ball signaled by the umpire. The bowler himself knows about it. That's why he took that catch one-handed. One-handed catch. And that's... I like that part of the game actually from players when they know that they realize that they're wrong. And they, you know, acknowledge that straight away without wrangling much with the umpires. Good side of cricket, actually. Sabit bowled beautifully in the last match. Goes big, goes massive. Does he find? No, yes, he does find the fielder, but it still crosses all the way for a massive 6. There's that signal coming from the umpire. Good strike, really. Just opening up that leg side field. It just went for a whack. Didn't really mind about whether it go any other direction. It's just concentrated on just clearing the fence, and it's done that beautifully. Good counter-attacking this is by the batter. Aggressive brand of cricket that they are actually adopting to play, and it's working for them so far. Again, beautiful. This time much, much better in terms of the length of the ball. Back of a length slightly, or around about that good length area. If you can pitch that ball consistently on that channel, it becomes slightly problematic for bowler batters to get that extra bit of time and then just free the arms a little bit. Anyone who doesn't know about cricketing dynamics.
Sharp ball, the pliers, what? No, it hasn't worked. Just for a moment I thought that it might go straight into the pouch of the fielder, but not to be the case. Just falling in the no man's land area. Just the one there. Sabith he bowls his heart out actually. He's got that good run up. He's got that great follow through. The landing part is good. Excellent really package of bowling by Sabith. Full toss this time. Surely should be a wicket. Surely should be a wicket. Oh, it's been taken. An unbelievable catch. That is absolutely titanic. Superb grab. That is the captain himself lunging forward. Had to run a long way. I tell you what, anyone in their 30s or 20s will find that difficult to take it. He had to run so far ahead and takes it beautifully. What a spectacular grab that is. One of the best catches taken in the tournament. The other one that we saw in the previous match that was taken at about mid-off area by, not sure about his name though, but I just don't want to misquote his name. But anyways, this is a good grab really. Kept his eyes on the ball. It was charging in actually. And also the fact that I think the lights might work against you as well. You're actually catching the ball under the lights actually is never going to be that easy. But anyway, Sabith has his wicket. And that might dent their run scoring a little bit. Let's wait and see. No, this is ordinary stuff by Sabith. Ordinary stuff, really is ordinary stuff. Sabith will look at his bowling in his replay and he'll be gutted about his bowling because so many half-trackers are so many shot deliveries on offer. And that means you're giving almost like a sort of free ride for batters to go against. That's it, end of over number 1. $15 for no loss. Sorry, 1. In that first over, lost the wicket as well. Lost the vital wicket of we'll come back to that. But anyways, 1 wicket down. Royal Hunters are on the front foot now. They've lost a wicket, but they don't care about that. They don't really care about that fact. They simply want to play expressive, expansive ways. Does work actually if you can be selective. And that's all about expansive way of playing cricket, or aggressive or ultra aggressive brand of cricket. Superb stuff really. You just got to admire the way these batters, especially the openers, have gone about the Hunters batting. Goes big. There is a fielder. There is protection. Will just be 1 this time around. Just keeping it to 1. So they got to pull things back now in their favor. How do they do that? They got to find that way to do that. They got to find that way to pull things back because they go at this rate. I think it would be absolutely complex for them to chase it down when they come out to chase. That's why they got to pull it back by picking up 1-2 wickets in a sort of short span of time now. Can't go too far ahead. Maybe 4 overs, 50 for no loss or 50 for 1 will be problematic, actually speaking. Oh, that's a good one. That's a good one. But called wide by the umpire. The batsman was a little bit circumspect because he thought that he might have got his foot in the air, but not to be the case. The wicketkeeper standing up to the stumps, which is a good move, I think, by any stretch. I think it's not going to be that easy to do that, but he's done that exceedingly well. Fiercely struck, straight to the fielder. Will just be 1 there. Excellent bit of fielding there. Keeps it to 1. The strike gets rotated, which is, I think, is a good thing about their batting, is that they're just not playing one way, they're playing it in a different way, which is much more about bringing that aggressive brand and also
sort of defensive brand as well. So two of that is a great combination to get a massive total. This is in the air. This might go all the way. One bounce over the ropes before no one's out there. It's a power play scenario, which means you get it over the top of the fielder. You get a boundary, you get a value for your runs. Down the leg side, you can't set a field for that delivery, I tell you what, because down the leg side, full toss, I think it's just almost like a hit me ball, actually. Another boundary, runs are coming at a rapid pace. This is much better, much better in terms of the length of the delivery, but still has managed to play that well enough to get that single. So it talks a lot about the way they go about their batting. I think it's not one way, like I said earlier. That's good, I think. And they're not premeditating the shots, which I think is so spectacular. And that's what cricket's all about. Don't premeditate. Play to the merit of the ball. I think it's about playing the ball and not the man. Straight to the fielder. Just the one. Good off drive for one. One more ball to go in the second over. 24 for one at the moment. Going along nice and good at the moment. And they'll take it, actually. Royal Hunters would take it anytime, any day. Because, you know what, they know that they got some runs on the board. Now it's all about accumulating and adding more pressure on the bowling side. They have been doing that. So good to watch, actually. They do it consistently. Nicely played. Good batting, that is. Good bit of batting, really is. Not taking that aggressive approach, just playing it away softly for a single. That's the end of the over as well. Over number 2 done and dusted. 25 for 2. 25 for 1, sorry, after 2. Good start, really, scoring at around about 12.5 at the moment. So if they can keep going in the same fashion, you know, 100 will be on the cards. If they do manage to score 100 or more, 100 plus, I think it'll be problematic. If you play 100, or maybe say 50 play 60 or 60 play 80, it'll be problematic, actually. You play 100 play, you're just backtracking that, coming over there and backtracking it. It's just going to be problematic that way, I feel. The reason why I'd say it's problematic is because it's not going to be easy during the night, actually, to come out and just go for a chase, actually, all guns blazing. It doesn't work that way. Shaukat, the new bowler, just going to bowl the third over. It's going to bowl to the right-handed batter on strike. Tries to go for the big shot straight to the fielder. Just be one there. Didn't time that well enough, the batter. Salam, the batter there. At the strikers, then we've got another batter. Ashraf. Two of them are handy batters, are handy power strikers of the ball. They can hit the long ball. They've got that ability to play big. And again, going back to my point about execution, they are executing it beautifully. Beautifully played away, calmly played away for one. Almost like a sort of front foot nudge for one. Sort of, you know, solid block, or, you know, if that's the right term, actually. $27 for 1, still the score. Down the leg side, it will be called a wide, so I wonder what the bowler's thinking, because the batter's really ready for that shot. And I think as a bowler, you got to bowl wide, you know, full and wide, I think would do. My point. Yeah, he's got that almost right. He's got that almost right, but not exactly where I intended. But still, he gets a dot ball out of that. When the batsman's ready, sitting back and trying to play that kind of a shot,
You can't bowl shorter. You bowl shorter, that'll be dispatched into the stands actually on the leg side, on the onside in fact. Gotta be careful. Nicely played away. That might go all the way. It does go all the way. I think it's been pulled back. Yes, it's been pulled back by the fielder at mid-wicket. He had to run all the way to sweep a cover to cut it off. Or maybe sort of square leg region to cut it off. Has done that well. So just got to persist bowling fuller length deliveries, sort of drive-ish length, and ask the batter to drive rather than whack. Length ball, and it's going to be taken, I think, yes. No pressure on him, and that's what does. I think you bowl back of a length ball, you're always going to get value for that, I think. You bowl half tracker, expecting to be hit away. The batsmen are going to be, whack you 9 out of 10 times. This is much better actually in terms of the way they've gone about their bowling. Super accurate. And got to pull that length back consistently. Have that sort of mixture. And another batter just got to go back to the hut. The score still remains at. New batter walks out. Batter's name, please. Siraj, the batter. Siraj's got tons of talent, tons of experience. 30 on the ball, 1 ball to go in the over. Siraj is an impact batter, is one of the backbone players of their team. He's got 2-dimensional ways of batting. Nicely played away, calmly played away for 1. Doesn't want to take a lot of time, actually bogged around at one end, just gets off the mark, gets to the other end, keeps the strike, end of the over, over number 3 completed. Right. Over number 3. 31 for 2 after 3. 31 for 2 after 3. Please note the score once again, because you know what, I can't do that in the midst of the overs as well. So just got to keep a track of that. You've got the big screen as well where the scores can be found out easily. Not sure whether it's visible to this distance. So the blueprint, they've got the blueprint very ready. Royal Hunters, I really like about the way they structure their innings. The structuring's been superb and accurate, and I think consistent. They shot making, the approach that they've got and the mindset they've gotten, I think it's all beautiful. And that's how you actually fashion whether you're batting second or batting first. It's that template that works for you. And you get that bit right, bang on target. You know what? You're on the front foot. And you know what? I think when you're thinking positively, your brain works better. And your brain does half tracker, plenty of time to rock back and play that shot. No mercy. I think you're not going to get mercy when you bowl that kind of a delivery. And you cannot expect batters to get out and treat you well for that delivery. I think should be no ball. Surely should be no ball. I think a good decision made. It's a full toss. Well over the waistline. It can be reviewed, I think. Not sure about it. It is being referred to the TV umpire. We're going to have a look at that one. We've got a player's review. I think it's a fair ball as well, so the umpire's just looking at the angles, different angles, and also trying to find out about the height of the delivery. It looked no ball, I think, in my view, but again, that belongs to the third umpire. And the third umpire is going to come up with that valid verdict, whether that's actually a no ball or not. To me, to the naked eye, it looks a no ball, but we can't predict anyways.
takes a bit of time as well. Sometimes when it's that tight, the benefit of the doubt goes to batters usually. It's called a no ball. Yes, the confirmation is on from the TV umpire, and it's called a no ball. So he's got to re-bowl that. I think we've got some good TV umpires here. Actually, we've got the right technology to try and track it down. Actually, I think that's where modern day cricket's so different and helps us to really look at the evidence and then make a decision. Decisions are not based on intuition. Usually umpires' decisions are based on intuitions, but then we look at the modern technology to support that view, that argument, or that view in a way. Fiercely struck, that's going to go all the way for 6. Yes, it is. The fielder's tried his best, but the trajectory looked like it was not going to be stopped, actually. So it's a 6 for the taking. Super strike, that is, by the batter, Siraj. Got it in the middle of the bat and just whacked it outside that leg side boundary. Again, superb batting. This is high-class batting, really, from Royal Hunters. I've got to say, play cricket. I think you watch cricket online or whatever. This is high-class for you. Superb batting. This is good, intelligent thinking. I think I got to give it to that captain and the think tank operating in the back end. And I think this team looks to be the hot favourites to win the trophy with the way they're going about their business at the moment. Their batting, their bowling, their fielding's been top class, I think. Plus the fact that their application, particularly I like about the way they go about their application in batting. You don't get to see that too often. Right, you know, you have that 6 and then get a single, then look for that bad ball, another boundary, another single. You got that mixture. Helps you to build that partnership and structuring the innings beautifully and puts the opposition under immense pressure. This time I think no LBW. If there was an LBW, surely he'd be Aitchison for sure. Because you know what, he was playing across the line. If you play across the line, you miss it. 99.9999999% more likely to get dismissed LBW. You play that sort of unless you've got the ball not bouncing over the new roll. Calmly played away, good batting, good thinking again. Just not thinking about that. Was a hit me ball though. Siraj will look at that and probably be gutted for this selection. But I think, you know what, in my view, you know, if you're in a good position, you're well placed. You don't want to play rash shots and play, you know, just play stupid, dumb cricket. And that's what. Again, a lot of drives like that gives an indication how hard the pitch is actually. You get that sort of tennis ball bounce, and also batters playing in the air for some time. I think it would be a good idea to have a shot cover in place, a shot mid-wicket. I think it would be a good idea. Over number 4 done and dusted, right? 46 for 2. They're going along nice and clean. Superb show this is by Hunters, guys, really. Winning the toss, electing to bat first. 46 for 2. The power play is relaxed, which means the field will be spread out. It's been already 1 over that this field is spread out. That's why they're taking that defensive approach of trying to play. I think, you know, my tip to the opposition captain, the fielding team captain, is that get a fielder at short extra. Get a fielder at short mid-wicket. Have that close-in fielder. And don't allow easy singles to be taken or rotated. When you've got easy singles being rotated, batting becomes easy. Because you know what? No pressure on the batters. They can just play shots at will. They get singles. If they're not really
toiled hard to get singles. I think that's a problem. You can see the easy single, chance of run out, clean pick up and a throw. And, you know, the batters have that sort of courage to do it because they know that they've got no closing fielders. I think it would be a good idea, a wiser option, to have more closing fielders. Why would you have a deep shot extra? Rather, you can have a shot extra and then potentially try and block that single. In my view, if I be the captain, I think in that way. In an aggressive way, not in a sort of defensive way. Okay, if, you know, one is fine, one run is fine. No, you can't give away easy singles. I'm not giving any tip to any player, actually, but that's how cricket's been played, to put pressure on the fielding side or batting side or whatever, right? So let's see more about that. Now, it's important to see how the batters go. You've got a closing fielder at short extra, but it still has got to go a little bit ahead. Nicely played away. Guarded away. You can see that the fielders are on the edge of the circle. That means you get some bat on that. You still get single. Again, the fielders are on the edge of the circle. Calmly, neatly played away for one. Gets off strike. The captain, I did talk about the captaining mindset. You know, you take that sort of defensive approach and then you know, slowly start to take that aggressive approach. That doesn't work, actually. Still, the fielders are on the edge. And Siraj is happy about that fact because he can nudge around and pick up singles and take his team's pressure off. And he will feel greatly relieved about that. Calmly played away for one. Easily. I think, you know, this is where the captain's got to come into play. You've got a bowler and maybe they're happy. You know, the wicketkeeper, the captain himself actually is thinking, okay, I'm fine by that one run taken. I'm okay with that. I'm not going to apply pressure because they're more worried about this, you know, boundaries of sixes. 50 up as well with that single from Siraj. 4.4 overs bowled out. Again, another easy single. Gets off strike with that single. One more ball to go in the fifth over. Now, I'll be thinking, when would Siraj take that aggressive step forward? He's got to pull the trigger at some stage. Not sure whether he would do that or whether he would, you know, just be happy around nudging for singles and ones and twos. The field, slight change in the field. You've got third man coming in and you've got extra cover back, deep extra cover. That means you've got plenty of space, you know, towards that third man. Oh, that's a good, not a good delivery, but I think Siraj got it wrong there. Full toss and offer. End of over number 5. I think we're at the halfway stage in the innings. And Mr. Ajay. Mr. Ajay Raj is going to walk you through till the end of the innings and is going to give you a sort of ball-by-ball analysis in the field set and also the bowling mindset, the captain mindset. I'm sure Mr. Ajay Raj will just give you more analysis on that. Over to you, sir. Thank you. I'll be back shortly. Commentary. Score 51 for 2.
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद हाशिम, जिन्होंने आपको शानदार तरीके से बिल्कुल फॉरेन एक्सेंट में आपको खूबसूरती के साथ विवरण सुनाया, कमेंट्री। और इस वक्त मुकाबला रॉयल हंटर्स और सिल्वर स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हंटर्स का। पहला मैच उन्होंने जीता, इस वक्त दूसरे मैच को जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। एक छोर पर बल्लेबाज सिराज, दूसरे छोर पर अशरफ मौजूद हैं और दोनों इस वक्त बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर कुल मिलाकर 5 हो गए और 5 ओवर के समाप्ति पर 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। औसत काफी अच्छा चलता हुआ और दोनों बल्लेबाज, अगर मैं कहूं, शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिराज और अशरफ के बीच में अच्छी भागीदारी चलती हुई। 21 रन, 21 रनों की भागीदारी दोनों के बीच में चल रही है और बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर वो ले जा रहे हैं। गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर दूर वाले छोर से गेंदबाज आ रहे हैं। समय आपको बता दें, धीरे धीरे समय अपना पहर बदलकर रात के 10:21 हो चुके हैं। आकाश अंधेरे में गुड़त है और फ्लड लाइट की दूधिया रोशनी में मैदान नहा रहा है। कुछ एलईडीज दूर दूर डगआउट के बाहर, जो कि कुछ टिमटिमाते हुए अलग रंगों के कैनपीज बनाए गए और डगआउट्स खिलाड़ियों के बिराजने के लिए। नया ताजावर इमारत छोर से गेंद को लेकर शौकत आक्रमण पर आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला मैच जो कि हंटर्स जीत चुका है। तो पिछला मैच सिल्वर स्ट्राइकर्स जिसमें वो परास्त हुए, हार गए और इसके लिए उनको कहना होगा कि ये मैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीतना। क्या कुछ होता है। बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर अशरफ उच्च छोर से गेंद को लेकर, गेंदबाज शौकत तैयार, लंबे बॉलिंग भाग से क्या योजना बनाते हैं। फील्डिंग की रूपरेखा, ऑफ साइड पर दायरे को घेरकर 2 खिलाड़ी तैनात है। राउंड विकेट गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को ड्राइव कर दिया और लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर आ चुके हैं। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 52 पर। 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सिराज स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सिराज की बात चल रही है, पिछले साल में जो यादगार पारी उन्होंने खेली थी वो भला कौन भूल सकता है। शतक लगाने वाला नाबाद आउट होकर 118 रन 36 गेंदों में मात्र बनाए, जिसमें 11 छक्के और 5 चौके लगाए उन्होंने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, और वो भी फाइनल्स में। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्षमता प्रदान, कितने सक्षम बल्लेबाज हैं लंबे कदकाठी वाले। स्ट्राइक पर तैयार, वो छोर से गेंद लॉन्च कर दिया, गेंद को बहुत जबरदस्त स्ट्रोक हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया। थोड़ा सा मिस टाइम, सिराज आउट हो गए। इसी के साथ बहुत ही बड़ा विकेट, सिराज आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं और अच्छा प्रयास उनका था। शायद थोड़ा और ज्यादा ताकत स्ट्रोक के पीछे लगता, थोड़ा फ्लैट हो जाता तो ग्राउंड को क्लियर कर सकते थे, लेकिन इसी के साथ वो आउट हो गए। तो जैक का शानदार कैच आपने देखा और इस कैच के साथ ही तीसरे विकेट का पतन। 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अंसार काटीपल्ला जो कि इस वक्त बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरे विवरण के पश्चात वो थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे आपको आपके सामने शानदार कमेंट्री सुनाने के लिए, विवरण सुनाने के लिए। साथ में साथ वो कविता भी लिखते हैं, तो कुछ अलग अंदाज में उनका विवरण होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। बहुत ही प्रख्यात है। इस वक्त गेंद पर आते हैं। इमारत छोर से गेंद को लेकर तैयार हुआ है। शौकत की गेंद, डिफेंस किया, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक था और फॉलो थ्रू में शौकत ने गेंद को उठा लिया। रन देने का अवसर बिल्कुल नहीं है। शाकिर स्ट्राइक एंड पर। शौकत की एक और गेंद,
और विकेट बैकफुट पर गए, बल्ले पर आने दिया, धीरे से कट भर कर दिया गेंद को। शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर अब 53 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अचानक सिराज के आउट होने के पश्चात अब रनों का जो औसत है वो काफी घटता हुआ, एक महत्वपूर्ण विकेट निश्चित तौर पर दबाव ले आता है, परिस्थिति को बदल सकता है। लेकिन अभी भी एक छोर पर अशरफ मौजूद हैं और वो एक और से कहा जा सकता है कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन गेंदबाजों के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में शौकत क्या योजना बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज तैयार हो रहा है। ये गेंद और इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास अशरफ का, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन लेने का अवसर नहीं है और एक गेंद अभी शेष बचा हुआ। गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। तो छठा सीजन चल रहा है, जैक क्रिकेट कार्निवल सीजन 6। कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर ने हर साल शानदार क्रिकेट श्रृंखला रचाई और उसमें कोस्टल के जितने सारे सदस्य हैं वो शामिल हो जाते हैं और एक बहुत बड़े स्तर का क्रिकेट वो रचाते हैं, जिसमें सफलता हाथ लगी और लगातार छठा साल उनका इस वक्त चलता हुआ। इस क्रिकेट श्रृंखला को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, जो रंग ले आ रही है। नेशनल हाईवे के बगल में स्थित ये मैदान सह्याद्री का महाविद्यालय, जिसके प्रांगण में इस मैच की रचना की गई है। राउंड विकेट ही गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास, ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर डी पे मौजूद है। हालांकि 3 खिलाड़ी गेंद को रोकने में लगे हुए हैं, एक ने गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में उठा लिया। जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, बल्लेबाज के पास समय था कि वो रनों को बटोरे और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर 6 पर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर स्कोर इज ऑन 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दीक्षित जी दौड़कर कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आए और मुझे लगा कि शायद वो कमेंट्री में सहयोग करने के लिए आए हैं, लेकिन बात कुछ और थी। फिर से अपने जगह पर जा रहे हैं और क्या बात है। स्कोर बता दें आपको फिर से एक बार, 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दाऊद विजन सब सारे क्षेत्रों में महारत हासिल की है और आपको पता नहीं वो कमेंटेटर भी हैं और आपके जानकारी के लिए बता दें वो मुझे गुरु मानते हैं कमेंट्री में। बहुत साल पहले वो कमेंट्री किया करते थे हिंदी में बहुत शानदार तरीके से, लेकिन जिम्मेदारी आज बढ़ गई है, इसीलिए कमेंट्री में संन्यास लिया है और अब अलग अलग क्षेत्रों में अपने हाथ आजमा रहे हैं। आज बहुत सफल इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग में अपना काम दिखा रहे हैं शानदार तरीके से और इस वक्त डीजे की भूमिका भी वो ही अदा कर रहे हैं। तो कहना होगा कि वो सवाल उठता है कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। आइए इस गेंद पर आते हैं, नया ताजा ओवर लेकर गेंदबाज रियाज आक्रमण पर। अशरफ के लिए उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और इस गेंद को धीरे से कट भर करने का प्रयास, विश्वास कम था, आधे अधूरे मन से कट करना चाहते थे। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। सरफराज फिर से स्ट्राइक एंड पर तैयार है, बल्ले को थामकर स्क्वायर ऑन होकर खड़े रहते हैं। कहने का मतलब है कि ऑन साइड पर आक्रमण करेंगे। दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर और अंपायर दीक्षित जी ने फिर पंचों के उड़ने का संकेत किया हमारे कर्नाटका के बिली बाउटन और बिली बाउटन निश्चित तौर पर एक अलग अंपायर हैं। दीक्षित भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। एक और गेंद और विकेट लेफ्ट कर दिया, गेंद को ड्राइव कर दिया। फील्डर गेंद को रोकने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, जब तक वो गेंद को उठाकर तो कर पाए। 1 रन चुरा लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे सरफराज, लेकिन साथीदार ने मना किया। पलटकर अपने क्रीज की दिशा में पहुंच गए और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 56 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 56 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो आइए जुगलबंदी के लिए इम्तियाजी मौजूद है, उनका हृदय से स्वागत है और धन्यवाद। क्या बात है।
तो इस वक्त प्रयास करेंगे कुछ अलग रंगों को बिखरने का। आपके सामने इम्तियाज जी मौजूद हैं और वो भी शानदार विवरण सुनाते हैं। इस वक्त गेंद को लेकर इस छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त दाहिने हाथ का बल्लेबाज और रनों का औसत घट चुका है सिराज के आउट होने के पश्चात। 2 विकेट गेंद लॉफ्ट कर दिया, अच्छा स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, जब तक वो डीप में गेंद को उठा करते हो कर पाए 1 रन मिल जाएगा। इम्तियाज जी, सिराज के आउट होने के पश्चात औसत काफी घट चुका है, रनों का औसत घट गया, चौके छक्के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सिंगल से काम चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन शाकिर जो काफ़ी तजुर्बेदार बल्लेबाज है अभी भी क्रीज पर मौजूद है। रॉयल लंटर का उम्मीद उस पर रहेगा। साथ ही बाएं हाथ के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अशरफ आलूर, जो पहले मैच में काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, वो भी क्रीज पर मौजूद। उन दोनों पे अब निर्भर है क्या 100 के पास तक पहुंचा सकते स्कोर को। इस बीच अगली गेंद रियाज की बहुत ही अच्छी गेंद। अजय जी बता दीजिए, क्योंकि मौसम ऐसा है कि नमी भी है और मॉइस्चर भी है, इस वजह से गेंदबाजी में मुश्किलात हो रही है। और कैसी होगी बल्लेबाजी ऐसी मौसम में, आप थोड़ा तफसील से बता दीजिए। जी हाँ, शाम के पश्चात आप जानते हैं कि थोड़ी सी ओस पड़ती है और मैदान में पूरा गीलापन, नमी दिखाई पड़ती है, पिच का मिजाज बदल जाता है। गेंदबाजों के लिए ये अलग बात है कि गेंद ग्रिप करना मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा अगर आप ग्रिप करते हैं तो बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। सटीक लाइन और लेंथ की दरकार है। इस छोर से गेंदबाज गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं और विकेट उनकी यह गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड हो सकती है। फिर अंपायर दीक्षित जी ने कहा कि वाइड है, दिशाहीन गेंद, 1 अतिरिक्त रन। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए गेंद दिशा से भटक रही है। जी बिल्कुल, ये जरूरी है कि गेंद पे जो नमीपन है वो निकाले गेंदबाज। और इस बीच रियाज की अगली गेंद खेल दिया है मिड ऑफ की दिशा पे, हवा पे थी गेंद शायद। और मैदान ऐसा है कि विजुअलिटी है जो बहुत कमी है, इस वजह से क्षेत्र रक्षक वहाँ पे बॉल को, गेंद को देख नहीं पाए शायद। 1 रन आसानी से मिला बल्लेबाजों को। आगे बढ़ते हुए रियाज फिर एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। ये जो शाकिर है काफ़ी तजुर्बेदार बल्लेबाज है। पिछले साल जो टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ था वहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहा था, वैसे ही बल्लेबाजी की जरूरत यहाँ पे आई रॉयल लंडन के लिए। इस बीच खेल दिया है गेंद हवा में, फिर से मिड ऑफ की दिशा पर और 2 रन। काफी तेज विकेटों के बीच में वहां पे जोरदार अपील। एक और रन का मौका और एक और रन लेने में भी कामयाब। ऐसे ही जो रनिंग बिटवीन दी जो विकेट है, विकेटों के बीच की जो दौड़ है, अगर इस तरह से चले तो रन जो है जो वो चाह रहे हैं, एक टारगेट जो सेट करना चाहे वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि चौका छक्का तो आ नहीं रहा। इस वजह से विकेटों के बीच का जो दौड़ है वो जरूरी है। क्या कहते हैं आप इस पर? बिल्कुल सही आपने कहा, चौके छक्के अगर नहीं लग रहे हैं तो सिंगल्स को 2 में कन्वर्ट करना होगा। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छा होना चाहिए और इसी प्रयास में दोनों बल्लेबाज लगे हुए हैं। 1 शॉट का संकेत अंपायर ने किया और कोचेस आपको सिखाते हैं कि किस तरह से दौड़ लगानी होती है और बल्ले को ड्रैग करते हुए क्रीज के अंदर दाखिल करने के पश्चात दूसरे रन के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। लेकिन यहां पर कुछ गफलत हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 1 शॉट का संकेत अंपायर ने किया है। ओवर समाप्त हो चुके हैं। 7 ओवरों के बाद 61 रन 61, 3 विकेट की नुकसान पर 3 ओवर बचे हैं। अजय राज जी बताइए क्या लक्ष्य यहाँ पे जो जिसपे जो रॉयल लंडन की कप्तान है ये सोच सकते हैं ये सही है, आपको दिख रहा कौन सा लक्ष्य होगा? मुझे लगता है लगभग 85 के आसपास रन बन सकते हैं। चौके छक्के तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन सिंगल से भी अगर काम चलाया जाए
तो सिंगल को 2 में कन्वर्ट करते हुए अच्छे खासे रन्स बनाकर 80-85 का टारगेट लक्ष्य, जी हाँ, टारगेट सेट किया जा सकता है। इस योजना के साथ इस वक्त दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं और रॉयल हंटर्स का विश्वास बढ़ चुका है। इम्तियाज जी, आपने देखा होगा पहले मैच में जब आप जीत जाते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है। पहले इस गेंद पर आते हैं, वो विकेट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, क्या बात है, बड़ी चतुराई के साथ गेंद को देखा, टप्पा खाने के बाद बाहर निकल रही थी, हाफ ट्रैकर थी, बल्ले का सिरा दिया, हल्के से फिसलने दिया बल्ले से, 1 रन चुराकर अपने पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपी है। तो हंटर्स पहला मैच जीत चुके हैं और जब आप पहला मैच जीते हैं तो मानसिक तौर पर आपका विश्वास बढ़ जाता है और यही इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये बात अलग है कि सिराज के आउट होने के पश्चात औसत थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जीतने की और एक तरह से जीत का स्वाद जब आप चख जाते हो फिर आपको आदत पड़ जाती है और इस वक्त दोनों बल्लेबाज आदत से मजबूर। जी बिल्कुल, दोनों बल्लेबाज यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि रन बढ़ाने के लिए चक्के चौके की जरूरत नहीं है, विकेटों के बीच में जो दौड़ से भी रन बढ़ा सकते बोल के एक दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो रॉयल हंटर के लिए एक अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि सेकेंड हाफ में बल्लेबाजी उतना आसान नहीं होगा क्योंकि मौसम ऐसा। और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, छू के बल्लेबाज सीधे विकेटों पे, इम्तियाज आजाद जो खतरनाक गेंदबाज जाने जाते हैं यहाँ पे अपनी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए एक और झटका, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अशरफ आलूर, क्लीन बाउल्ड होकर पेविलियन लौट रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन 6 में मेरे साथ इम्तियाजी मौजूद हैं। प्रयास कर रहे हैं कि कुछ शब्दों का लेन देन करते हुए, कॉन्वर्जेशन करते हुए, इंटरैक्शन करते हुए कुछ अलग रंग को बिखेरे और 8वें ओवर की शुरुआत के लिए 8वें ओवर की शुरुआत के लिए दूर वाले छोर से गेंदबाज आ रहे हैं। इम्तियाज एजाज आ रहे हैं दूर वाले छोर से, इमारत छोर से गेंद को लेकर वो योजनाबद्ध तरीके से तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर जुनेद तैयार है। थोड़ा सा ओपन स्टांस लग रहा है, दोनों पैरों के बीच में मुझे लगता है कि लगभग 1 फीट का फासला होगा और थोड़ा सा स्क्वायर ऑन है। ऑन साइड पर कदमों पर बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑफ साइड पर उनके लिए पॉइंट बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के सीध में रखा गया है। और विकेट अगेन फ्रंट फुट पर बहुत स्टाइलिश अंदाज में गेंद को खेला गया था और थोड़ा स्ट्रेच करते हुए फॉरवर्ड होकर गेंद को पुश बैक करने का प्रयास, फील्डर आ गए गेंद के ऊपर पॉइंट की दिशा में, लेकिन आनंद फानन में 1 रन को दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया, रन्स को बढ़ाकर पहुंचा दिया 63 पर 4 विकेटों के नुकसान पर, 63 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रात के 10:36 हो चुके हैं। देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला का आनंद सभी उठा रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं, फीडबैक अच्छा मिल रहा है। ओ विकेट, एक और गेंद बैकफुट पर गए, कट किया गेंद को, फील्डर इस वक्त गेंद को फील्ड करने में लगे हुए हैं। शॉर्ट थर्ड मैन में उन्होंने गेंद को उठा लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को, रन्स बढ़कर 64 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। औसत धीमा चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इम्तियाज जी ने बताया कि सिंगल्स और डबल्स में ही काम चलाया जा सकता है, ये बात है अलग है कि इस वक्त चौके छक्के कहीं ना कहीं लापता हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, उसकी तलाश में बल्लेबाज। $64 for the loss of 4 wickets. विकेट, बहुत अच्छी गेंद, गुड लाइन स्पॉट से गिरने के पश्चात थोड़ा सा घूमकर टप्पा खाकर थोड़ा सा उछल कर निकल गई। फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। दोनों बल्लेबाज इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं। औसत कम चल रहा है, मैंने प्रेडिक्शन बताया इम्तियाज जी के 85 के आसपास तो रन बनेंगे, लेकिन अगर गेंद डॉट में तब्दील हुई ज्यादातर तो बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, इम्तियाज आजाद काफी खतरनाक गेंदबाज यहाँ पे साबित करते हुए अपने आप को, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। ये ओवर में केवल 1 रन
2 रन पे 1 विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं और रनों पे एक तरफ से अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। जो लक्ष्य रॉयल लंडन के कप्तान चाहते थे अब बहुत दूर दूर साबित होता हुआ। इसके साथ 8वां ओवर समाप्त। 8 ओवर के समाप्त के बाद 64 रन 4 विकेट की नुकसान पर 2 ओवरें बचे हैं, यानी 12 गेंद बचे हैं। 64 रन है स्कोर बोर्ड पर। अब जो बचे हुए 12 गेंदों में जो बल्लेबाज है शाकिर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, स्ट्राइकर एंड पे है, जो काफी तजुर्बेदार बल्लेबाज है, उन पे है उम्मीद रॉयल लंडन के कप्तान। और जुनैद जो अभी अभी आए हैं, जो चिकमंगलूर की तरफ से है, मिस्टर चिकमंगलूर भी बने थे वो, और यहाँ पे बल्ले पे अपनी जादू दिखाने की जरूरत अपनी टीम के लिए। अजय राज, आप जो बता रहे थे 85 काफी दूर दिख रहा, क्या कहेंगे आप? पिछले 2 ओवर्स में काफी कम रन्स बने हैं और इसी वजह से अब औसत और ज्यादा घट गया है। तो मैं समझता हूं कि अब उम्मीद की जा सकती है कि लगभग 75 के आसपास, 70-75 के आसपास रन्स बन सकते हैं, क्योंकि मात्र 12 गेंदें शेष बची हैं। 2 more overs to go। और ऐसे में स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में आमतौर पर बल्लेबाजों को आक्रमण करना ही होता है। अभी 6 विकेट्स बचे हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज कुछ ज्यादा जोरदार आक्रामक स्ट्रोक्स नहीं लगा रहे। ओ विकेट गेंद इस वक्त अच्छी गेंद थी, लेकिन अंपायर क्या इस गेंद को देखते हैं कि थोड़ा सा पीछे हटते हुए खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया है और कुछ नहीं समझ पाए इस गेंद के बारे में। गेंद उनको मात देकर निकल गई, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। एक और गेंद नेशनल हाईवे से ड्राइव करने का प्रयास ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, फिर से जी हाँ, इस वक्त अंपायर ने कहा कि वाइड है। थोड़ा सा स्ट्रेच किया था बल्लेबाज ने गेंद तक पहुंचने के लिए। दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त के साथ रन संख्या बढ़कर अब पहुंच चुका है 65 पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। 65 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और विकेट ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास, फिर से बीट हो गए और इम्तियाजी गेंदबाज इस वक्त हावी हो रहे हैं बल्लेबाजों पर, दोनों पर अच्छा खासा अंकुश लग चुका है। जी बिल्कुल, दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाज पे, यहाँ पे रन नहीं आ रही है। रियाज जो काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, अपनी तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। हल्की सी बदलाव वहां पे क्षेत्र रक्षण पे, एक्स्ट्रा कवर की फील्डर को आगे बुला दिया गया है और रियाज फिर एक बार शाकिर के लिए। इस बीच खेल दिया है मिड आउट की दिशा पर, 1 रन तेजी से दौड़ के पूरा कर लिया। दूसरे रन का मौका नहीं वहां पे और कोशिश भी नहीं की बल्लेबाज। 1 रन, 67 रन, 66 ऑन द बोर्ड। 66, धन्यवाद अजय जी। 66 रन। रियाज फिर एक बार जुनैद के लिए और ये रन आउट हो सकता है और ये आउट, सीधे बॉलर के हाथ में खेल दिया था, कोई मौका नहीं था वहां पे। शाकिर दौड़ पड़े थे, नतीजा भुगतना पड़ा, रन आउट के रूप में पेविलियन लौटना पड़ा, क्योंकि दबाव जो है बल्लेबाज पर बढ़ता जा रहा है। रन पे अंकुश लगा हुआ है, इसी की नतीजा यहाँ पे दिख रहा है रन आउट के रूप में। ऐसा चला तो आप जो 75-76 बता रहे थे वो भी दूर दिख रहा है। जय जी क्या बताएंगे आप? बिल्कुल सही आपने कहा, जल्दबाजी दिखाई पड़ रही है और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है बल्लेबाजों पर कि रन्स नहीं बन रहे हैं, मुश्किल से बन रहे हैं, चौके छक्के तो लापता हो चुके हैं और हर उस रन को पूरा करने का प्रयास, जल्दबाजी में एक और विकेट का पतन हुआ और अब आने वाले बल्लेबाजों को एक सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा कि कुछ विस्फोटक स्ट्रोक से वो लगाए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। मुंडा कमराडी और दयविಟ್ಟು कमेंट्री बाक्स ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು। ಮುಡ್ಡ ಕಮರಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು। इस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार, नेशनल हाईवे से ओ विकेट ये गेंद इस वक्त लेक्सन के बाहर थी और दिशाहीन हो सकती है। अंपायर थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, अपने पंखों को ऊपर उठाने का दीक्षित जी इंतजार कर रहे हैं। बल्लेबाज दौड़कर पूरा कर रहे हैं रन, लेकिन फिर अंपायर ने दिया अपने विंग्स को ऊपर किया और लैटरल रेस करते हुए संकेत किया कि अतिरिक्त रन कुल मिलाकर 3 रनों को पूरा कर लिया गया। 2 रन दौड़ के रूप में, 1 वाइड के रूप में, यानी कि 3 रन अतिरिक्त के खाते में, रन बढ़कर 69 पर 5 विकेटों के नुकसान पर 69 for 5। इम्तियाज जी जब अच्छा खासा चल रहा है,
रनों पर अंकुश लगाए, अतिरिक्त रन वाइड और नो बॉल निश्चित तौर पर गफलत पैदा कर सकती है। जी बिल्कुल बल्लेबाज पे हल्की सी दबाव कम यहाँ पे, क्योंकि एक आसानी सा 3 रन, एक मुफ्त का 3 रन मिल गया। दबाव थोड़ी बहुत बॉलर के ऊपर, गेंदबाज के ऊपर, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी ऐसी गेंदबाजी की। लेकिन मुझे लगता है गेंद पे जो नमी है, जो गेंदबाजों को जो ग्रिप करने में जो मुश्किल हो रहा है, उसका नतीजा है ऐसी वाइड डिलीवरीज। और इस बीच अगली गेंद अजहर शाह पहली बार सामना करेंगे और इस बीच खेल दिया है, फील्डर के हाथ में, रन आउट हो सकता है वहां पे, लेकिन क्षेत्र रक्षक पर गेंद को हाथ में लेने में नाकामयाब। नतीजा दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन पूरा करने का मौका। इसके साथ 9वीं ओवर की समाप्त, 71 रन 5 विकेट की नुकसान पर 9वीं ओवर की समाप्त के बाद 6 गेंदें बची है। कम से कम 10 रन अगर ये बनाए तो एक काफी अच्छी टोटल माना जाएगा। नमी और मैदान के इस कंडीशन को देखते हुए क्या बताएंगे आप? जी हाँ, और शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि 2 ओवर जो बचे हैं उसमें 75 तक रन आ सकते हैं। अभी मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे क्योंकि 71 रन तो आ ही चुके हैं। आखिरी ओवर शेष बचा है, 6 गेंदों में अगर 6 भी रन बनते हैं तो लगभग 77 रन बन सकते हैं, यानी कि अब लक्ष्य 80 के आसपास का हो सकता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। फिर क्रिकेट की अनिश्चितताओं को हम पूरी तरह से आंक नहीं सकते, आंका नहीं जा सकता है, प्रेडिक्शन करना मुश्किल है क्योंकि ये खेल अनिश्चितताओं का है और अक्सर कहा जाता है कि इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज। और ऐसे में आखिरी ओवर में क्या होगा? जी बिल्कुल, आप जो 76-75 की बता रहे थे वही दिखा रहा है कि कितनी तजुर्बा है आपको इस खेल में, कितने सालों से आप ये खेल को देख रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। सफवान शाह गेंदबाज है। आखिरी गेंदबाजी का भार जो है सफवान के कंधों पे दिया गया है। देखते हैं सफवान कैसी गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पे 71 रन बन चुकी है, एक 6-10 रन अगर बना ले तो एक काफी अच्छी स्कोर माना जाएगा यह मैदान की ये जो कंडीशन को देखते हुए। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। और इस वक्त अजहर शाह और जुनैद क्रीज पर मौजूद, और इस बीच खेल दिया है हवा पे, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। टप्पा खाने के बाद क्षेत्र रक्षक जब तक गेंद को हाथ में ले वो रन आउट हो सकता है वहां पे, लेकिन चूके विकेट कीपर जीवदान मिला बल्लेबाजों को, 2 रन पूरा करने में कामयाब। रन बढ़ते हुए 73। आप जो प्रिडिक्ट करे थे वो स्कोर पहुंच चुके हैं उसके पास। जी बिल्कुल आप सही थे जब आप बोल रहे थे 76-75 लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा भी बन सकता है क्योंकि 5 गेंद बची है, बल्लेबाज अभी भी है बहुत। और इस बीच खेल दिया है, 6 रन हो सकता है, कैच भी हो सकता है और आउट। एक और झटका, ऐसे ही शॉट की जरूरत थी लेकिन सीमा रेखा पार करने में नाकामयाब रहे। नतीजा आउट होकर पेविलियन लौट रहे अजहर शाह। रॉयल हंटर की ओर से पिछले मैच में शफीक जो काफी अच्छी बल्लेबाजी करे थे, अब तक बल्लेबाजी को नहीं भेजा। वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। साद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। एक और कैच छूटा, एक और रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ा। रनों की संख्या बढ़ते हुए 75। अजय राज्य आप जो बता रहे थे वो स्कोर बन चुका है, 2 गेंदें बची है, क्या हो सकता है बताइए अब आगे। दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर है कि इस 2 गेंदों में वो जितना ज्यादा आक्रामक स्ट्रोक खेल पाए। इस छोर से गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद को जबरदस्त स्ट्रोक होगा या नहीं, फील्डर गेंद के नीचे आ गया है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इस कैच के साथ ही एक और झटका लगा और विकेटों की संख्या बढ़ गई। अब आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में इम्तियाज जी एक और विकेट गिरा है, आखिरी गेंद बचा है।
बल्लेबाजों की यहाँ पे। क्या बात है, 75 रन और इस वक्त आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है। आखिरी गेंद पर बल्लेबाज क्या कर पाएंगे? एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण है इम्तियाज जी। मैं समझता हूं कि एक रन से मैच को हारा जाता और जीता जा सकता है। ऐसे में अगर चौका छक्का लगे न लगे ये बात अलग है, कम से कम सिंगल को तो बटोरा जा सकता है। अभी जो बल्लेबाज आए हैं शरीफ वलाल, CFM के प्रेसिडेंट है, वो बल्लेबाज आए हैं, कप्तान भी है रॉयल हंटर्स के। और आखिरी गेंद क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए, देखते हैं। यहाँ पे सफान अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। आखिरी गेंद 75 रन, शरीफ वलाल सामना करेंगे। और इस बीच खेल दिया है, एक रन तेजी से दौड़कर पूरा कर लिया। वहां पे एक ही रन का मौका, वहां पे दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े हैं, रन आउट हो सकता है, लेकिन हल्की सी मिसफील्डिंग। वहां पे एक और रन चुराने की कोशिश में रन आउट, लेकिन 2 रन पूरा करने में कामयाब। इस 2 रन के साथ रन बना है 77, 8 विकेट की नुकसान पर। अजय राज जो बताए थे बिल्कुल वही स्कोर पे सिमट गए हैं। 78 इज द टारगेट। और सिल्वर स्ट्राइकर को 78 रन बनानी होगी इस मैच को जीतने होंगे। 10 ओवरों में 7.80 के औसत से ये रन बनानी होगी। मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। Right, all set. I want to continue the DJ. If you want to continue, I've got no issues on that. Maybe you can have a bit of an entertainment stuff. I don't mind about that. You want to go forward, go forward. I don't care. Alright, ladies and gentlemen, let me see everybody's hands up in the air and clap, 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 clap. Music stop only for commentary, okay? little warning for ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಹಂಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡ್ತು
Right, going for a chase. I think time for a chase. Two batters making their way to the crease. A fantastic atmosphere here at SAHYADRI cricket ground. Lights are everywhere. You can see the spectacle of the highway as well, where the vehicles are speeding here and there. Magnificent atmosphere, and you love to play cricket, I think, on a ground like this. I mean, you're a player, you would just do that. And I mean, I'd just be a player. I think I'd love to do that. I love to play cricket here. Right, backtracking the total now. The two batters are ready. They want to put their right. They want to put their wrong right in this game, actually, for two batters. Batters' name, please. Batters' names. The two umpires are doing a great job out there. Mr. Deekshit and Avinash, both of them are doing a great job out there. Never easy, I tell you what. You know what? You can watch game, you can play cricket, but the umpires actually have the tough job, actually. I've got to stand all the time. Someone's got to really be here just to report with us with the names and stuff like that, really. Gosh. Sabith and Riaz start the proceedings. Sharkey bowled brilliantly in the last game, and Sharkey wants to continue in a good tone that he pitched last time around. Nicely guarded away for one. Directed him in business, but no directed. Just the one on the ball. Get off the mark in their chase. One of our chief guests of our tournament is Mr. UT Iftikhar Ahmed. He's with us, actually. He's one of our chief guests of our tournament. And on behalf of this tournament, I welcome him on to the grand stage. Please take your respectful seats, sir. Coastal Kings captain and FN Brothers captain, please make your way to the comm box. We're going to do a toss here. That's the last match of the day. Just make sure to be here. FN Brothers captain. A traditional brand of cricket that they got to play. They start well. I think Cambia, because no LBW. Sometimes it's a good decision to have no LBWs, because you know what? It can sometimes be problematic because we can't use the technology to the maximum. Because you know what? You get no ball or wide or run out or caught behind or whatever. I think a lot of dynamics, a lot of dimensions of the game where you can bring in about the technology. But for LBW, we need to have that unique technology which we don't have. Mr. Zakaria Zokate is also with us. He's one of our chief guests of our tournament. On behalf of this tournament, I request you to take a respectful seat on stage.
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಝಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ UT ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. First wicket going down, trying to go big. I think he's just only managed to find that fielder. Excellent catching that is. ಹಲೋ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ತಂಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಜನಾಬ್ ಝಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟರವರೀಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಲೀಂ ಸರ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಝಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಯೂಟಿ ಇವರಿಗೆ ದಾವೂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Just the one there. ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಯೂಟಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. One over bowler, 3-4-1. ರಜೀಮ್ ಎಕ್ಸಲಾನ್ ಕಂಪನಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಜಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಶಬೀರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದರ ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೀಸನ್ 6. ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಝಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ, ಮುಜೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಆದ ಝಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ರದರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಲಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಾದಂತಹ ರಜೀಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಬೀರ್, ಜಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರು ಜಾಕ್ ಶಬೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಮರ್ಜೂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಸಲೀನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಮರ್ಜೂಕ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಲೀನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಮರ್ಜೂಕ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಎಸ್ ಮರ್ಜು ಉಗ್ರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the air, will it be caught? No, just about safe. Runs are coming in singles at the moment. I don't think that singles and ones will get the job done for you. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಅರಫಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಶಫೀಕ್ ಅರಫಾ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಶಫೀಕ್ ಅರಫಾ, ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಎಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ UAE ಇದರ ಮಾಲಕರು ಅಫ್ರೋಜ್ ತಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯರು, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಅಫ್ರೋಜ್ ಅವರು, ತಮಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Calmly played away for one. ಎಸ್ ಅಫ್ರೋಜ್, ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Two overs bowled out, 10-4-2. ವಿಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ದಾವೂದ್, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ದಾವೂದ್, ವಿಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ದಾವೂದ್, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಹಲೋ ಹಲೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, 6 ರನ್ನುಗಳು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ. ಚೆಂಡು ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ 6 ರನ್ನುಗಳ ಘೋಷಣೆ, 6 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ಕೂಡ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಕ್ಕೆ 6 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 19. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದ 42 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 52 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. 59 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಸಿರಾಜ್. ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿರಾಜ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಸಿರಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿರಾಜ್, ಎದುರಿಸಲು ಫೈಸಲ್. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫೈಸಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಸಿರಾಜ್. 2024ರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಜೇತವಾದಂತಹ ಸಿರಾಜ್ ಇದೀಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿರಾಜ್ ಟು ಫೈಸಲ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ, ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 20. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿರಾಜ್, ಎದುರಿಸಲು ಫೈಸಲ್. ಸಿರಾಜ್ ಟು ಫೈಸಲ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್ನವರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕನ್ವಿನಿಯರ್ ಆದಂತಹ ಫೈಸಲ್ನವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಟು ಫೈಸಲ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ರನ್ನುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, 1 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿರಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿರಾಜ್, ಎದುರಿಸಲು ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ.
ಸಿರಾಜ್ ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಸಿರಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ. ಸಿರಾಜ್ ಟು ಸಾಬಿತ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ 6 ರನ್ನುಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ 6 ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ ಇವರಿಂದ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಕೂಟದ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿರಾಜ್, ಎದುರಿಸಲು ಸಾಬಿತ್. ರಿವರ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿ, ಮಗದೊಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದು ನೋಡಿ, 6 ರನ್ನುಗಳು. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಮುಖೇನ 6 ರನ್ನುಗಳು. ನೋಡಿ, 2024ನೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ ಇದೀಗ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಬಿತ್ ಇವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಸಾಬಿತ್ ಇವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಸಿರಾಜ್ ಟು ಸಾಬಿತ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಫೈಜಲ್ ಇವರಿಂದ. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 36. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36. ಇನ್ನುಳಿದ 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 42 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಪರ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಓವರ್ಗೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಫೈಜಲ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. 5ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಕಿರ್. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಕಿರ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಶಾಕಿರ್ ಟು ಫೈಜಲ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈಜಲ್ ಇವರಿಂದ 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 2 ರನ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಕಿರ್ ಇವರು ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಫೈಜಲ್ ಇವರಿಗೆ. ಶಾಕಿರ್ ಟು ಫೈಜಲ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಫೈಜಲ್ ಇವರಿಂದ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫೈಜಲ್ ಇವರಿಂದ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಶಾಕೀರ್ ತಂಡಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ. ಶಾಕೀರ್ ಟು ಸಾಬಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಸಾಬಿತ್ ಇವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಶಾಕೀರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ, ಶಾಕೀರ್ ಟು ಸಾಬಿತ್ ಅಗೈನ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಕೀರ್ ಇವರ ಮುಖೇನ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶಾಕೀರ್ ಇವರ ಮುಖೇನ. ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ತನ್ನ ಕೂಟದ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಶಾಕೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ. ನೋಡಿ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್. ವಾವ್, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು KM ಶರೀಫ್ ರವರಿಂದ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್. ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು KM ಶರೀಫ್ ಅವರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಬಿತ್ ಕುಮ್ರಾ ಇವರ ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39ರಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39. ಸಾಬಿತ್ ಇವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಶಾಕೀರ್ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್. ಶಾಕೀರ್ ಇವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಶಾಕೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಕೀರ್ ಎದುರಿಸಲು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಶಾಕೀರ್ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ. 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ, 1 ರನ್ನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 40. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 40. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 38 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನೊಂದಿದಂತಹ ಈ ತಂಡಗಳು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾರು ವಿಜಯಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ 6ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಸಾದ್. ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಸಾದ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದ್. 6ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾದ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಸಾದ್ನವರು ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಪೈರ್ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 40.
6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾದ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಮಗದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 41. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾದ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವರಿಂದ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 42. ಸಾದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾದ್ ಎದುರಿಸಲು ಫೈಜಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದಂತಹ ಫೈಜಲ್ ಇನ್ನೂ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆಂದು. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಫೈಜಲ್. ಸಾದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾದ್ ಎದುರಿಸಲು ಫೈಜಲ್. ಸಾದ್ ರವರು, ಸಾದ್ ಟು ಫೈಜಲ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ನವರು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅನುಭವವಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು. ಸಾದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ. ಸಾದ್ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾದ್ ಇವರು. ಸಾದ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾದ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಸಾದ್ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ 4 ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48. ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. 24 ಬಾಲ್ 30 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ತಂಡಗಳು. ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಳೆಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಇದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. 2025 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನವರ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ 7ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು
ಅಶ್ರಫ್ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಬೌಲ್ನ ಎದುರಿಗೆ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್, ನ್ಯೂ ಬೌಲರ್ ಅಶ್ರಫ್. 7ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಅಶ್ರಫ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಶ್ರಫ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿರಾಜ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಸಿರಾಜ್ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, 1 ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ 7ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಶ್ರಫ್ ಎದುರಿಸಲು ಫೈಜಲ್. ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಫೈಜಲ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ. ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 6 ರನ್ನುಗಳು ನೋಡಿ. ಫೈಜಲ್ ನವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಫೈಜಲ್ ನವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 6 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 55. ಫೈಜಲ್ ನವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಜಿಸತೊಡಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನುಗಳ ಸುರಿಮಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಖಾಟಿಪಲ್ಲರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ಈ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ. ಆದರೂ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಎಸ್ ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಫೈಜಲ್. ಎಸ್, ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಔಟ್ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ, ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 56 ರನ್. ಇನ್ನು 22 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ 22 balls 22 runs required to win the batting team. ಅಶ್ರಫ್ 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಫೈಜಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಫೈಜಲ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ. ಮಗದೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 22 ಎಸೆತ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 22 balls 21 requires to win. ಅಶ್ರಫ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಫೈಜಲ್. ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಫೈಜಲ್ ನೋಡಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 4 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಫೈಜಲ್ ಇವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಜಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 61 ರನ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 61. (21 ball 17 runs required. Ashraf again. Ashraf to Faisal. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫೈಜಲ್ ಇವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಜಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಗದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 6-4-6 ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಫೈಜಲ್ ಪೂಮಾರ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಓನರ್ನಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, sir. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್, ತಮಗಿದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಏಳನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 67 ರನ್. ಅಗೈನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಫೈಜಲ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 68. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ, ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಶ್ರಫ್, ಎದುರಿಸಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಅಶ್ರಫ್ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರಿಸ್ ಇವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ನೋಡಿ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು 5,000 ಇದೆ, 10,000 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀವು ಬಾರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ 10,000 ನಗದು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 10 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 ಬಾಲ್ 10 runs required to win. Sorry 9 run, 9 ರನ್. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರೇ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀವು ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್. ಎಂಟನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಸಲಾಂ. ಸಲಾಂ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 70. ಸಲಾಂ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಫೈಜಲ್. ಸಲಾಂ ಟು ಫೈಜಲ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಚಲಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈಜಲ್ ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೈಜಲ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ದಡದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫೈಜಲ್ ಇವರದು. ಇನ್ನು 16 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಲಾಂ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶೌಕತ್.
ಫೈಸಲ್ ಇವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶೌಕತ್. ಸಲಾಂ ಟು ಶೌಕತ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲಾಂ ಇವರು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಾಲ್ 8 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಲಾಂ ಟು ಶೌಕತ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಒಂದು ರನ್ನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 71. ಸಲಾಂ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ನವರೇ. ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದಿದೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಸಲಾಂ ಟು ಶೌಕತ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 73. 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ, 8ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 77. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಬಾಲ್ 5 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೌಲರ್ಗಳೆಂದು. ಯಾರಿಗೆ ವಿಜಯ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ FN ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. FN ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 9ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಸಾದ್ ಟು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶೌಕತ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಪ್ತಾನರಿಂದ. ರನ್ಔಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ ಥ್ರೋಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ. 2 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 79ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 75. ಹನ್ನೊಂದು ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11 ಬಾಲ್ 3 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಾದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಾದ್. ಎದುರಿಸಲು ಶೌಕತ್, ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶೌಕತ್. ಸಾದ್ ಟು ಶೌಕತ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 76. ಸಾದ್ ಟು ಶೌಕತ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ KM ಶರೀಫ್ನವರಿಂದ 1 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ. ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಾದ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾದ್ ಟು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್, ಆದರೆ 10,000 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ವಿಜಯಿಯಾಗಿದೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. FN ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. FN ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. FN ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾದಂತಹ FN ತಂಡ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು 5 ಮಂತ್ ಕಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ Yeah, it's your turn. Don't mind, no? चलो 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 जल्दी फाइन करो टॉस here win बल्ले बेगा कट quickly ball by the ball here toss win here toss win FN brothers bat hai toss win FN brothers oh FN na FM ma FN na super play FN ತಿನ್ನೋದು ಚೋಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಿಂದಾರಾ ಪರ್ದೆ
Hello, check. Hello, back testing 1 2 3 check. Hello. Munna Kamaradi. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಂಗೆ ಬಂತು సార్ ನೀವು హలో సార్ நீங்கள் இப்போ கல்ச்சரல்லே ஸோ நல்ல பேட்டிங் நல்ல இருந்தது நீங்களது ஸோ நீங்கள் முன்னால் கழிச்சு வினாரா
ಎಸ್ ನಾನು ಮುನ್ನೋಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಂದ ನಂಡವರು ಬೆಳ್ಳಿಯವರು ನಂಡವರು ಪಿರ್ಸತ್ತು ಇದಾಯ್ತಿಂತು ಗೇಮ್ ಆಯ್ತಿಂತು അങ്ങനെ ನಾನು ಎಪ್ಪೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲ್ಚೊಂಟಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲು ഞങ്ങളെല്ലാം ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು 1979 ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಂದೆ ನಂಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ಲಿ ಇಕ್ಕರ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಿಗೊಂದುಂಡ ഇങ്ങനെ ಗಿಡಿ ಜನ അവിടെ ഇത് നാലാൾ നിന്നിട്ട് നിക്ക് പാട്ടിട്ട് ಅದು ಭಾರಿ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಗಿಡ್ಗ ಭಾರಿ നല്ല ಗೇಮ್ ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ചെന്നിട്ട് ನಾನು ഹയസ്റ്റ് ചെന്നിട്ട് ഒരു 61 അടിച്ചിരുന്നത് അതും ചെറിയ ഇതിൽ അത്ര 61 ಔಟ್ ಆಫ್ ಎತ್ತರ ಬಾಲ್ಗೆ ಅದು 15-16 ಬಾಲ್ಗೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಂದ 6 ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ അതിൽ ഇപ്പം ആർക്ക് 5000 രൂപ കൊടുത്ത പോലമേ അപ്പം 5000 രൂപ കൊടുത്ത പോലമേ 500 രൂപ കിട്ടിയത് നക്ക് ഇണ്ട് 500 ആർക്ക് 5000 കൊടുത്ത നക്കാണ്ട് 500 കിട്ടുന്നു ಎಸ್ ಸರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ತು ಬರಗೌಡ ತೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದಾಕೋರು ಏ ಅಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಕಾಣುಂಬಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಕಾಣುಂಬಲ್ಲ ಹಾಕೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಕಾಣುಂಬಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡಮ್ಮ ಇದು ಉಡ ಲೈವ್ ಆರು ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಉಳ್ಳು ಎಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ ಜಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ ಮುಜೈನ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೈದಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಜಾಜ್ರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಸೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಕರಿಯಾ ಸಾಹೇಬರೇ. ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿങ്ങളുടെ ಕೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಇಪ್ಪ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಿಗಮ ಇದೇ ಪ್ಲೇಯರಾ ಅಲೋಷಸ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚೋಯಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ನಂಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಬೌವ್ 40+ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಮ್ಮ എങ്ങനെ എബോ 40 അല്ലേ സീനിയർ സിറ്റിസൺ അല്ലല്ലോ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടത് എന്തെങ്കിലും ടീം ബിലോ 40 50 and above 40 ഓക്കെ ബിലോ 50 and above 40 ಸೊ ನಂಗೊಂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಹೆಂಗನೆ ಸೊ whom I have to contact ಬೇಡ we'll do one thing above 40 we won't keep limitations for above Zakareka will be a captain so our team will be above 40 coastal also both will be above 40 okay both teams so our no problem above 40 no limitations for IS yeah sure okay. And our president will coordinate with you okay thank you and that will be known as that will be coastal organized by coastal thing and then trophy will be known as Muzain trophy and the prize will be 55,000 rupees by him okay inshallah okay thank you so we are looking for that sir when it is our president will coordinate with you
Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. वेलकम बैक कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल 2025 सीजन 6 में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त आज की रात का ये आखिरी मैच एफएन ब्रदर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में शुरू होने जा रहा है। टॉस जीतकर एफएन ब्रदर्स के कप्तान ने टॉस जीता है और इस वक्त उनके सारे फील्डर्स मैदान पर उतर चुके हैं। अंपायर मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। सभी से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा ग्राउंड को क्लियर करें और जल्दी खेल को शुरू करें। समय इस वक्त रात के 12:10 और फ्लडलाइट की शानदार दूधिया रोशनी इस वक्त झिलमिलाती हुई इस मैदान में और उम्मीद करते हैं कि आखिरी मुकाबला आज का एफएन ब्रदर्स और कोस्टल किंग्स के बीच में कांटे का मुकाबला होगा। तो इस वक्त दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतर रहे हैं। एफएन ब्रदर्स के कप्तान ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, उनके सारे फील्डर्स मैदान पर उतर चुके हैं और शुरुआत के दोनों बल्लेबाज अग्रिम स्थान पर जो बल्लेबाजी करते हैं वो मैदान पर उतर रहे हैं। बहुत शानदार साफ सुथरा प्रसारण मैंगलोर मीडिया के जरिए कमाल और उनकी टीम कर रही है। क्रिक हीरोज जिसमें लाइव स्कोर अपडेट किया जा रहा है। अंपायर्स की जिम्मेदारी जी अफसर मैं आपको बता चुका हूं, अविनाश और प्रकाश जी इस वक्त ऑन फील्ड जिम्मेदारी को निभाते हुए। दीक्षित जी हालांकि पिछले मैच में थे, इस वक्त वो निकल चुके हैं।
दोनों अंपायर इस वक्त परिस्थिति को संभालकर मैदान पर उतर चुके हैं। बल्लेबाज तैयार, आइए खेल की ओर बढ़ते हैं। रॉफ दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। लंबे कद काठी वाले हैं रॉफ, और अपने बॉलिंग मार्क को नापने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर मोइन है और नॉन स्ट्राइक एंड पर मोइन और शमीर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जिम्मेदारी को उठाने के लिए आ चुके हैं। और मोइन स्ट्राइक एंड पर हैं, शमीर नॉन स्ट्राइक एंड पर। आइए इस मैच की पहली गेंद, तो अंपायर ने खेल शुरू करने का संकेत दिया है। रॉफ दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड पर दायरे के अंदर इस वक्त नजदीकी खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी हैं। और विकेट ऑफ स्टंप के बाद ही टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ निकल गई। कुछ उछाल भी था, उसको थोड़ा बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज के पास था, लेकिन वो मिस कर गए। रन लेने का अवसर नहीं है। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, थर्ड मैन शॉट पर है, पॉइंट थोड़ा सा बैकवर्ड। कवर में एक खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑफ में दायरे के अंदर एक खिलाड़ी तैनात रखा गया है। एक और गेंद, पलटकर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए मोइन, और अपने आप को कोस रहे हैं कि किस तरह से स्विच हिट करने का उनका जो प्रयास था उसमें वो सफल हो गए। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात बिल्कुल अंपायर के पास थोड़ी दूरी पर, और मिड विकेट डीप में है, मिड ऑन दायरे के अंदर रखा गया है, और एक खिलाड़ी खास तौर पर शॉर्ट फाइन लेग पर रखा गया दायरे के अंदर। और विकेट, बहुत जबरदस्त हो, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई जी हाँ, काउ कॉर्नर के या वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का। ये लगा जैक का खूबसूरत छक्का, खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक था। रिप्ले में देख सकते हैं कि किस तरह से ये गेंद ओवर विकेट थी, और बिल्कुल आसानी के साथ इस गेंद को उछाल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर 6 रनों के लिए, और छक्के के साथ ही रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोइन ने 6 रनों से अपना खाता खोल लिया। फील्डिंग में अब हल्का सा परिवर्तन किया जा रहा है। मिड ऑन जो वाइड में था उसको थोड़ा सा स्क्वायर रख दिया गया डीप में, और काउ कॉर्नर क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात। और विकेट ये गेंद सम्मान दिया मोइन ने, गेंद को स्टंप्स के सीट पर आती हुई अच्छी लंबाई के साथ थोड़ा सा डिप हुई। फुल टॉस लोअर थी, डिप होने के पश्चात उसको बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोलते हुए फॉरवर्ड डिफेंस किया, और रन लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जबकि रॉफ फिर से तैयार हो रहे। कुछ अलग रंगों के जूते पहन रखे हैं रॉफ ने। और विकेट दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, ज्यादा जोर देने का प्रयास किया था, और इस वजह से गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गई, और अंपायर को मजबूर होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 7 पर, बगैर किसी क्षति के आघात के। तो स्ट्रोक ने कहीं ना कहीं मोइन को विश्वास दिलाया, और गेंदबाज थोड़े से दबाव में। और विकेट बैकफुट पर गए, पंच किया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद जी हाँ बाउंड्री लाइन के अंदर रोका गया है। आमतौर पर अगर देखा जाए दोपहर या शाम के अंदर जो मैचेस खेले जाते हैं, आउटफील्ड में गेंद काफी तेजी के साथ दौड़ती है, लेकिन इस वक्त ओस पड़ने की वजह से आउटफील्ड में जो नमी है, गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ रही है। संभावित चौका था जिसमें बल्लेबाज को सिर्फ एक मात्र रन लेने का अवसर मिला, और इस एक रन के साथ रन बढ़कर 8 पर पहुंच चुका है। शमीर काफी देर के पश्चात स्ट्राइक एंड पर आ चुका है। अपने पार्टनर को नॉन स्ट्राइक एंड से देख रहे थे कि किस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है। रॉफ की गेंद, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, थोड़ा सा घुमाकर गेंद को खेल दिया, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, और अंपायर ने इस दौरान अपने हाथ को बाहर निकालकर संकेत किया कि नो बॉल है। बीमार थी, और उस गेंद को लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में घुमाकर खेल दिया। रन तो बटोर लिए ही, लेकिन साथ ही साथ 2 रन के साथ एक फ्री हिट का अवसर भी मिलेगा, यानी कि 10 रन कुल मिलाकर 10 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स।
10 रन बगैर किसी नुकसान के। फ्री हिट का अवसर इस वक्त बल्लेबाज के पास है। मोइन क्या इस फ्री हिट का अवसर जो मिल रहा है उसका फायदा उठा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। रौफ न मालूम क्यों आज इस मैच में खासतौर पर थोड़े से दबाव में दिखाई पड़ रहे हैं। आमतौर पर बहुत शानदार तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। इस छोर से उनकी गेंद, फ्री हिट का अवसर, उछाल दिया गेंद को, बहुत जबरदस्त, गेंद बाउंड्री लाइन के दिशा में जा रही है और गेंद गई 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का। जैक का बहुत ही कमाल का छक्का लगाया बल्लेबाज ने। मोइन के बल्ले से निकलता हुआ फ्री हिट का भरपूर फायदा उठा लिया और इस छक्के के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्ति पर 16 रन्स बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। यानी कि रौफ का ये ओवर बहुत ही महंगा और खर्चीला साबित हो गया है। अब कप्तान सोच में पड़ गए हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला FN ब्रदर्स के कप्तान का था, उसमें वो इस वक्त थोड़े से दबाव में है क्योंकि पहले ही ओवर्स में रन्स बिल्कुल बह चुके हैं। 16 रन से इस ओवर में बना लिए गए। तो ऐसे में अब उनके पास क्या विकल्प बचा हुआ है, ऑप्शन क्या है, किस गेंदबाज को वो इस वक्त तलब करेंगे। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, फिर से फील्डर्स अपना पोजीशन लेने के लिए जा रहे हैं और मोइन इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं जबरदस्त छक्का लगाने के पश्चात, और स्ट्राइक एंड पर शमीर आ चुके हैं। और बाउंड्री लाइन के बाहर जितने सारे दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कृपया वो बैठ जाएं, थोड़ा सा बैठ जाएं, क्योंकि लाइन अंपायर जितने सारे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, लाइन अंपायर्स कृपया बैठ जाइएगा, प्लीज सिट डाउन, क्योंकि बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि वो फील्डर है या फिर जी हाँ लाइन अंपायर्स। थैंक यू सो मच, बैठ गए आप। आइए इस गेंद पर आते हैं। दूसरा ताजा ओवर लेकर दूर वाली छोर से नेशनल हाई हैंड से गेंदबाज तैयार हो रहा है। नौफल आक्रमण पर आ रहे हैं, तलब किए गए इस छोर से और फील्डिंग में वो परिवर्तन करने के पश्चात तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड पर थर्ड मैन पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, मिड ऑफ थोड़ा सा डीप में, ऑन साइड पर अगर देखा जाए तो दायरे के अंदर लगभग फाइन लेग पर एक खिलाड़ी है और मिड ऑन को थोड़ा सा वाइड रखा गया। जी नहीं, मिड विकेट और मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद। इस छोर से गेंद को लेकर नौफल आक्रमण पर तैयार हो रहा है। अंपायर इस वक्त गिल्लियों को दुरुस्त करने के पश्चात अपनी जगह पर पहुंच गए। शमीर स्ट्राइक पर। आइए इस ओवर में क्या होता है। नौफल योजनाबद्ध तरीके से तैयार। नेशनल हाईवे से गेंद और लेग स्टंप के बाहर से अंपायर ने कहा कि वाइड दिशाहीन गेंद। तो आज इस मैच में FN ब्रदर्स के गेंदबाजों को न जाने क्या हुआ है कि कुछ अतिरिक्त रन्स जो कि शुरुआत में ही जा रहे हैं, अतिरिक्त गेंदें फेंकी जा रही हैं। एक अतिरिक्त रन के साथ फिर से नौफल तैयार। हाफ ट्रैकर थी, पुल कर दिया गेंद को, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का, ये लगा जैक का खूबसूरत छक्का। तो इस छक्के के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 23 पर 23 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। क्या बात है, कोस्टल किंग्स राजाओं की तरह बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त। और ये हाफ ट्रैकर गेंद एक लेंथ से टप्पा खाने के बाद ऊपर उठी, उस उछाल को कवर किया, पुल किया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ಹಲೋ ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು.
तो जिन सारे लोगों ने भोजन नहीं किया है कृपया जाकर भोजन करें, वरना फुट काउंटर जो कि क्लोज होने वाला है। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर के पास। एक और बार दोहरा दूं, फुट काउंटर क्लोज होने वाला है, तो जिन्होंने भोजन नहीं किया है, खाना नहीं खाया, कृपया जाकर ग्रहण करें, क्योंकि अब कुछ ही देर में फुट काउंटर क्लोज होने वाला है। इस छोर पर नौफल फिर से तैयार हुए और विकेट उनकी गेंद पलट कर गेंद को खेलना चाहते थे घुटनों के बल झुककर, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। और विकेट कोस्टल इस छोर से जी नौफल की गेंद डिफेंस किया, रन लेने का अवसर नहीं। तो ये सवेर लकी स्टार के लिए एक बहुत शानदार अवसर। जाहिर जी की तरफ से उनको नगद पुरस्कार 1000 दिए जाएंगे अगर एक छक्का वो लगाते हैं तो। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, दोनों फील्डरों को इस वक्त पीछा करने पर मजबूर कर रही है। आउटफील्ड धीमा पड़ चुका है, निश्चित तौर पर यह चौका हो सकता था, लेकिन बाउंड्री लाइन के अंदर रोका गया। जब तक फील्डर गेंद को रोक पाते, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 25 बगैर किसी नुकसान के, 25 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। आप देख रहे हैं कोस्टल फ्रेंड्स मैंगलोर की प्रस्तुति जैक क्रिकेट कार्निवल्स 2025 सीजन 6। तो नया ताजा ओवर लेकर दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार। मोहम्मद हाशिम जो कि इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में पीछे इधर उधर टहल रहे हैं शेर की तरह, इंतजार में कि कब उनकी बारी आ जाएगी। बहुत शानदार तरीके से विवरण सुना रहे हैं और 3 ओवर्स के पश्चात वो आपको शानदार तरीके से विवरण सुनाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आइए इस ओवर में आते हैं उस इमारत छोर से, सह्याद्री के महाविद्यालय के इमारत छोर से। तीसरे ओवर की पहली गेंद और विकेट हाई आर्म एक्शन के साथ गेंद को घुमाकर खेल दिया। अच्छा स्ट्रोक, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं मिड विकेट डीप में। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया, रन्स को बढ़ाकर पहुंचा दिया 26 पर, 26 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 26 रन्स बगैर किसी नुकसान के। और समझ सकता हूं इस वक्त समय हो चुका है 12:25 और हाशिम जी को शायद इस वक्त नींद आ रही है, लेकिन उनको सोने नहीं देंगे। अभी समय विवरण को ज्यादा शानदार तरीके से बताने का है। और ये गेंद बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, कवर बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद गई, फील्डर ने वहां पर गेंद को समेट लिया अंतिम क्षणों में, इससे पहले कि गेंद बाउंड्री लाइन को जाकर छू लेती और बल्लेबाजों के पास समय था कि कुछ रनों को बटोर लें। रन्स बढ़कर 27 पर, 27 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। आसानी से रन्स बन रहे हैं, तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है। 11.5 का औसत इस वक्त चल रहा है। अच्छी गेंद, एक डॉट में तब्दील हुई है गेंद, जिसको खेलना चाहते थे पूरी तरह से चूक गए, संभाल लिया विकेट कीपर ने। और जैसे मैंने कहा कि शाम के पश्चात आप जानते हैं कि ये ठंड का महीना है, जाड़े का महीना, जिसमें ओस ज्यादा पड़ती है और शबनम गिरती है, और ऐसे में इनफील्ड और आउटफील्ड में जो नमी है वो ज्यादा बढ़ चुकी है और फील्डरों को थोड़ा सा संभल कर क्षेत्ररक्षण करना होगा, क्योंकि अगर आपके शूज में स्पाइक्स है तो अलग बात है, वरना थोड़ी सी फिसलन है। थोड़ा सा संभल कर अपने शरीर के संतुलन को बनाए और फील्डिंग करें। गेंदबाजों को लिए एक तरह से कहा जाए कि सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो बात बन जाएगी। ड्राइव किया गेंद को और कवर में, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, प्लेस नहीं कर पाए, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। 2 दीवार ऑफ साइड पर है, लगभग पॉइंट पर एक खिलाड़ी और एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है। उन दोनों दीवारों के बीच में से अगर स्ट्रोक लिया जाए तो बात बनेगी।
इस वक्त उछलने का प्रयास था आक्रामक तरीके से, और उस उछलने के प्रयास में एक पूरी तरह से घूम गए और जमीन में थोड़ा सा लड़खड़ाकर पसर गए। विकेट कीपर ने संभाल लिया उनको और तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। So that's the end of over number 3 and after 3 overs it's 27 without losing any wicket, 27 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी 7 ओवर शेष बचे हुए हैं और 7 ओवर्स में कितना कुछ बनेगा। लगभग 42 गेंदों का शेष खेल शेष बचा हुआ है। दोनों बल्लेबाज अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 19 गेंदों में 27 रनों की भागीदारी बन चुकी है। पार्टनरशिप अच्छी बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। एक छोर पर मोइन, दूसरे छोर पर शमीर, और एक विश्वसनीय शुरुआत जो कप्तान चाहते हैं कि अपने टीम के शुरुआत के बल्लेबाज एक अच्छी नींव बनाकर, एक अच्छी बेस बनाकर वो दें अपने टीम को, और वही ये दोनों बल्लेबाज कर चुके हैं। बचे हुए ओवर्स में और कितने रन्स बन पाएंगे ये सोचने वाली बात होगी। आक्रमण पर इस छोर पर फिर से गेंदबाज नौफल फिर से आक्रमण पर आ रहे हैं अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर। ज्यादा दौड़ धूप नहीं करते, मुश्किल से 6-8 कदम का उनका रनअप है, वहां से वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर स्ट्राइक एंड पर, मोइन नॉन स्ट्राइक एंड पर है। गेंद को लेकर नौफल तैयार हो रहे हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद, ओवर विकेट। इस वक्त विकेटों को कवर किया, जाने दिया गेंद को, क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। मन ही मन में सोचा कि अंपायर इसको अतिरिक्त करा देंगे। अंपायर ने मन की बात सुन ली। वाइड के 7 रन बढ़कर अब 28 पर 28 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 28 विदाउट लॉस। एक और गेंद, नौफल ओवर विकेट। इस बार लॉफ्ट कर दिया गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे, हालांकि थोड़ा सा विलंब हो गया, और अगर जल्दी करते, दौड़ लगाते तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन थोड़ा सा देर हो चुका, थोड़ी सी देर हो गई, और ऐसे में गेंद जाकर जमीन से टकराई, छू गई, जमीन को छू लिया गेंद ने, इस वजह से कैच का मौका नहीं बना और बल्लेबाज बाल बाल बच गए। 1 रन के साथ रन बढ़कर 29 पर 29 विदाउट लॉस। एक और गेंद, फिर से लॉफ्ट करने का प्रयास, गेंद गई स्क्वायर लेग डीप में, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने रन बढ़कर 30 पर पहुंच चुका है। 30 विदाउट लॉस, यानी कि चौके छक्के तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब आसानी के साथ रन बन रहे हैं, जो कि रनों की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। चमकीली गिल्लियां इस वक्त झिलमिलाउट हुई, अंपायर उसको दुरुस्त कर रहे हैं। फिर से तैयार बल्लेबाज इस ओवर की एक और गेंद को लेकर नौफल ओवर विकेट। ओवर की गेंद डिफेंस किया, फॉरवर्ड होकर अच्छा स्ट्रोक था, रन को चुराया जा सकता था, लेकिन कोई रुचि नहीं दिखाई रन लेने में, और वहीं पर खड़े रह गए। फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, रन अभी भी 30 पर पहुंच चुका है, 30 पर मौजूद है। ओवर विकेट ये गेंद बैकफुट पर कट करने का प्रयास, बिल्कुल तेजी के साथ चॉप करना चाहते थे, पूरी तरह से मिस कर गए। गेंद बहुत जल्दी तेजी के साथ निकल गई, विकेट कीपर के हथेलियों में जाकर समा गई, रन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नेशनल हाईवे से एक और गेंद लेग स्टंप के बाहर। न मालूम क्यों आज इस मैच में नौफल थोड़े से अपने लाइन को तलाश कर रहे हैं और बार बार गेंदें उनके हाथ से दिशाहीन जा रही हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मिडल ऑफ स्टंप का लाइन उनको पकड़ना होगा ताकि सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी हो जाए। और विकेट गेंद ड्राइव किया, थोड़ा सा पीछे हटते हुए विकेटों को कवर करते हुए खूबसूरती के साथ बल्ले का मुंह खोलते हुए थ्रू द लाइन गेंद को खेलने का प्रयास, और 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया, रन 32 पर बगैर किसी नुकसान के। लाइव टेलीकास्ट जो कि शानदार तरीके से चलता हुआ मैंगलोर मीडिया
इस वक्त अपना शानदार साफ सुथरा प्रसारण दे रही है। उनके टेक्नीशियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। उधर विकेट ये गेंद इस वक्त पुल कर दिया गेंद को, बहुत सो खूबसूरत स्ट्रोक है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से हवा से बातें करती गई 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का। ये लगा जैक का आक्रामक छक्का, खूबसूरती के साथ टाइम किया गेंद को, स्ट्रोक के पीछे बिल्कुल ताकत लगी थी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्ति पर 38 रन बगैर किसी नुकसान के 38 विदाउट लॉस, यानी कि दोनों बल्लेबाज इस वक्त बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। विश्वसनीय बल्लेबाजी उनकी हो रही है। क्या वो पार्टनरशिप में 50 रन बना पाएंगे? और इस वक्त ऐसा ही लग रहा है, यही आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है कोई ज्यादा दबाव, कोई प्रेशर बल्लेबाजों पर नहीं है। गेंदबाज से उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाए और ब्रेक थ्रू की तलाश इस वक्त गेंदबाजों को, कौन सा गेंदबाज इस वक्त विकेटों की तलाश को अंजाम देगा। दूर वाले छोर से 5वें ओवर की शुरुआत के लिए इम्तियाज दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। और मैं अगर गलत ना हूं तो इम्तियाज वही है जो कुछ देर पहले मेरे साथ यहां पर कमेंट्री कर रहे थे। इस वक्त गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। और विकेट उनकी गेंद, शमीर स्ट्राइक एंड पर। इम्तियाज की गेंद 5वें ओवर की पहली गेंद को लेकर फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन वो कर रहे हैं। ऑन साइड पर फील्डिंग की रूपरेखा देखते हैं। स्क्वायर लेग थोड़ा सा बैकवर्ड है, मिड विकेट दायरे के अंदर ये 2 खिलाड़ी अंदर हैं। उसके अलावा सारे फील्डर्स फैले हुए हैं। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट डीप में एक खिलाड़ी मौजूद है। उसके अलावा पूरा क्षेत्र खाली दिखाई पड़ता हुआ। और ऑफ साइड पर अगर कहा जाए तो 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं, गली में एक खिलाड़ी मौजूद और एक्स्ट्रा कवर में एक खिलाड़ी तैनात है। इम्तियाज दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार। विकेट उनके गेंद लेग स्टंप के बाहर भी अंपायर ने वाइड घोषित किया इस गेंद को। 1 रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 39 पर 39 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर कवर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी तैनात है। और विकेट ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को लॉफ्टेड ड्राइव है, खूबसूरत स्ट्रोक है, दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। ये लगा जैक का खूबसूरत चौका, बहुत खूबसूरती के साथ टाइम और प्लेसमेंट लाजवाब। दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ रन बढ़कर 43 पर पहुंच चुका है। 43 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। गेंदबाज, फील्डर, कप्तान इस वक्त आपस में बातचीत कर रहे हैं कि रनों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। दोनों बल्लेबाजों ने नाक में दम कर रखा है गेंदबाजों के। विकेट जाने का नाम नहीं ले रही है और विकेटों की तलाश को अंजाम देने के लिए इम्तियाज आए, लेकिन उनकी इस ओवर की गेंद पर चौका लगा और वो इस वक्त योजना बदलने में लगे हुए हैं। शमीर फिर से स्ट्राइक एंड पर दूर वाले छोर से गेंद। और विकेट, अच्छा कमबैक था, बहुत अच्छी गेंद। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बल खाती हुई, इतराती हुई ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल विकेट कीपर के हथेलियों में समा गई। खेलने के प्रयास में पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज और इम्तियाज के पास फिर से गेंद आ चुकी है। इस ओवर की एक और गेंद, ग्लांस किया, खूबसूरत स्ट्रोक है लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। आउटफील्ड काफी धीमा पड़ चुका है। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर बल्लेबाजों के पास और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 44 पर 44 विदाउट लॉस, 44 रन बगैर किसी नुकसान के। मोइन और शमीर, आज कहना होगा कि जिस तरह से कोस्टल किंग्स के 2 राजाओं की ये बल्लेबाजी बहुत काबिले तारीफ, बहुत ही प्रशंसनीय चल रही है। बहुत शानदार तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की गेंद और कॉट बिहाइंड के लिए अपील और इसी के साथ बल्लेबाज आउट हो गए।
बहुत ही बड़ा विकेट, मोइन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। बहुत खूबसूरती के साथ ये गेंद की गई थी, खेलना चाहते थे, बल्ले को महीम सा स्पर्श करती हुई गेंद गई, विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया। तालियों से मोइन का स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिवादन किया जा रहा है। क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। वो आउट हुए जरूर है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने बना के दिया अपने टीम को, जिस पर अच्छे खासे रन्स को बना लिया जा सकता है। 44 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद हाशिम कृपया कमेंट्री बॉक्स में पधारे, और उसके साथ जो हमारे कनाडा कमेंटेटर्स मौजूद थे उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया तैयार रहें, क्योंकि आने वाले ओवर्स में उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और दर्शकों का मनोरंजन अपने अंदाज में करना होगा। तो इम्तियाज का ये ओवर निश्चित तौर पर काफी अच्छा रहा है, ब्रेक थ्रू दिला दिया उन्होंने, बहुत अच्छी गेंदबाजी में उन्होंने अच्छा कमबैक किया स्ट्रोक के पश्चात, और एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने दिलाया अपनी टीम को, और इस वक्त फिर से एक और शिकार की तलाश में वो दूर वाली छोर से तैयार हो रहे हैं। रफीक स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं और कुछ अलग अंदाज है उनका स्टांस। ये गेंद उनके लिए बैकफुट पर गए, शॉर्ट ऑफ लाइन थी, बल्ले का निचला हिस्सा देकर गेंद को कट कर दिया, पॉइंट बैकवर्ड में गेंद जा चुकी है। डीप में 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को, इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 45 पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, इस ओवर में आखिरी गेंद शेष बचा हुआ है। ओ विकेट, ये गेंद इस वक्त सीधे बल्ले से थ्रू द लाइन, क्या बात है, मेरिट पर खेल रहे हैं, गेंद को ड्राइव कर दिया हल्के हाथ से, 1 रन पूरा कर लिया, और इस 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 5 ओवर के समाप्ति पर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर 46 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। यानी कि अभी छठा ओवर शुरू होने वाला है, और इससे पहले के छठा ओवर शुरू माइक्रोफोन पर आगे के विवरण के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर रफीक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अब जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ 6ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ಐದು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 46, 46. FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ರೌಫ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀರ್ನವರು ಇನ್ನೂ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೌಫ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರೌಫ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಅಡ್ಡಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ, ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಅಡ್ಡಚೆಂಡು ಎಂಬ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 47, ಅಂಕಿಯ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 47. ರೌಫ್ ಟು ಸಮೀರ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಫಲತೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 47ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. 6ನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರೌಫ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಮೀರ್. ರೌಫ್ ಟು ಸಮೀರ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊಗಸಾದ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೌಫ್ ಇವರ ಮುಖೇನ. FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೌಫ್ ಇವರು. ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರೌಫ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
6ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರೌಫ್ ಎದುರಿಸಲು ರಫೀಕ್ ಸಾರ್. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ರೌಫ್ ಟು ರಫೀಕ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. 1 ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 49. ರೌಫ್ ಟು ಸಮೀರ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್. 1 ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಅರ್ಧ ಶತಕ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ರೌಫ್ ಎದುರಿಸಲು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಟಿ 51 ರನ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 51 ರನ್ನಿನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಫ್ಎನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜುನೈದ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜುನೈದ್ ಎದುರಿಸಲು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಜುನೈದ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಫಲ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಜುನೈದ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಂದ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 53, 53. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜುನೈದ್ ಟು ಶಮೀರ್.
ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆಗುವ ಚಂಬಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಇವರಿಂದ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳು ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಳನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 55. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜುನೈದ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಮೀರ್. ಸಮೀರ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲತೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಮೀರ್. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮೀರ್. ಜುನೈದ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜುನೈದ್ ಇವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. 7 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 55. FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 8ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಶಿಕ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಶಿಕ್ 8ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಆಶಿಕ್. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಶಿಕ್ ಎದುರಿಸಲು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಆಶಿಕ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, 4 ರನ್ನುಗಳಾಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 57 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 57. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಆಶಿಕ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಬಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನ, ವಿಫಲತೆ. 4 ರನ್ನುಗಳಾಗುವ ಸಂಭವ. ಎಸ್, ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಎಸ್, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ 4. 5 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 5 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 5 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 62 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಶಿಕ್ ಇವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು. 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸ್ತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ಪೈಲಿಯನ್ನತ್ತ ಬಹಳ ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಶಿಕ್ ಇವರಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 2ನೇ ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಆಶಿಕ್ ಟು ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ರನ್ನುಗಳು. ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 6 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೊದಲ ಬೌಲಿಗೆ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ರನ್ನುಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 68. ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 68. ಶಿಹಾಬ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಶಿಹಾಬ್ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಟ್ಟಿದಂತಹ ಶಿಹಾಬ್ ಇದೀಗ ಆಶಿಕ್ ಇವರ ಮಗದೊಂದು ಬೌಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಶಿಕ್ ಟು ಶಿಹಾಬ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 68ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಶಿಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಶಿಹಾಬ್. ಆಶಿಕ್ ಟು ಶಿಹಾಬ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನ, ವಿಫಲತೆ. 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 69ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 8ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಶಿಕ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ ಸಮೀರ್ ಇವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 69.
9ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಜುನೈದ್. FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 9ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಜುನೈದ್. ಎದುರಿಸಲು ಸ್ಟೈಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಜುನೈದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜುನೈದ್ ಟು ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್. ಜುನೈದ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 70ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 9ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀರ್ ಇನ್ನೂ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಜುನೈದ್ ಟು ಸಮೀರ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜುನೈದ್ ಎದುರಿಸಲು ಶಿಹಾಬ್. ಬಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜುನೈದ್ ಇವರಿಂದ. ಶಿಹಾಬ್ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾಜಿದ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಾಜಿದ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಾಜಿದ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಜುನೈದ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 4 ರನ್ನುಗಳಾಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 72. ಜುನೈದ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜುನೈದ್ ಇವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜುನೈದ್ ಎದುರಿಸಲು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀರ್ ಇನ್ನೂ ಕಣದಲ್ಲಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೌಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಜುನೈದ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಮಗದೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 73. ಜುನೈದ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಲಯಬದ್ಧತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಮಗದೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ತೀರ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು.
इतना बॉल है ना, 2 बॉक्स है। नहीं 2 बॉक्स है इधर, मैच बहुत बहुत जाने का है। तो इतना 2 बॉक्स में 2 बॉक्स में कितना भी है। ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪು ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಪ್ಪತ್ತ 74 ರನ್ನು. ಮಗದೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 74. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ 9ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಜುನೈದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜುನೈದ್, ಎದುರಿಸಲು ಸಮೀರ್. ಜುನೈದ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 74. 9 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 74. ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಆಶಿಕ್. ನೋಡಿ, ಸಾಜಿದ್ ರವರು ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ನೆಟ್ಟಿಬೈಲು ಇವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಶಿಕ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್, ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸಾಜಿದ್. ಆಶಿಕ್ ಟು ಸಾಜಿದ್. ಆಶಿಕ್ ಟು ಸಾಜಿದ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲ, 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 75. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಶಿಕ್, ಎದುರಿಸಲು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಪೈರ್ ರವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 76, 76. 10ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಶಿಕ್, ಎದುರಿಸಲು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀರ್. ಆಶಿಕ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡಾಟ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. 2 ರನ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಜಿದ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಇವರಿಂದ. ಆಶಿಕ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಶಿಕ್, ಎದುರಿಸಲು ಸಮೀರ್. ಆಶಿಕ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಂಪೈರ್ ರವರಿಂದ ರನ್ಔಟ್ ಘೋಷಣೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಜಿದ್ ಇವರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ 4ನೇ ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಈ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ನಿಜಾರ್ ರವರು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು.
ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 79. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಆಶಿಕ್ ಇವರಿಂದ. 79 ಅತ್ತೆ. ಆಶಿಕ್ ಟು ಸಮೀರ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 1-2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್. ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ರನ್ಔಟ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮೀರ್ನವರು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಅವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಬ್ಬಾ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಬ್ಬರವರೇ ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಘೋಷಣೆ ಇದೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಮಾನ್ ಅವರಿಂದ. 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಅಮಾನ್ ಅವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಫೈಸಲ್ ಪ್ಯೂಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಫೈಸಲ್ ಪ್ಯೂಮಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಏಳು
ಹಲೋ ಏ ಬಾಯ್ ತೆಲ್ಲಿಂಜವರು ಬರ್ರಿ Answer. ഇപ്പൊ ബൈ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഗിലിഞ്ഞിത്താവ് മൊത്തಗೂ അങ്ങെಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲಾರ ಅಂಕ ಹತ್ತರ ಪೇಡಿಯಾ ನಕ್ಕೋರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂಗೆ ಗೊಂತುಂಡೆ ಪೈಕಿ ಇಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ ಕಲಿಕಿದೆ 4 ಸುಬಿ ಹಸರು ಬಂದು ಕಲಿಕಾಂಡು ಚೊ ನಿಂಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ಲ ಕಲಿಕೊಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಬಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಉಂಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಕ್ಕ 5,000 ಇಟ್ಟರು ஒரு 6 போண்டாங்க ಅಂಕ ஒரு பயங்கர பேடி பிடிச்சிரு இப்ப 7 தொலை எஸ் 6 இப்போ ಅಂಕ ಕಲಿಕೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಕ ಪಿನ್ನಲ್ಲ ಕಲಿಕೋಗು ನಾನು 6 ಅಂಗ ಪೇಡ್ಚಿ ನಾಳೆ ಬರು ನೀನು ಕಲಿಕೋರು ಅಡಿಕೆ 6 ಕೇಟು ಲಂಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಕೋಗಿ ಇಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಇದಾಯ ಪಿನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಬ್ಬ ಬೈ 6 ಅಡಿಕಿರಿ ನಂಡೆ 6 ಬಿಸಿ ಹಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಬೆಚ್ಚತ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಪ್ಪ ಎಂದ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಇಪ್ಪ ಚೊಲ್ಲೋಗ ಅವಳು ಚೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ವಿಕೆಟ್ ಬಂತು ಇಬ್ಬ ಬೈ ನಿಂಗ 5,000 ಇಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕಿಟ್ರಲ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಅಡಿಚ 6ಗೆ ಆ ಅಂಜ ಇರ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಎಂದ್ರ ಹಾಕ್ರಾರ್ ಅದು ಪಾದಿ ಅಂಕ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬಾಬಾಯ್ ಇಬ್ಬಾಬಾಯ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಚಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಆ ಅಂಜ ಇರ್ತದೆ ಎಂದ್ರ ಹಾಕ್ರಾರ್ ಟುಡೇ ಟೀಮ್ ರಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟುಲ್ಲಾರು ಪಿನ್ನ ಶಿಯಾಬರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಡಾಯಿರ ರಿಯಾಜ್ ಬೈರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಾಯಿರ ರಿಯಾಜ್ ಶೈಂಡ್ ಅಂಜಾಯಿರ ಐಂಬು ಇಬ್ಬಾಬಾಯ್ಗೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಸ್ಎಮ್ರ ಐಂಬೈರ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,17,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಬ್ಬಾಬಾಯ್ಗುಂಡು ಇಪ್ಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಚೆಂಗ್ 3,000 ಆಫ್ತಾಬ್ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಬ್ಬಾಬಾಯಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಚೆಂಗಿ ನೌಶಾದ್ರ 25 1,55 1,55 ஒருவர் சஃபாண்ட் 5 1,60,000 இಬ್ಬಾಬಾಯಿ இப்போ 6 அடிச்சங்க 5 लाख ಬೌಲರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಪಾತಿ ಕಾಸು ಬೌಲರ್ ಇಟ್ರು ಇಬ್ಬಾಬಾಯಿ ನೀವು ಇಪ್ಪ 6 ಅಡಿಚಂಗಿ 6,55,000 6,55,000 ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇಕ್ಕರಿ ஒரு 6 ಇತ್ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳ್ಳು ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬಾಬಾಯಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಲು ಆಶಿಕ್ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರವರ ನಿಮಗೆ 6 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಶಿಕ್ ಎದುರಿಸಲು ಇಬ್ಬರವರೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 6 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಟ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೌದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 2 ರನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 83 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಗಳು 83 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವಿನ್ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ 60 ಎಸೆತ 82 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು ಸಾರಿ 83 ರನ್ಸ್ ಹಾಲು 60 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 83 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೀಸನ್ 6ರ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ 60 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 83 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು
ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆನ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೌಫಲ್ ಎಫ್ಎನ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಮನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಾಲ್ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಹಾಲ್ ಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಚೂರು ಅಂದ ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರಲ್ಲಿ ಫೈಜಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ. ಈ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭ. 60 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 83 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್, ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ.
ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಿನ ಬೆನ್ನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಜುಲ್ಫಿಯಿಂದ ಓಟ. ಹೌದು, 2 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. ಹಾಲು ಹಾಲು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಯ್ನೋ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ರಾನ್ ಕಡೆಗೆ 4 ರನ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಹೌದು, ಈ ಮೂಲಕ ನೌಫಲ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು 4 ರತ್ತ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. 1 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ನೌಫಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಶಿಹಾಬ್. ಎರಡನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಶಿಹಾಬ್ ಟು ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಈ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ಟು ಫೈಸಲ್. ಜಾಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಹೌದು. ಫೈಸಲ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಎಲ್ಲ. ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 ಎರಡನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ 4 ರನ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಹೌದು, 4 ರನ್ನುಗಳು. ಸಮೀರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು 4 ರತ್ತ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಎರಡನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಶಿಹಾಬ್. ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್. ಈ ಮೂಲಕ 1+1 ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 17. ನೋ ಬಾಲ್. ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿರಿಕ್ತ 2 ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1+1 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17. ಶೈಕರಲ್ಲಿ ಫೈಸಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿಯಾಬ್. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 2 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜೀವದಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮೊಯ್ನು ಟು ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ. FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ.
ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರವಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಮೊಯ್ನು ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ. ಸಾಚಿದ್ ಒಡೆಯರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವದಾನ, 4 ರನ್ನುಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 24. ಫೈಸಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು 4 ರತ್ತ. ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವದಾನ ಫೈಸಲ್ ರವರಿಗೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಶತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಮೊಯ್ನು. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. 3ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮುಷರ್ ಮೊಯ್ನು. ಮೊಯ್ನು ಟು ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಈ ಮೂಲಕ 3 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25. ನಲವತ್ತ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 58 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. 42 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 58 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೌಲರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲ 1 ರನ್ನಿನ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಕತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೆಂದೇ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಸ್ಕತ್ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಈ ಮೂಲಕ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮೀರ್ ಸೀಖೋ. ಹೌದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಟ ಖ್ಯಾತಿಯ, ಅಂಗಲಾಪು ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ಫೈಜಲ್. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ 4 ರನ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಓಟ. 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ನಾಲ್ಕು ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. ಮುಂದಿನ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. F1 ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಐದನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಸಮೀರ್ ಲಕಿಷ್ಟ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಶಮೀರ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಟ ಫೈಜಲ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಅವರಿಂದ. ಶಮೀರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಾಣೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಬಿದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ತಿಂದ ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನೋದು.
ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರಿ ಬೈ ಹಾಲ್ ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಫೈಸಲ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ. ಒಂದು 6 ಬಾರಿಸಿದರೆ 6 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಒಂದು 6ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್. ಅಶ್ರಫ್ ನೆಟ್ಟಿಬೈಲ್ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟಿನ ಪತನ. ಹಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡ್ಚಾರು. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಾಲರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ನೆಟ್ಟಿಬೈಲ್ ರವರಿಂದ 5,000 ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ಪು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡ್ಚಾರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಯಾರು ಬಿಡ್ಚೆ? ಸಫ್ವಾನ್ ರವರಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಚ್, ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟಿನ ಪತನ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫೈಸಲ್ ರವರ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ನೌಫಲ್ ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸಿಂಗಲ್ ರನ್. ಒಂದು ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶಿಕ್ ಹುಕ್ಕಾಜೆ. ಈಗ ಸಮಯ 1:42. ನೌಫಲ್ ಜಾಕ್ ಕಣದಲ್ಲಿ. 5 overs 48 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 48 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಅನ್ಸಾರ್ ಯಾನೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯಗಿನ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಮುಯಿನ್ ರವರಿಂದ ನೀರುದಾನ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 6ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ. ಸಮೀರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಚೆಂಡು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನೌಫಾಲ್ ಎಂತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಆದರೆ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಸಮೀರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೋ ನೌಫಲ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮುತ್ತೋ ಎಂಬಂತಹ ಕಾತರ ತಮ್ಮ ತಂಡದವರ ಮೇಲಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ಗಾರಿಕೆ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಆರನೇ ಓವರಿನ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಹೌದು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 39. 6 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 44 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. FN ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ರೌಫ್ ರವರ ಒಂದಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡು. ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ನೌಫಲ್ FN ಅವರು ಒಂದು 6 ಬಾರಿಸಿದರೆ ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್ರ್ ಅವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ.
ಚಿಮ್ಮಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳು. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 44 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಲರ್ ಮಧ್ಯೆ ಈತ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ, ಎಲ್ಲ 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 41, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಓಡಾಟ. ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ. 43 43. 7ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ದೆಮ್ಮಲೆ, ಮುಸ್ತಫಾ ಟು ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಫ್ತಾಬ್ ಬಸ್ಸಿಕಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯತ್ನ, ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳರವರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ತನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ, ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 45. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 45. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅಗತ್ಯ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನೀಗ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೌದು, ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ. ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು, 4 ರನ್ನುಗಳು. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ 49. 7ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ತಫಾ ದೆಮ್ಮಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಚಾಪುನ ಭದ್ರ ಬುಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ ವಿಕೆಟಿನ ಪತನ. ಈ ಮೂಲಕ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಮೀರ್ ಸೀಕೋ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ. ಮುಂದಿನ ಆಟಗಾರ ರೌಫ್ ಜಾಕ್. ಸಮೀರ್ ಅವರ ತೇರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರೌಫ್ ಜಾಕ್. ಸಫಾನ್ ರವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ
ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತಗಾರ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ತರುಣ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ, ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರೌಫ್ ಜಾಕ್. 7ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಟು ರೌಫ್. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗಾನ್ ಕಡೆಗೆ. 4 ರನ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ, 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ದೆಮ್ಮಲೆ ಟು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 50, ಅರ್ಧ ಶತಕ. 50 ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಅದನ್ನು ರೌಫ್ ಜಾಕ್ ರವರು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ರೌಫ್ ಜಾಕ್ ರವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ರೌಫ್ ಜಾಕ್ ರವರು ಕಣದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್, ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ತಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟೇ ಇಡುತ್ತೆ. ಅಫ್ತಾಬ್ ಬಸ್ತಿಕಾರ್. ಸಮೀರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮೀರ್ ಸೀಕು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ನಜೀರ್ ಭದ್ರೋಡಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಶಿಹಾಬ್ ಪಟ್ನಾ. ಶಿಹಾಬ್ ಟು ರೌಫ್ ಜಾಕ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಿಕೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಶಿಹಾಬ್ ಪಟ್ನಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಂಟನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 50, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77 ಶರೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ವಳಾಲ್. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಿಕೆ. ನೌಫಲ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಈ ಮೂಲಕ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರ್ಮಾಘಾತ. ನೌಫಲ್ ರವರ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ರೌಫ್ ರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೌಫ್ ರವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಜಾಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಇವರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ ಜುಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶಬೀರ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೌಲ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಎಂಟನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ಟು ರೌಫ್. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ಗೊತ್ತಾದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಗೊತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಶಿಹಾಬ್ ಟು ರೌಫ್ ಜಾಕ್. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಬೇಲ್ಸ್ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಈ ಮೂಲಕ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ರೌಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜುಬೈಲಿನ ಅಲ್ ಫಲಾ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೌಫ್ ಜಾಕ್ ಇವತ್ತು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಜುಬೈಲಿನ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ರೌಫ್ ಜಾಕ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೈ ತೆಗೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ. ಮುಂದಿನ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಗಳು. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಫ್ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅದಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ರೌಫ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರ. ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬರಹಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯ. ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೈ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಮೀರ್. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕ 54. ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗಾರಿಕೆ ಶಮೀರ್ ಅವರಿಂದ. ಶಮೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲರಂತೆ. ಇಲ್ಲ ರೌಫ್ ಜಾಕ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿ. ಹಲೋ
3 ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೌಫ್ ಜಾಕ್. ಮತ್ತೆ ವಿಫಲತೆ. ಒಂದು ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ತಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳರಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಸಮೀರ್. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗಾರಿಕೆ. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂದಿಂದೆ ಶಮೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಒಂದು ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರೌಫ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮಲೇಬೇಕಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಚಿಮ್ಮಿಲ್ಲ. ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಲೂ ರೌಫ್ ರವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮುಂದಿನ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಕೇವಲ 27 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. 6 ಎಸೆತ 27 ರನ್. 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 27 ರನ್ನನ್ನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರೌಫ್ ಜಾಕ್, ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಈ ತಂಡವನ್ನ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್ ಮತ್ತು ರೌಫ್ ಜಾಕ್. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡವರು ಮುಸ್ತಫಾ ದೆಮ್ಮಲೆ. 6 ಎಸೆತ 27 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಲಿಂಗಾರಿಕೆ. ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ. 10ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ದೆಮ್ಮಲೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಟು ಶಬೀರ್ ಜಾಕ್. ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮುಸ್ತಫಾದು ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಮತ್ತೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 44 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್. ತನ್ನ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಮುಸ್ತಫಾ ಟು ರೌಫ್ ಜಾಕ್. ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಸಫಲತೆ, ಆದರೆ 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. 59 ಆನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. 44 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಫಾನ್. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೂ ರೌಫ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಂಡು 4ರ ಕೊಡುಗೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ವಿನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಬೀಸಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ. 1 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. FN ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡವು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಹಜಾಜ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ FN ಬ್ರದರ್ಸ್. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ FN ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಇದು ಕ್ರೀಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಲಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೆಲುವಾಗಲೇಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಆಶಿಕ್ ಕುಕ್ಕಾಜೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಹುಸೈನ್ ವಾಳಾಳ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಜಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಸೀಸನ್ 6ರ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡೋಣ. ಬಾಯ್.